इसको सर्कुलेट पे डाल देना, सर्कुलेशन पे सर डाल दीजिए, सर्कुलेशन में डाल दीजिए, मैंने मैसेज डाल दिया है। ठीक है। मैंने उसमें डाल दिया है ये मैसेज में, और आप इसको चाहे भी सर्कुलेट करना चाहो कर दो, और जो किसी को भी दिक्कत हो ना, किसी के यहाँ भी फोन आए, माय रिक्वेस्ट टू ऑल फ्रेंड विल बी कि दे कैन देन आस्क इट टू पुट आउट ऑन द YouTube. So there's a link on YouTube. Friends, say small information before we start the meeting कि क्योंकि बजट मीटिंग में we have a capacity of 100 participant, अगर 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट होंगे तो इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। YouTube का लिंक ऑलरेडी जो है चैट बॉक्स में शेयर्ड है, am I right सर? हाँ मैंने शेयर कर दिया, मैंने अपने उस पे भी डाल दिया है। नहीं, चैट बॉक्स में शेयर नहीं है। मैं इसको या तो यही होता है क्या था? जी, can you are mute? फोन पे करो, फोन पे। विनय जी, सर कैन यू हेयर मी? हाँ सर, लाउड एंड क्लियर सर। और आई बिलीव नाउ द लिंक इज अवेलेबल। चैट पे भी डाल दिया है आपने ना? नहीं, मैंने नहीं डाला चैट पे भी। हाँ, चैट पे आपका आ गया। हाँ ठीक है सर। तो फ्रेंड्स, चैट पे जो है YouTube का लिंक अवेलेबल है। इफ एनी ऑफ योर फ्रेंड और एनी ऑफ यू somehow delink yourself from this particular Zoom meeting, then you can link yourself again with this YouTube link, which is available in the chat box. So we are already crossing around, we are touching around 100. In the time we'll be crossing 100 probably. So be careful about it. This is just an information. विनय जी, मिला नहीं आपका ये लिंक जो आपने YouTube वाला डाला है? कहाँ पे डाला है? अभी अंजय सर, ये चैट बॉक्स में तो ऑलरेडी है। आपने अगर यहाँ ज्वाइन किया तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं ना, आप यहीं से रहिए। अच्छा, चैट बॉक्स में है ये। जाना चाहते हैं तो चैट बॉक्स पे भी है, मैंने भी डाला हुआ अपने फेसबुक वगैरह पे, ट्विटर पे डाला हुआ मेरे पास। ओके। मैं इसको अदरवाइज जनरल शेयरिंग में भी डाल रहा हूँ अभी, ताकि सबके पास मिल भी जाएगा, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी टचिंग 90 राइट नाउ। बत्रा जी, गुड आफ्टरनून। आप म्यूट है बत्रा जी, म्यूट है। या तो वो ठीक करा हमने, वो करा नहीं। आज तो मैंने पहले फोन से किया हुआ था, कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ रही थी। नाउ इट इज बीइंग रिजॉल्व्ड। अभी ठीक है सर। पीछे हावड़ा ब्रिज बढ़िया नजर आ रहा है। हाँ, ये मुझे पता नहीं है, ये अपने आप आ गया। अमेरिका में घूम रहे हैं, आप कह रहे हो इंडिया में हावड़ा ब्रिज बात कर रहे हो। अच्छा, सॉरी सर, ठीक है। ये गोल्डन गेट ब्रिज है पीछे पतला जी के। अच्छा, गोल्डन गेट ब्रिज, सॉरी। तो गोल्डन गेट ब्रिज है या नहीं, वो तो बात की बात है। मैंने तो कुछ प्रॉब्लम आई कंप्यूटर में, तो मैं फोन पे आ गया। जब वापस आया तो आज आपका कोट बड़ा सुंदर लग रहा है, बिल्कुल दूसरे स्टाइल में, पूरा बंद गले का कोट है आज आपका, बहुत बढ़िया। मैं तो सर 1.5 महीने से बंद गले पहन रहा हूं, इतनी ठंड हो रही है। पता नहीं आप टाई वाले में कैसे रहते हो? ये अच्छा बहाना है। आप मेरे पिछले 15-20 दिन के कोई भी वो देख लो, कोट का रंग डिफरेंट होता है। I know that. Chawla ji is also there. I can see our dear friend. मेरा नाम लिखा है चावला जी। निहाल चौधरी जी। Vinay ji, looking at we are on YouTube and this program is being telecast live. I will straight away, I request you to, I think, start the proceeding that take care of. So you can start that by the way. स्टार्ट हो 2 बजे तो हो तो गई। चावला जी नमस्ते, अपना कैमरा तो ऑन कर लो। कैमरा ऑन करो, ऑडियो बंद करो। ऑडियो बंद करो, कैमरा ऑन करो। कैसे करें, कोई समझ नहीं आ रही। मैं कर दूं बोले। Anyhow, all right. My friend, again request to, you can put anybody who is missing out and friend is, any phone comes up, then one can join through YouTube.
YouTube, friends, YouTube connection link has been shared in on your individual WhatsApp also and in the group also. And we are sharing into the, onto the different platform on the WhatsApp, which is available with us. And you can equally share in case the person is unable to join on main Zoom link. He can join through YouTube. Chicken burger, 9-piece chicken nuggets, 1 paneer spicy wrap. वाह, क्या बात है चावला साहब, बढ़िया मेन्यू है। हाँ, ये सबके पास मेरे भिजवा रहे हैं। को समझ नहीं आ रही कैसे खिलाना है। विनय जी, सबके पास भाई पार्सल आ रहा है आपके पास में 2 घंटे में। नहीं अच्छा। और जैन साहब और हम सबकी हमेशा शिकायत रहती थी कि आजकल सूखा सूखी हो रही है मीटिंग, अब चावला साहब आ गए हैं तो कुछ वो मेन्यू भेज रहे हैं, सबके पास में पार्सल भेज रहे हैं। अरे भाई तुम क्यों मजा ले रहे हो मेरे से? My request will be, since the meeting is live on YouTube, please just make short. Fair enough, sir. Sorry, sir. So, friends, soon we'll be starting our regular meeting, and by the time it is okay, fine. It is 100 now. On Zoom, we have touched 100, so no more entry is possible. Friends, again, I'll request if any of your friend is calling you and will call you in the time to come, ask individual to please join through the YouTube channel. YouTube channel is live, and we'll be shortly commencing our meeting through Zoom as well as through YouTube channel, which is live right now. So, friend, in a very short, in the next couple of minutes, in a minute or two, let's start the meeting now. I think Gaurav ji has already joined, so let us start with it. So, fair enough, sir. Thank you. Friends, I welcome you to the monthly G19 Bar meeting. Thank you. Friends, I welcome you to the monthly G19 Bar meeting. This is a monthly meeting which we used to conduct every month, first Friday. And this meeting, being a budget meeting, is very special. Generally, the timing of the meeting used to be at 3 p.m. starting time. But now, since this is the budget meeting and budget discussion used to be a bit elaborate, and more speakers, they speak their mind onto the budget, how the budget has, the Honorable Finance Minister has presented the budget for the year to come and presenting the government view on the years to come. So, considering this fact, we had thought in good wisdom that meeting should be a little longer. So, accordingly, the meeting has started at 2 p.m. instead of the regular timing of 3 p.m. So, friends, I welcome you once again to the monthly G19 Bar meeting. However, one thing always I used to say is the budget is always analyzed from the two perspectives, from the two different community. One is the taxation community, other is from the perspective of the economics. As far as the economy is concerned, the budget, looking budget is entirely in a different perspective, how the government intend to take the country in the years and the years to come, how the development will be coming up, how the government will pursue the country, how the government will take the country in the future, what is the thirst area of the government, what is the development area in the immediate concern and in the long-term concern. So all these points are being taken by the economists, but from the taxation analyst point of view or the taxation experts point of view, either from the indirect tax or the direct tax, the budget is mainly related to, in relation to the amendments which the government proposed to make through this budget, through by enacting an Finance Act after passing through the Lok Sabha and the Rajya Sabha and after getting consent from the Honorable President. So from the two different perspectives, lot of things, some good, some bad. Sometimes we see that जैसे कहावत है कि दिल मांगे मोर, so we always look forward कि हाँ गवर्नमेंट के पास अभी थोड़ा सा स्कोप है तो उसको थोड़ा सा और बेनिफिट देना चाहिए.
but considering the government owns priority, government sometimes give the budget or consider the amendments which they in their wisdom thinks better for the country and the country prospects. However, like if I, or at my opening remarks, if I look into the budget, yet always one point the expert analysts always say, from the treasury bench, budget is always good, prospective for development, for generating employment, and from the opposition point of view, the government is always anti-power, anti-farmers, and anti-government, anti-development. But still the government do their best by presenting the budget and how they utilizing the fund. Some of the things which I could get through this budget is the government is high pushing for the infrastructure sector and the digital economy. These two primary things which I understand the government has given a big thrust by way of more capex projection out there in the budget, maybe in 35% around of the total budget outlay. Then, but considering to the fact that the economy is rising at a 9.2%, which is the highest amongst the large economy of the world, which the government is projecting itself, and then it is the other thing which is more important is the PM Gati Shakti. Government wants to improve the infrastructure through this PM Gati Shakti. A lot of things has been said in the PM Gati Shakti itself, and this particular one platform could be a game changer in the time to come. But other point is a lot of things are for their MSMEs equally by extending this extended credit guarantee, linked credit guarantee schemes from March 22 to March 23. So this again could be a good important factor for the MSMEs. And then there are other lot of further projects like by way of and getting an encouragement through Vande Bharat train. Government is now going that 400 more this Vande Bharat trains will be introduced. Cargo terminals, then a lot of other things is including this high model, multimodal logistic park. Then earlier the government has proposed one district, one product for the purpose of agriculture, for the purpose of business. But now the government friends has further introduced one station, one product. One station means one railway station and one product to make this more useful for the business person and the farmers equally. So many more things, friends, in the time to come, because we have many of our experts who will speak of their minds out there on the indirect tax, direct tax, and from the economist point of view. So we have with us CA Ashok Batraji for indirect tax, along with CA Dr. Gaurav Gupta ji, who will be taking us to the various amendments in the indirect taxes, and then followed by in the direct taxes by CSTC, and obviously from the economist and the overall from the direct tax point of view by the past president, our own CA Vejayanji will speak out. Friends, one thing I'll always admire, and I will not forget to mention out here. We have such an esteemed speaker with us, and they always speak of their mind in the month-on-month basis. But after the budget, they have so much of the tight schedule because they have to give a lot of deliberation on many of the platforms. But when the point of the G19 comes, they are always available. I'm really, from my core of heart, I'm really very thankful to all of my speakers, precisely, particularly because all are very, very busy. These are very rarely they are available. Their time slots is available. I mean, if you call them on the phone, unless their appointment is fixed, they are not available. But thanks to all my speakers, they are always available for the G19. I'm really very thankful to them. But with this, my opening small remarks, and we'll keep continue talking on this. I'll request first to see a Dr. Gaurav Gupta ji. Please unmute oneself, because I muted all as a matter of discipline. I request my friend CA Dr. Gaurav Gupta ji to please speak on indirect tax, and then followed by CA Ashok Batra ji, who will speak on indirect tax on some of the very, very important
amendments which are made, the government has made an amendments in relation to ITC. ITC is the third area while going through this GST collection. Also, we had noticed that it is now all-time high. And before I hand over last to my point, I friends, because I will love to wish you on to the Basant Panchami, which will be on which will be tomorrow on 5th of Feb. All the best and congratulations to you all on the Basant Panchami. With this good, opening remarks, I hand over this platform to CA Gaurav Gupta. CA Gaurav, please. Thank you, Vinay ji. Respected Vijay sir, respected Ashok sir, respected all the senior members of G19 and the profession. A very good afternoon to all of you. Vinay ji ने पूरी भूमिका बांध दी है. गवर्नमेंट ने कैसा बजट दिया, क्या क्या प्रो, क्या क्या एंटी, क्या क्या expectations meet out हुई. There are a lot things which goes into a budget. It is not a single document. It is actually a path for the future. Budget somewhere also reflects the mindset, how the government perceives, looks at, and what it expects from the economy in the future. Tax portion of the budget is no different. It is an inherent part. और वहां से आपको ये पता चलता है कि गवर्नमेंट की क्या विचारधारा आज की डेट में टैक्स पेयर्स के लिए है और कैसे गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स को बेनिफिट, रेस्ट्रिक्ट या रेगुलेट करना चाहती है. अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, सबसे पहले मैं शेयर करूंगा इनहेरेंट पार्ट जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच के अंदर जीएसटी के बारे में कहा गया इन पैरा 139 of the budget speech. GST has been a landmark reform of independent India, showcasing the spirit of cooperative federalism. While aspirations were high, there were huge challenges too. These challenges were overcome deftly and painstakingly under the guidance and oversight of the GST Council. We can now take pride in a fully IT-driven and progressive GST regime that was fulfilled the cherished dream of India as one market, one tax. There are still some challenges remaining and we aspire to meet them in the coming year. The right balance between facilitation and enforcement has endangered significantly better compliances. GST revenues are buoyant despite the pandemic. Taxpayers deserve applause for this growth. Not only did they adapt to the changes enthusiastically, but they have contributed to the cause by paying the taxes. Somewhere, if you look into the speech, there were two aspects which one can highlight. Number one, the contribution of the taxpayer, their involvement has been recognized by the Honorable Finance Minister and the government, which is a very, very welcome step. Number two, there has been certain challenges which she has hinted. So what are those challenges? If you look at from the government perspective, there were two primarily challenges which they were struggling with past 4 years. Number one, the smooth functioning of GSTN. When I say smooth functioning of GSTN, it also includes the distant dream of having GSTR 1, 2, and 3 into the system. And number two, the check on the input tax credit which has been flowing in the economy by some evaders, fraudulent people, and very fondly which has been discussed as fake invoices. So ये दो challenges ऐसे हैं जो government पिछले 4 सालों से it has been struggling. Let me speak primarily on the first part. When we say the GSTM and the procedural aspects, the second part, how government is trying to control that. I have been instructed by the chair Vinay ji that Ashok sir will be taking on that particular part, section 38, and I can tell you section 38 एक ऐसा टॉपिक गवर्नमेंट ले आई है जिसके ऊपर अगर हम 1.5 घंटा 2 घंटा भी बिता दे आज तो शायद कम. But let me just focus on what is the government's view, vision, and the amendments which have been brought in terms of the procedural aspects and the return for the taxpayers in the country. Sir, clause 99 से लेकर clause 115 तक government has brought in amendments in the CGST Act. If I have to
categorize them. I will categorize them into 3 categories. Number 1, the changes in the procedures. Number 2, the changes in the ITC. And number 3, there are other changes which we can club together, which are minor, but yes, may be important for a particular class or section of the taxpayers. Now, if I tell you that GSTR 2 and 3 are no longer there, all of you will say, sir, ye thi nahi to hatane ka point kya tha? Gaurav, these were never functioning. I think now the fact has been totally accepted by the government. When GST was introduced, it was introduced with the 3-form system. GSTR 1, where details of outward supply will be filled by the supplier. GSTR 2, where all the inward supplies which are filled by the respective supplier are collated for a single taxpayer and are reflected on his GST book. So if you are supplying to me, your supply will be reflected in my GSTR 2, where, now please mark my words, where the recipient was supposed to either accept, reject, or keep the ITC in pending. And that is how he will keep a tab on the amount of ITC which he is availing. Parallelly, there was also one very, very important provision in GSTR 2. अगर आपका supplier का credit आपको नहीं दिख रहा है, then you have the option that you can put that particular line item into your GSTR 2, which will be communicated to the supplier, which he will either accept or reject. Now, sir, there was a 2-way communication which was supposed to happen via GSTR 2 between the buyer and the supplier, and the communication was parallelly getting into the knowledge of the proper officer. And after GSTR 2 has been filled by the buyer, all the information of GSTR 1 and 2 would be collated into GSTR 3 with other statistical information, and GSTR 3 was supposed to be the return under section 39. We all are aware that this never happened. GSTR 2 1 महीने के लिए खुली थी, और उस 1 महीने के अंदर there was a lot of problems, nuances which came forward before everyone, and the system was shut down. Now the government wanted to collect taxes, and we got a stopgap arrangement. Sir, I request everyone to be on the mute. We got a stopgap arrangement in form of GSTR 3B. GSTR 3B के तहत एक बहुत limited information taxpayer से मांगी गई, and it was, I would not say as a matter of surprise, but yes, as a matter of dissatisfaction among the taxpayers and the professional, that GSTR 3B has taken the position of the final return from the taxpayer. Why I'm saying it is disappointing? It is disappointing because GSTR 3B is not the form which contains proper information where I can convey proper information. When I say what proper information, even the credit notes, if I have to put in credit notes, I don't have a sale in a particular month, there is no column in GSTR 3B where the taxpayer can communicate that to the government. So there were a lot of hurdles, there were a lot of learning, there was a lot of plug and play which happened in this particular form. A lot of writs were put into place. Honorable Gujarat High Court, in the case of Aap and Company, it held that this particular form is not the return, which was overturned by Honorable Supreme Court. With so much of roller coaster ride on this particular form for the past 4 years, it is now settled with 2 decisions primarily, Bharti Airtel's decision and Aap and Company, that this particular form 3B is the return, number 1. And number 2, the most important observation of Honorable Supreme Court, the figures of your tax output and input are derived from your own records, and therefore it is on a self-assessment mechanism where you should have correctly taken your output and input figures in the return and paid the correct taxes. कहने का तात्पर्य क्या है कि the entire mechanism is on the shoulders, the entire tax return is on the shoulders of the taxpayer, which is correct also. The country is into a self-assessment mechanism. But when we say on the self-assessment mechanism, it was with the a lot of support, a lot of
hand-holding in the form of credits which are being shown reflected in GSTR 2A, which was the earlier form, now replaced by GSTR 2B, that the taxpayer was able to confirm the correct taxes which has been passed on by the supplier to the buyer. ITC has been the soul of GST. When this particular act was introduced, it was introduced on two primary fronts to iron out two issues. Number one, multiplicity of the taxes. Number two, seamless flow of credit. In these last 4 years, the second limb, the first limb was one shot. Many taxes were subsumed. The second limb, in the last 4 years, we have seen that even though we are talking about seamless credit, in one way or the other, this particular credit is being hurdled, is being barriered, it is being constrained in the hands of the buyer. Time and again, government has put in new conditions, new challenges before the buyer to take this particular credit primarily, more importantly, on the count of the defaults of the supplier. Default supplier karta hai, and the problem lies with the buyer, that government is trying to recover this particular credit in one form or the other from the buyer. Not new. Let me not go into it. While I just spoke about 1, 2, and 3, which is the original return mechanism, in this particular budget, the entire original return mechanism has been done away with. Relevant sections have been either amended or omitted. If I speak about 37, 38, 39, for that matter, 41, 42, 43, 43A, all of these sections have been either omitted, amended suitably by the government. Let me start with section 37, the details of outward supplies. The government provides that all the persons who are the supplier will place their details of outward supply in GSTR 1 or IFF, which is for the quarterly filers, which will be communicated to the buyer in form GSTR 2B. Now, 2B is a communication which is being auto-generated by GSTN and guided by section 38. I'm not going into 38 for the reasons which I just spoke before. 37 ke andar, there is no specific change. The form, the things will remain same. The amendment which was brought in is the timeline for making any changes in the details of outward supply has been increased from the due date of filing of return, for the month of September of the subsequent year to 30th November of the subsequent year. So पहले आप जो है कोई भी amendments जो आप करना चाहते थे वो due date of filing of return of September of the next year. If I talk about 21-22, you could make any changes, amendments in GSTR 1 of 21-22 till 20th of December. Sorry, 20th of October 2022. Now this particular date has been increased to 30th November 2022 for 21-22. Now when I say so, I am also making everyone conscious that this is right now a bill. And there are times where we have seen that the provisions of the bill takes times to be enacted. For the very simple reason, this particular enactment has to happen in all the state acts also. So jab wo pura process pura hota, it might take some time. There may be a chance that we will see this amendment happening after the September or November date of 22. So my dear friends, please keep a tab कि ये change amendment जब effect हो जाए उसके बाद इसको accept करिए. तब तक the old date will guide the amendment provision. Now, when I say 30th November, I'm also not saying that it is the date of return of 30th November. It is an absolute date, 30th November. So November की return की बात नहीं कर रहा हूँ. November की return हो सकता है 20th December तक जा सकती है. But जो government ने date extend करी है वो absolute 30th November करी है, ना कि return, due date of return of November. So many of the members have also put up this question. Can we do it in the amendment of the, can we do this amendment in the return of November 2022? No, sir. You can only do it till 30th of November 2022. You may file your returns a bit late for the month of August or September for that matter.
in those particular returns, if you file it before 30th of November, on or before, you will be able to make those particular changes. So that is one big change. Similar amendment has been made. The date has been extended for section 34. Similar changes have been brought in section 16 subsection 4. Similar changes has been brought in section 39. इन सभी प्रावधानों में जो डेट है अमेंडमेंट की, ऑल्टरेशन की, इंसर्शन की, क्रेडिट लेने की, वो सब 30th नवंबर कर दी गई. आई सी इट इज अ वेलकम स्टेप. थोड़ा टाइमलाइन गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है, बट आई सी टू इश्यूज विद दैट. नंबर वन, the date of outward supply amendment has been kept as similar to the date of taking ITC. Suppose if I am making a supply to Vineji, I have raised an invoice, I want to make an amendment in that particular invoice. I will amend that particular invoice on, let us say, 30th November 2022. And till I have amended or inserted that particular invoice, Vineji was not able to take that particular credit. Why he was not able to? Because of the newly inserted section, newly effected section, sorry, 16(2)AA. Now 16(2)AA was also a very strict provision in terms of taking ITC, and it has been effected by the government along with Form GSTR 2B. All these tabs and checks, Ashok sir will guide us better on that. Let me point out the problem in terms of the return only. सर अगर 30 नवंबर को मैंने अमेंडमेंट करी तो मेरा बायर उस आईटीसी को 30 नवंबर के अंदर ही लेगा. I think this particular dates could have been a month apart so that the buyers and suppliers can easily reconcile and take the credit at least at a month's distance. Vinay ji. Sir, my humble request is considering that way. So just we have to. Sorry. आप क्या कह रहे हैं? If you can, in a time span, like in a 5-10 minutes, if you can sum up your whole presentation, please. बिल्कुल ठीक है जी. I'll do that. I'll try to do that. Thank you. Please apply. Done, boss. So with the command of Vinay ji, my timelines are now next 5 to 10 minutes. I'll just try to justify those timelines. Outward, inward और रिटर्न, मैंने तीनों के टाइमलाइंस के बारे में आपको बताया, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं वो भी बताया. Now let me also make you aware that 34(2), which is speaking about the issuance of credit notes, it is again a very, very important provision. That timeline has also been extended to 30th day of November of the subsequent year. Friends, I think let me not start any other provision as of now. We need to justify, we need to understand section 38 amendments in more detail, and for which again, as part of G19, I request Batra sir to guide us, to tell us on section 38. Thank you everyone. Gaurav sir, given a 5 minutes, you had 5 to 10 minutes, you had summed up in 5 to 10 seconds only. Sir, topics ऐसे होते हैं, when you are into flow, you may take time. अच्छा, I was also surprised to see Batra sir's photo. I thought he was sitting in live, but then just he replaced his photograph with his live view. So I think let's hear Batra sir. Thank you, friends, and sorry, Gaurav sir. Just, it is just a matter of total discipline. That's I just objective view. My humble opinion. जो गवर्नमेंट के स्पीच में और जो गवर्नमेंट के फाइनेंस बिल के अंदर डिफरेंस है ना, वो कोई भी जस्टिफाई नहीं कर सकता विद इन द टाइम्स. एज द चेयर यू हैव फुल राइट सर. थैंक यू वेरी मच. Please stay back, sir. I'll now request sir, our esteemed speaker and very senior into the profession, Ashok Batra ji, to please give us speak his minds onto the budget and specifically what been left over by Gaurav. Thank you, sir. Thanks, Vinay ji. And thanks, Gaurav, for making my job easier and spreading the provisions in such a lucid manner. If you look at this finance bill, the difference between Kathni and Karni of the government. On one hand, they are saying that this increase in collection is due to compliance by the taxpayer or the supplier so far as GST is concerned. But on the other hand,
if we look at the provision which has been left out to me, section 16 and 38, and couple of other provisions also, it appears as if the government have no faith with the taxpayer. In fact, the problem Gaurav has rightly pointed out of the fake invoicing, they have tried to tackle. But if you look at the provisions which are being proposed very minutely, you will see it is a well-planned mechanism which is being done. He has not talked about certain procedural amendment. I'll just finish it off within 5 minutes. And then it is a lost opportunity for the government. They have not put up a roadmap for the GST tribunal. We have given number of suggestions through industry chambers, through institute, etc., where there are certain anomalies in the provisions which has not been looked at. They have only done those changes which will enable them to defend their provisions in the court of law, and wherein they can tackle the menace of fake invoicing. Increased compliance, he has talked about section 37, 39. Now you have to file GSTR 1. If you don't file it for the preceding month, for the preceding any of the month, you cannot file for the current month. So sequential filing of GSTR 1. Then 39 is being amended to have another condition. You cannot file your 3B unless otherwise you file the GSTR 1. Hello. So GSTR 1 has become GSTR 1 has become a Bible for the government. उन्होंने उसको कंट्रोल किया है. जो स्कीम इन्होंने खत्म की 1, 2, 3 जो गौरव ने एक्सप्लेन कर दी है, उसमें अगर आप देखेंगे तो सेक्शन 42, 43, 43 capital A has been totally deleted from the statute book. 43A was introduced in 2018, not made applicable even today, and now it has been deleted also. Then section 38 and section 41 both have been substituted with the new sections. 29 cancellation of returns. Then there are beneficial provisions. Gaurav has already stated you for rectification of error or claim of credit. Additional 40 days has been given to you up to 30th November, and corresponding amendment is 16 subsection 4, 37, 39, 30, 52 also. Collection of tax outsource also. So one, there's the increased compliance. Second is tax credit part of it. Then there are beneficial provisions also. If you look at the amendment which has been done in section 50, they are really very useful. For example, they say that now you will be liable to pay interest only when the credit has been wrongly availed and utilized. So a lot more show cause notice which we are contesting. If this amendment is being brought into force, that litigation will go up. If you wrongly avail the credit and don't utilize, you're not liable to pay the interest. And not only that, they have reduced the rate of interest also from 24 to 18%. That too retrospective with effect from 1st July 2017. अब उनसे ये पूछो कि भैया आपने ये तो कर दिया, जिन्होंने पैसे दे दिए वो क्या करेंगे? Can they claim a refund for this? In my humble opinion, yes, they can claim refund because there's no bar. Unlike there are two retrospective exemption has been given, one to the license fee by the government, state government for alcoholic liquor, which is neither being treated as supply of goods nor a service, with effect from 1st July 2017. Similarly, an exemption has been given to unintended waste in the manufacture of fish meal, except fish oil, for the period 1st July 2017 to 30th September 2019. So some beneficial amendments are also there. Now coming to the main issue, now let us go to section 16(2), where BA is being introduced. Originally, there have been 4 conditions. I must have a invoice, I must have received the services, tax has been paid by the supplier, and I have filed my return under section 39. Now, they have made 39 independent of any other section, so 3B is a permanent return, there is no doubt about that. Then from 1st January 2022, they came out with an amendment wherein they suggested that this detail must be uploaded by the supplier and communicated to the recipient in 2B form. Now, in order to give
legal backing statutory provisions that was provided in Rule 36. So they said, okay, we are putting up this condition in the statutory provision itself. तो उन्होंने टैकल करने की कोशिश की. अब उन्होंने एक और कंडीशन लगा दी. वो ये कहा कि BA is also being inserted. You will be eligible for the credit only when there is no restriction proposed in Section 38. Kindly appreciate. One kind of conditions are there for the availment of credit. Second kind of conditions are there, which was in case the credit comes into 2B from 1st January 2022, then only you'll be eligible for the credit. और अब ये कह दिया credit अगर आ भी जाएगा, Section 38 में बहुत सारी condition लगा दी, which is relating to taxable person. Nature of credit वहाँ कहीं नहीं है. Credit shall not be allowed to the person. I'll deal with that in detail, but first of all, let me tell you, 16(2)(BA लगाने के बाद अगर क्रेडिट 2B में आ भी जाता है तो भी आपको नहीं मिलेगा, उसकी कंडीशंस लगा दी 38 में. अब उन्होंने कहा कि हमने प्रोविजनल क्रेडिट का सिस्टम छोड़ दिया है, अब आपको सेल्फ असेस क्रेडिट लेना पड़ेगा अंडर सेक्शन 41 और हम 41 को रिप्लेस कर रहे हैं. बिल्कुल ठीक है, 38 को आपने रिप्लेस किया. 38 का टाइटल था फर्निशिंग ऑफ इनवर्ड सप्लाई व्हिच वाज नेवर इफेक्टिव. आपने तो सेक्शन का नंबर तो वो चूज कर लिया, बट व्हाट हैज यू स्टेटेड इज समथिंग very risky, but of course to help you in the court of law I'll explain it how. 41 में अगर सेल्फ असेस टैक्स कह देते तो बात खत्म थी. प्रोविजनल है ही नहीं, अब आप सेल्फ असेस करेंगे आपको क्रेडिट मिल जाएगा, बात खत्म. Where was the need for second proviso and subsection 2? Subsection 2 and proviso उसका क्या मीनिंग है? Subsection 2 कहता है कि you will not entitle for the credit if the tax has not been paid by the supplier. अरे ये तो 16(2)(C में लिखा हुआ था. Is it a new condition? आप सबके सामने फाइनेंस बिल है जो वो कह रहे हैं कि टैक्स मस्ट बी पेड बाय द सप्लायर. So this was already a condition in 16(2)(C. But of course the government also realizes and aware of the fact that these changes have already been challenged in various high courts. तो अब उन्होंने ये डाल के 41 में रिपीट करके एक प्रोविजो और डाल दिया. एंड व्हाट इज दैट प्रोविजो? प्रोविजो में ये कहा कि वंस द सप्लायर शैल मेक पेमेंट ऑफ टैक्स यू शैल बी एलिजिबल टू क्लेम द क्रेडिट. बात समझ में आई? अब कोर्ट में जब वो कहेंगे कि भैया तुम एक ऐसी कंडीशन लगा रहे हो जिसका रिसिपिएंट के हाथ में कुछ है नहीं, इट्स अ सेटल्ड लॉ. Arise India, there are a couple of other judgments which says you cannot penalize the buyer for the fault committed by the seller unless otherwise you prove the connivance between the two to defraud the revenue. So it is a settled proposition of law, nobody denies it. And Supreme Court has affirmed in Arise India also and couple of other cases. But the only thing is the Supreme Court when confirmed Arise India, they didn't pass a detailed order. Summarily manner they say, so it will not become law of the land because of Article 141. So try to appreciate. 41 में जब वो section डाला, 2 भी डाल दिया, proviso डाल दिया. There is already one judgment in favor of the revenue. जब उन्होंने time limit लिखी 180 की, उन्होंने कहा सर it is an indivisible right. Article 300A देखिए, ये तो asset है उस आदमी के, आप उसका credit कैसे मना कर देंगे? Then there is a Thai Lichit Karkaria Limited. उस judgment पे भी यही है, it is an indivisible right. How will you stop their credit? तो गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली कहा कि हमने कहाँ क्रेडिट डिनाई किया है, जिस दिन ये पेमेंट कर देंगे. हमने स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का इंटरेस्ट देखने के लिए, बड़ी कंपनियां उनके साथ मिसयूज करती हैं, हमने एक प्रोविजन रखा और जब वो कंपनी पेमेंट कर देगी इनको तो दे विल बी एलिजिबल फॉर द क्रेडिट. तो ये डिसइंसेंटिव है बड़ी कंपनियों के लिए. तो गवर्नमेंट कोर्ट देगा बिल्कुल ठीक है, आप वो पर्पस भी पूरा करते हैं और आपने क्रेडिट डिनाई भी नहीं किया. और वेरी स्मार्टली अब उन्होंने 41 के प्रोविजन 41(2) के प्रोविजन में क्या लिख दिया? In case the supplier makes payment. आगे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि मेरा 2B में क्रेडिट आएगा नहीं आएगा. पहले तो 10%, 20%, 5% और फिर बाद में कह दिया जितना 2B में आएगा वो देंगे. अब 38 बड़ा स्मार्टली एक सेक्शन इनेक्ट कर दिया, बोला क्रेडिट आ भी जाएगा तब भी तो क्रेडिट नहीं देंगे. Whether it is right or wrong वो एक अलग बात है, क्योंकि लॉ कॉम्प्लिकेट होता है व्यापारी की गलती से. सर्विस चेक कितना सिंपल था, कैश बेसिस पे आप दीजिए. आपने क्या किया,
सर्विस प्रोवाइड कर दी, उसने रिसीव कर ली, rather than making the payment for the consideration of services, you have advanced in the same amount of loan. जब गवर्नमेंट टैक्स लेने आए तो बोला किस बात का टैक्स। ऐसे ही ऑनलाइन नेटफ्लिक्स वालों में जब ये आ गया भैया तुम सर्विस तो बोलो किस बात के, अब तो बाहर है, सर्विस रिसिपिएंट यहाँ है, फिर उन्होंने लॉ, तो जब इन लूप होल्स का मिसयूज होता है तो लॉ कॉम्प्लिकेट होता है। बट द गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दे हैव टू स्ट्राइक आउट अ बैलेंस बिटवीन द ऑनेस्ट टैक्सपेयर एंड अ डिसऑनेस्ट टैक्सपेयर। अब किस हद तक ऑनेस्ट टैक्सपेयर को दबाएंगे, वो एक लिमिट आपको रखनी पड़ेगी, आपको अपना एनफोर्समेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा जहां आप अनस्क्रूपुलस डीलर्स को पकड़ सके। इसका मतलब ये नहीं कि हर आदमी को आप उसको डिस्टर्ब करें। सो मेरा ये कहना है कि 41(2) का प्रोविजन उन्होंने कोर्ट में ये कहने के लिए कहा, सर हमने तो मना किया ही नहीं, अब इन्होंने कह दिया कि टैक्स नहीं देंगे, टैक्स दे देगा सप्लायर तो दे देंगे। सेक्शन 38 में 37 की अगर आप अमेंडमेंट देखें तो बड़ी स्मार्टली उन्होंने एक चीज कही है। 37 में पहले कहा है सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस ही कैन सबमिट द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज इन GSTR 1, और ये अमेंडमेंट उन्होंने सेक्शन 49 में भी कर दिया। जहां सिर्फ कंडीशन था वहां रिस्ट्रिक्शंस लिख दिए हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट, अब उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट में तो कौन बार बार जाता रहेगा, तो डेलीगेट लेजिस्लेचर से नोटिफिकेशन से हम इनको टांगते रहेंगे। तो 37 में पहले तो ये कह दिया कि भैया सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शन यू विल सबमिट द GSTR 1, और फिर सेकंड में यही कह दिया जो ये डिटेल्स कम्युनिकेट होनी है टू द रिसिपिएंट दैट विल आल्सो बी सब्जेक्ट टू कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस। तो वहां उन्होंने मैनर जो रूल जो भी बनाएंगे उसको जस्टिफाई करने के लिए कोर्ट में अपने आप को डिफेंड करने के लिए ये पावर ले ली। अब जब ये पावर ले ली और सेक्शन 38 इनेक्ट कर दिया, और वहां भी यही लिखा कि GSTR 1 जो सब्जेक्ट टू कंडीशन रिस्ट्रिक्शंस आपका 2B में आएगा, दैट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड टू योर अकाउंट। दे हैव नॉट मेंशन 2B बट इट इज समथिंग लाइक दैट फॉर्म। 2B का कंटिन्यू भी हो सकता है। वो जब क्रेडिट आएगा तब आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं, बट देन सबसेक्शन 2 which is very dangerous, वो क्रेडिट आपका एलिजिबल हो। पहले तो आप ये देखिए कि आप अपना एलिजिबल क्रेडिट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट टू ब्लॉक क्रेडिट, सब्जेक्ट टू कंडीशंस ऑफ 16, लेट अस से दैट इज एक्स अमाउंट। अब वो एक्स अमाउंट आपके अकाउंट में भी आना चाहिए, और वहां लिखा कि आउटवर्ड सप्लाईज अदर सप्लाईज आल्सो, क्योंकि सारी चीज GSTR 1 में नहीं आती है। ISD का क्रेडिट नहीं आता GSTR 1 में, इंपोर्ट IGST का क्रेडिट नहीं आता GSTR 1 में। तो उन्होंने एक 38 सेक्शन बना दिया कि ये सारी डिटेल्स जो है हम आपके यहाँ ऑटो पॉपुलेट करेंगे, और जब ऑटो पॉपुलेट करेंगे तो आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। अब सब सेक्शन 2 को ये कहा कि जब वो क्रेडिट आपके अकाउंट में आएगा तो उसके 2 पार्ट होंगे। एक, द क्रेडिट विच इज अवेलेबल टू यू, और सेकेंडली द क्रेडिट विच हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड। और रिस्ट्रिक्शन कहाँ लग सकती है, उसमें उन्होंने 6 क्लॉजेस डाल दी। अब एक एक क्लॉज कितनी इंपॉर्टेंट है और आप उसको अप्रिशिएट करेंगे उसका पर्पस क्या है। पहले उन्होंने क्लॉज ये लगाया कि बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन विद इन सच पीरियड ऑफ टेकिंग रजिस्ट्रेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, यानी एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ही मे बी अ सप्लायर, ही मे बी अ रेसिपिएंट, दे आर गोइंग टू कम आउट विद द रूल्स वेयर दे से कि नया रजिस्ट्रेशन में आपको पहले 2 महीने क्रेडिट नहीं मिलेगा, या पहले 2 महीने आप 50% क्रेडिट लेंगे, या जो भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। क्योंकि फेक इनवॉइसिंग में जो भी फर्में बनती हैं वो इनिशियल पीरियड में इतना टर्नओवर कर देती हैं कि उसका क्रेडिट मिल जाता है। अब अगर मान लीजिए एक आदमी ने एक फर्म बनाई, पहले महीने में उसने 100 करोड़ रुपए का टर्नओवर कर दिया, और गवर्नमेंट ने कहा जी आप 20% से ज्यादा क्रेडिट नहीं ले सकते। यार मेरा क्या मतलब है, उस आदमी के आप रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो, क्रेडिट मेरा रोक रहे हो। क्रेडिट तो आप रिसिपिएंट का ही रोकोगे, सप्लायर का तो क्रेडिट होता ही नहीं। क्रेडिट इज ऑलवेज द रिसिपिएंट। So kindly look at the language, by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed। का कूलिंग पीरियड रखोगे क्या? 3 महीने तक आप क्रेडिट नहीं ले पाओगे। रूल में कह देंगे wherever there is a suspicion we can put up a condition। अरे भाई, you cannot expect an assessee to do an impossible task। जब 16(2)(C चैलेंज हुआ पेमेंट उसने नहीं की, मेरे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है वेरीफाई करने का, तो बोले तुम छोड़ो हम वेरीफाई करेंगे। अभी अब अगली क्लास पे आएंगे तो आप वो भी देखेंगे सरकार ने कितनी बड़ी गेम खेली वहां पे। तो उन्होंने कहा भैया जो न्यू रजिस्ट्रेशन है
जिसका डाउटफुल होगा या जो टर्नओवर एबनॉर्मली हाई दिखाएंगे हम उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। दैट पावर मे बी गिवन टू द कमिश्नर, जैसे उन्होंने कैंसिलेशन की पावर दे दी, प्रोविजनल अटैचमेंट बैंक अकाउंट की दे दी, प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ क्रेडिट की दे दी। यहां भी बात खत्म नहीं हुई, अभी तो हम ट्रेड पे चल रहे हैं, उसके बाद फिर एक और पैरामीटर लगा दिया। तो सीमलेस क्रेडिट वाज दिस आत्मा ऑफ जीएसटी, व्हाट एक्चुअली यू वांट टू डू विद इट। सो very strange language by any registered person within such period of taking registration as may be prescribed. अब दूसरा कह दिया नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स, जो 16(2)(c) की कंडीशन है, 16(2)(c) में भी कह दिया और यहां भी कह दिया। तो दैट मींस they will see if that gentleman has not filed 3B, they will communicate to you and they will say that Mr. A has not filed 3B, he has not paid the tax, your credit is being restricted. अब शायद वो इस प्रोविजन को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हमने कोर्ट ने ये कहा कि how an assessee can do an impossible task, well let the assessee not do it, we will do it. अब आप देखिए टू वे कम्युनिकेशन बिटवीन सप्लायर एंड रिसिपिएंट खत्म हो गया विद द एवोल्यूशन ऑफ 1, 2 एंड 3। अब तो ये कोड बन गया कि हमारे से बात करो, आपस में बात मत करो। एज ए सप्लायर यू गिव मी द इंफॉर्मेशन इन GSTR 1 सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन कंडीशन एंड देन आई विल कम्युनिकेट टू द रिसिपिएंट। वो मेरा काम है, मैं कम्युनिकेट करूंगा। और जब ये कह दिया पेमेंट वहां नहीं देनी, 16(2) से ही कंडीशन है, यहाँ क्यों लिखा once he has not paid the tax? Perhaps they are coming out with the rules wherein any person who has not filed his 3B, they will have a data with them, या GSTR टैक्स नहीं दिया, उसने फाइल नहीं किया, तो वो आपको कम्युनिकेट कर देंगे। बोले हम एसएससी से इम्पॉसिबल काम नहीं कर रहे, हम एसएससी की रोल, एसएससी की हेल्प के लिए हम आ गए हैं बीच में और हम एसएससी को बता रहे हैं कि भैया उस आदमी ने टैक्स जमा नहीं कराया, हम तेरे को क्रेडिट दे देंगे। कितने रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे, कितने महीने की लगाएंगे, कितने परसेंटेज की लगाएंगे, वो एक अलग स्टोरी है, एक अलग बात है। अब दूसरी कंडीशन क्या लगाई? इफ ही इज शोइंग मोर टर्नओवर इन GSTR 1 and showing less turnover in GSTR 3B, it can be because of various reasons। जैसे अभी उन्होंने कहा था कि जब 1 जनवरी 2022 को ये कंडीशन आई थी कि आप अपने GSTR 1 में डालेंगे और 2B में आएगा तभी क्रेडिट देंगे, तो उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था जिस सर्कुलर में कहा था कि देयर कैन बी जेन्युइन रीजंस आल्सो फॉर दैट सेम पर्पस। सबको पता है कि GSTR 1 मंथली है, तो किसी ने क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट स्कीम भी ऑप्ट की हुई है, वो क्या करेगा? तो गवर्नमेंट ने बड़ा स्मार्टली ये काम भी कर दिया कि हम आ गए हैं उसकी पोजीशन में, और अगर उसने GSTR 1 में 100 रुपए टर्नओवर दिखाया और 3 में कम टर्नओवर दिखाया तो भी हम आपको कम्युनिकेट कर देंगे। तो हमारे पास डाटा तो इलेक्ट्रॉनिकली अवेलेबल है, कितना दिखाया है, और एक सर्कुलर इशू कर देंगे कि इट मस्ट बी यूज्ड वेरी रेयरली विद कॉशन। बट अल्टीमेटली कोई भी फाइनेंस एक्ट इन ऑफिसर्स के ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी क्लॉज लाया आज तक? वो ब्यूरोक्रेट्स के लिए तो आप कस्टमर हैं भाई, आपने उसको पावर दे दी तो इट इज लाइकली टू मिसयूटिलाइज्ड। भले ही आपने सर्कुलर जरूर निकाला कि जब वो 2B में कुछ जेन्युइन डिफरेंस है मैं एक्सप्लेन कर दूंगा तो आप मेरा क्रेडिट मत रोकिए, बट अगेन 38 में आपने कहा कि मैं बता दूंगा आपको, और मैं बता दूंगा तो फिर आपको रोकना पड़ेगा, 16(2)(b) भी ले आए। This is another condition which is already there, but now through 38 I am eagerly waiting for the rules to be notified, what exactly they are want to do and what are the technological tools they have developed through which they will communicate it to us. और फिर fourth condition क्या लगाई? If you are availing the credit in defiance of condition contained in subclause A, and what is the subclause A? जैसे मैंने कहा cooling period भी कह सकते हो आप कि registered person जो new registration लेगा तो उसको credit subject to restrictions मिलेगा। पांचवा उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपका क्रेडिट लेजर आ गया, उसने पेमेंट कर दी, सब कुछ कर दी, तब भी आपको हम क्रेडिट नहीं लेने देंगे। सर आप क्यों नहीं लेने दोगे? अब क्या समस्या आ गई? बोले हम आपको अलाउ करेंगे टू अवेल द क्रेडिट इन स्पेसिफाइड परसेंटेज फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स। जैसे उन्होंने 99% किया था, आप सबको मालूम है 86B रूल आया था, उन्होंने कहा था आप 99% क्रेडिट यूज कर सकते हैं, बट देन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। वो एक्सेप्शंस इतनी ज्यादा थी कि उस रूल की ज्यादा एप्लीकेबिलिटी नहीं बनती थी, तो ज्यादा ह्यू क्राई नहीं हुआ। बट नाउ दे सेड कि वी कैन ऑलवेज टेक दिस पावर
ये रूल भी चैलेंज हुआ वेरियस हाई कोर्ट्स में। जब चैलेंज हुआ, इसकी स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी, तो अब उन्होंने सेक्शन 49 सबसेक्शन 12 स्पेसिफिकली डाल दिया। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, these are not amendments to remove the anomaly. These are the amendment with a very thought process behind it, and every amendment has a purpose for it. So 49-12 में जो amendment लाए वो, that is only for the purpose of defending them that rule 86B is not being treated as ultra virus. यहाँ भी पेट नहीं भरा सरकार का, तो सरकार ने क्या कहा कि भैया any other person, हमें पावर दे दो, हम किसी भी आदमी को किसी भी डिफॉल्ट के लिए रोक सकते हैं। चलिए सर वो भी कर लीजिए। तो then this is 38 section which has restricted your credit in such a great form. Then I'll come to certain changes जो गौरव जी ने डील नहीं की, but important है। सेक्शन 29 में चेंज आई है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। कंपोजिशन डीलर अब एनुअल रिटर्न फाइल करता है, पहले क्वार्टरली करता था, तो 3 रिटर्न अगर कंसेक्यूटिवली नहीं फाइल करता था तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होती थी। अब एनुअल रिटर्न 30 अप्रैल तक होनी है, तो लॉ को अमेंड कर दिया और ये कहा कि इन केस इट डज नॉट फाइल रिटर्न बियॉन्ड 3 months आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, हिज आरसी में बी कैंसिल्ड। सिमिलरली एनी अदर डीलर के लिए it was mentioned that he should not file 6 consecutive monthly returns for tax period. अब उन्होंने ये कह दिया कि फॉर सच पीरियड, यानी आप उस पीरियड को कम भी कर सकते हैं। अगर आपने 2 month की भी रिटर्न नहीं की, कल को नोटिफिकेशन आ सकती है और आपका आरसी भी कैंसिल हो सकता है। 37 में मैंने आपको बता दिया, ये जीएसटीआर 1 के लिए सब्जेक्ट टू कंडीशंस भी लगा दिया और सिक्वेंशियल फाइलिंग मैंडेटरी कर दी। Unless otherwise you don't file the previous month GSTR 1, you cannot file GSTR 1 for the current month. 38 हमने डिटेल में डील कर लिया। 39 जैसे रिटर्न का था, नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर टैक्सेबल पर्सन की जो रिटर्न 20 तारीख को जाती थी उसकी डेट 13 कर दी। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की, यू हैव टू पे द सेल्फ असेस्ड टैक्स और एनी अमाउंट प्रिस्क्राइब। ये अगर आप कितने भी स्पीकर्स को सुनेंगे तो नॉर्मली वो इस अमेंडमेंट को अवॉइड कर रहे हैं, उस पर ज्यादा नहीं बोल रहे हैं, बट आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। मैं अपने व्यू दे रहा हूँ, विच मे बी राइट और रॉन्ग। एनी अमाउंट प्रिस्क्राइब, ये एक स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई थी, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट्स की। यहाँ पे आप 35% टैक्स जमा कराते थे, तो आप अमाउंट प्रिस्क्राइब कर दिया, आप जमा करा रहे, सेल्फ असेस टैक्स नहीं था, उसकी कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं थी। अब उन्होंने उसको स्टैट्यूटरी बैकिंग भी प्रोवाइड कर दी। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, इफ यू लुक एट दिस, एवरी असेसमेंट 41 वी हैव डेल्ट इन डिटेल। लेट फी के लिए कह दिया, पहले सेक्शन 52C में टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की अगर रिटर्न नहीं फाइल करते थे तो उसका मेंशन भूल गए थे 47 में करना। अब अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसको भी लेट फी देनी पड़ेगी। और 49 जो पेमेंट ऑफ टैक्स का है, इस पे एक बड़ा अच्छा प्रोविजन लेके आया, विच इज रियली वेरी गुड, कि आपके कैश लेजर में अगर कोई बैलेंस पड़ा है एंड यू हैव टेकन मोर देन 1 रजिस्ट्रेशन अंडर 1 पैन नंबर, तो you can always transfer that excess balance to other numbers. For example, मैं दिल्ली में भी रजिस्टर्ड हूँ, कलकत्ता में रजिस्टर्ड हूँ, बॉम्बे में रजिस्टर्ड हूँ, तो मैं दिल्ली के कैश लेजर में ज्यादा अमाउंट है तो I can transfer it as CGST, SGST corresponding amendment will come in SGST also. गौरव was saying कि SGST में अमेंडमेंट नहीं आया, वो नहीं, वो लॉ में ये लिखा होगा जो अमेंडमेंट सेंटर लाएगी स्टेट को लाना पड़ेगा। इट मे बी अ क्वेश्चन ऑफ टाइम, बट दैट अमेंडमेंट हैज टू कम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। तो जब वो अमेंडमेंट आएगी तो ये ट्रांसफर ऑफ बैलेंस वाला जो प्रोविजन है, दिस इज रियली बेनिफिशियल, इट विल हेल्प यूजिंग द कैश फ्लो। और जो क्रॉस चार्जेस जो हेरा फेरी करते थे ट्रांसफर करके पैसा करने की, वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो दिस इज वन अनदर इंपॉर्टेंट जजमेंट। 14 and 12 में डील कर चुका हूँ। 50 लास्ट अमेंडमेंट है विच इज अंडर सेक्शन 54। 54 डील्स विद रिफंड। रिफंड में उन्होंने कई अनॉमलीज अच्छी क्लैरिफाई की है, बट देन वन अमेंडमेंट इज अगेंस्ट द सप्लायर्स आल्सो। पहले बात कर लेते हैं फेवरेबल। कैश लेजर का रिफंड ऑफ सेक्शन 39 ST3 में GST 3 में क्लेम कर सकते हैं। 3 तो आया नहीं, 3B में कॉलम नहीं, तो आप कैसे क्लेम करेंगे? तो उन्होंने ये कह दिया इन सच कंडीशन, इन सच फॉर्म। सो दैट मीन्स now either they will introduce a column in 3B or they will introduce a form so that you can claim the refund in cash ledger. That provision was totally impractical. ST3 कभी apply नहीं हुआ,
प्रेस्टी 3 से आपने कैश लेजर लेना था, तो वो एक अच्छी अमेंडमेंट है। एक डिप्लोमेटिक मिशंस और organization which has been mentioned in Immunity and Privileges Act, WHO etc. जो organization वहाँ भी specified है, उनको refund 6 महीने में लेना होता था from the month they are receiving these supplies. Now that period has been increased to 2 years, so all refund can be availed now within 2 years from the relevant date. और relevant date उन्होंने नीचे explanation में define किया है. Unfortunately, when the supply has been made to SEZ, तो उसको भी दो ही ऑप्शन थी, either टैक्स का रिफंड ले ले या इनपुट का रिफंड ले ले। तो उन्होंने वहां क्लैरिटी ले आए और ये कह दिया कि जब आप सप्लाईज SEZ को देते हैं तो उसकी जो रेलेवेंट डेट होगी दैट विल बी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर GSTR 3B। तो वहां से आप 2 साल निकाल सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो ए वेरी गुड क्लैरिफिकेटरी clarification which is being proposed as an amendment in section 54. अब जो अगेंस्ट है वो ये है कि 5410 में विद होल्डिंग ऑफ रिफंड की एक पावर थी SEC को, कि वो रिफंड को विद होल्ड कर सकता था। बट वो रिफंड को कब विद होल्ड कर सकता था? इफ यू लुक एट द ओल्ड प्रोविजन तो लिखा सेक्शन 54 सब सेक्शन 3 में। अब सरकार ने रेफरेंस टू 3 हैज बीन ओमिटेड। Now it is subject to section 54. So that means जो आपको रिफंड मिलता है चाहे 54(1) में मिले या 3 में मिले, चाहे वो कैश लेजर का हो चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट का हो, वो रिफंड जब आप क्लेम करेंगे that will be subject to section 5410, which means in case you had any demand that refund can be withheld by the proper officer. जैसे मैंने कहा कि 2 रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट आई सेक्शन 50 में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया, 18% हो गया 24 से फ्रॉम 1 जुलाई। और जिन्होंने एक्सेस दिया हुआ वो रिफंड भी लगा सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ 54। और एक अल्कोहलिक लिकर वाली अमेंडमेंट है। 2 एग्जम्पशंस की मैंने बात कर ली थी आपके सामने, फिश मील और अल्कोहलिक लिकर के लाइसेंस फी की, वो अमेंडमेंट भी रेट्रोस्पेक्टिवली आई है। और जो फिश मील वाला है, जो बहुत कम लोग इंटरेस्टेड होंगे, वो सिर्फ एक पीरियड के लिए आई है 1 जुलाई 2017 to 30 September 2019। With this, I have tried to cover whichever has been left by Gaurav, and I have tried to give my views so far as ITC is concerned. Any question, if the time permits, otherwise I hand over the proceedings to Vinay. Thank you, Ashok ji. The point is, we'll request the members to please hold your question and answer session, if that be so, because right now we don't have any specific question as of now. And one thing which I think that I request you to please clarify, considering out the amendment out there in 16(2) through enactment of new subsection, there is a new clause that is BA, and the amendment out there in section 38, sir. एक practical approach है कि what we should suggest to our clients, so that the flawless that credit should be available to our. विनय जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि मेरा अपना व्यू थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जब से ये 1 जुलाई 22 से ये कंडीशन नहीं आई 2AA वाली, BA तो बाद में आई है, अभी प्रपोज्ड है, वो तो अभी लगी भी नहीं है। पहले मेरा ये कहना था कि व्हाटएवर यू वांट टू क्लेम एज पर योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप उसको क्लेम करें, क्योंकि भारती ने भी ये कहा था कि इट इज ओनली ए फैसिलिटेशन मेजर, you have to compute your output tax liability, you have to claim your tax credit and file the return. This is what you have been doing in the pre-GST era also. It was only facilitation measure, it was not having any statutory backing. तो भैया वो तो आप मानो या ना मानो, but now with the introduction of 2A, that means the amendment being made applicable, now it has been given a statutory backing. और दूसरा जो BA में restrictions आ गई, ये तो पता नहीं कब operational होगा, कब rules आएंगे, क्या नहीं होगा। तो मेरा ये सजेशन है कि we can divide our clients into 2 kind of categories. One which I call it a small supplier, जिनकी liability या credit बहुत ज्यादा substantial नहीं होता है। तो अगर वो 10% या 5% कम भी ले लेंगे, या 2B में अगर आज नहीं आ रहा तो अगले महीने भी आएगा, तो ज्यादा कोई कैश फ्लो पे इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, तो उनको तो डिपार्टमेंट से पंगा नहीं लेना चाहिए, and they should try to comply with whatever credit is coming in 2B, they should claim only to that an extent, unless otherwise there are some arithmetical error or some patent credit which is not coming. For example, in addition to 2B, you can claim the credit of
IGST paid on import, you can claim the credit of input tax credit distribution. जो IST का है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट है, वो भी यहाँ नहीं आता है. तो वो सब चीजें आप कर सकते हैं. कोई अर्थमेटिकल एरर हो गई, उसने आपका नंबर गलत कर दिया है, कुछ और कर दिया, वो भी आप क्रेडिट ले सकते हैं. बट बियॉन्ड दैट, अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा नहीं है, then you should not be innovative and you should not claim more credit, which according to you it is eligible. If it is only a timing difference we can understand. अब नहीं मिलेगा, 2 महीने बाद वो करेगा, क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करता है, तो वहां से आ जाएगा क्रेडिट, मैं अगले महीने में ले लूंगा. But where the amounts are very big and it has huge implication on cash flow, आज की डेट में कई बार कॉस्ट नहीं होती, समटाइम लिक्विडिटी इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट. लिक्विडिटी है ही नहीं, पैसे है ही नहीं, तो करेंगे क्या? तो वहां मेरे हिसाब से आपके बुक्स के हिसाब से जो क्रेडिट है वो आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि ये BA तो अभी इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है, इसकी तो कंडीशंस अभी आई नहीं है. आज तो सिर्फ उन्होंने बैकिंग दी है 2B को. बट अगेन we can always say that is a facilitation where you have backings to statutory provision. But the act, if you read this charging section and section 59, I have to self-assess my tax. तो वहां जब बड़े अमाउंट है, वहां आपको जो क्रेडिट एलिजिबल है in terms of provisions contained in chapter 5, 16 to 21, वो आप लेना चाहिए. देखिए जो amendment 38 है, 41 है, this is not part of chapter 5 which deals with the ITC credit. बट ऐसा भी नहीं है कि वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकता, बिकॉज 38 इज फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न यू आर क्लेमिंग द क्रेडिट. तो छोटे मोटे अमाउंट में वन शुड नॉट गो इनटू दैट डिटेल, बट वेयर द अमाउंट्स आर बिग यू कैन क्लेम द क्रेडिट व्हिच इज अकॉर्डिंग टू यू इज अवेलेबल टू यू एज पर द प्रोविजंस ऑफ लॉ. Friends, which I can get what Ashok ji has finally deliberated on this particular point is क्योंकि litigation cost has its own values, like its own economics, so we need to work on economics in a sense. नहीं, मैं थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ. हाँ सर प्लीज. लिटिगेशन में कॉस्ट इकोनॉमिक्स तो हर आदमी समझता है. ये तो कोई आदमी है ही नहीं जो इकोनॉमिक्स को नहीं समझता, वो पहले कह देता है. बट लिटिगेशन में दूसरा क्या होता है कि व्हेन यू गो इनटू लिटिगेशन, योर ऑडिट इज बीइंग डन और इंस्पेक्शन इज बीइंग कैरिड आउट, तो वो सारी चीजें जो आप कि नॉर्मली नॉलेज में नहीं आती है डिपार्टमेंट के, उसके साथ अलाइड इश्यूज बहुत सारे खुलते हैं. Correct. मैं हमेशा कहता हूं कि आप जो कॉस्ट देखते हो वो इन टर्म्स ऑफ लिटिगेशन कॉस्ट, फीस पेड टू मिस्टर बत्रा एंड अदर प्रोफेशनल्स इन काउंट करें. और आप ये भी समझें कि अगर आपका ऑडिट होता है तो ये ऐसा नहीं है, मेरी अपनी रिटर्न भी होगी तो शायद 24 कैरेट वो भी नहीं होगी, वहां भी कहीं ना कहीं मैंने क्रेडिट गलती से ले लिया होगा, शायद मैंने पर्सनल क्रेडिट डिसअलाउ नहीं किया होगा. तो वो सारी चीजें you are taking a confrontation with the department, so you be ready कि कल को वो irregularities जो आप अगर ये काम नहीं करते तो point out ही नहीं होगी, वो भी consider करनी पड़ेगी. So friends, I think that the timeline and the procedures and the seamless flow of credits, ये बत्रा जी ने बड़ा ही fine tune करके हम सबको बता दिया है कि how we have to go ahead with this. Again, we should not venture in troubled water. That is the key to the factor. We should try and avoid turbulence as much as we can. But बाकी तो client के ऊपर depend है, हम तो facilitator नहीं है. All depends, like we need to educate to our client and the business community as well, friends. And since there is no question as of now as in my chat box, I'll request the members to hold your question in the time to come. We'll take up the question and answer section. And definitely Ashok ji and Gaurav ji is with us for some time, and probably Gaurav ji has to, Ashok ji has to leave us. मुझे 4 बजे एक और भोपाल का मेरा एक प्रोग्राम है, so I have to attend that. So whatever queries are there, you can note it down. We can discuss in some other meeting, or next month we can take all those. Fair enough. Vinay ji, I'll also request that I'll have to take a leave because again 4 p.m. I have also another session. गौरव जी ने और अशोक जी ने कल ही बताया था, because as I told you in my opening remarks also, friends, I mean this is our good luck that we have such an esteemed speaker with us, that and they are available, I mean at any time. But क्योंकि बजट डे है और बजट टाइम्स हैं, तो उसमें बजट टॉक्स, लॉट ऑफ रिक्वेस्ट आर देयर टू देम कि भाई हमारी मीटिंग भी आप डेलिब्रेट करें. So accordingly, they have to go in next meeting,
And I, on behalf of all the members of the G19 Bar Associations, I thanks all my speakers who deliberated on ये the. आप कौन हो? थैंक्स करने वाले तो पार्ट टाइम मेंबर है यार इसके ग्रुप में, यहाँ कोई थैंक्स वैंक्स नहीं है. This is the Anytime humbleness. anybody can call me. Everybody has got my mobile number also. They can, any question they can always call me. Of course, after 6 today, because I'll be busy in that seminar. Thank you. Thank you, I'm Ashok leaving. ji. Thank you, Gaurav ji, for the night deliberation. And Gaurav ji, once again, my sincerely, my आवाज गई पीछे से गई. रुको कोई बात आ गई. इंटरनेट की खराब नहीं. चलो विनय जी आवाज नहीं आ रही. सतीश जी आपकी आवाज नहीं आ रही. सर मैंने अभी बोलना शुरू नहीं किया था, मेरे को किसी की आवाज नहीं आ रही थी, अब आपकी आवाज आई है. गुड आफ्टरनून सर. Now you can start, I believe. Now you can start. चलिए जी. विनय जी कैन आई स्टार्ट सर? Yes, हाँ yes, सर. चलिए सर आपने वार्म अप कर लिया, अब शुरू हो जाओ सर. ठीक है जी. फ्रेंड्स, as in the recent years, the budget speech by the finance minister, I will start with that itself, was comparatively much shorter than in earlier years, because the changes which are of populist nature as far as tax is concerned were not announced in the budget speech. And the thrust of the budget mostly was on infrastructure development and digital economy. So as far as direct tax proposals are concerned, with which we are concerned, the media and press and all were hoping that there might be some relief in the tax slab or tax rates. But the finance minister in her press conference later on said that there is no increase, that itself should be treated as a relief. So there is no change in the tax slabs. I am beginning from that. But there are two welcome changes. One is that for individuals, for capital gains other than shares, for example, on land and buildings and other capital gain, the surcharge has been capped at 15%, whereas earlier it could go up right up to 27%. Now that is one. Second, they have reduced the alternate minimum tax on cooperative societies to bring it at par with the companies. At present, the companies are required to pay MAT at 15%. They have brought MAT in respect of cooperative societies also as per section 115 JC to 15%. So they have equalized, it's a level playing field. And for cooperative societies, they have further reduced the surcharge from 12% to 7%, where the income is between 1 crore to 10 crore. So these are just minor changes. So as far as tax rates, tax slabs, etc., there is no change. Now, a major change which has been brought in is, it has been clarified or a retrospective amendment has been made with effect from 1/4/2005 with regard to education cess. It is stated in the budget proposals that education cess will be treated as tax. There were judgments of Rajasthan High Court, Bombay High Court, and Delhi Tribunal also, and some other tribunals also, where they said education cess can be treated as an expense
and will be allowable as any other expenditure. Now, apparently, all those claims will have to be revisited because this is a retrospective amendment. I will leave it to Jan Saab to thresh out the issue as to how, if somebody has claimed 5 years back, 3 years back, 7 years back, in what manner the same will be recovered, if at all it will be recovered. This is as far as education cess is concerned. So, friends, this is the retrospective amendment. Now, as far as we know, section 115 BAB, that section was introduced with effect from 1/10/2019, that any company which is engaged in manufacturing of an article and thing and is a new company incorporated after that date will be eligible to be taxed at the rate of 15%. Now that time limit for setup of those companies has been increased from 31st March 23 to 31st March 24. Similarly, the time period for eligible startups has been extended from 31st March 22 to 31st March 23. Here it is not 24, here it is 23. This is just for the sake of continuation of the process of concessional taxation. Now there is an amendment in section 80 CCD regarding contribution of NPS. At present, the central government employees are eligible to claim deduction under this section if they are contributing up to 14% of their salary. Now, state government employees have also been proposed to be eligible up to 14%. But however, the thing to be noticed is there is no increase as far as private sector employees are concerned. They are continuing to be eligible only up to 10%. Sorry, for contribution to NPS. So therefore, private sector employees have been left, only state government employees have been extended the benefit of 14% of contribution to NPS. Now, I am just going through hurriedly on some of the proposals because those proposals are more of academic nature. Amendment in section 80DD providing for annuity to disabled person. Earlier, the annuity was not eligible under section 80DD unless the person had died. In this case, now they have provided that the annuity under this section can be paid if to the dependent disabled person if he attains the age of 60 and the insurance premium is discontinued. So this is a deduction which is applicable to those. Now, there is a major amendment in section 37 and section 68. I will concentrate for 5 minutes on these two sections. In section 37(1), it is provided in explanation that any expenditure incurred by any person for any purpose, which is an offense or which is prohibited by law, shall not be considered as deductible expenditure. Now, more particularly, probably this is aimed at pharmaceutical companies. Pharmaceutical companies claim free trips to the doctors or others as business expenditure, and also on the other hand, the recipients are not showing that as any income. So the government has brought in an explanation 3
in section 37 to provide that any benefit or perquisite in whatever form provided to a person who is carrying on business or profession shall be treated as income. Now, while giving the speech, I noticed the finance minister specifically said certain incentives are given. Now, what are those incentives? What can think of? And also, when they say anything which is prohibited in law or is an offense, the meaning has become much narrow. Suppose a challan takes place for a truck driver. In the normal circumstances, in some cases, it has been allowed as an expense as the transport company claims that it is a regular feature and this is part of our earning routine. So therefore, it should be allowed. If you recollect, about 4 or 5 meetings back, I had referred to one case of a Karnataka High Court where the expenditure paid to mafia, whose identity was also not known, to allow the workers to work in a particular area was also allowed as an expenditure by the Karnataka High Court, stating that the expenditure incurred was necessary for carrying on of business. So therefore, it must be allowed under section 37. All these expenditures now probably will not be allowed, and an explanation is going to be, if strictly construed, then even penalty, etc., for late filing of GST returns or other violations under any law will not be allowed. So this is under section 37, and they have also said that if there is any infringement of any guidelines, now here, if there is any guidelines by which a person is governed, now in the case of doctors, there is a guideline of Indian Medical Association which prohibits the acceptance of freebies and gifts, etc. So probably it seems this clause is worded in a manner to provide that if the association or the governing body of that profession also prohibits, then also the amount will be disallowed, because in 2 cases, Bombay Tribunal had allowed the expenditure to pharmaceutical companies by saying that it was part of their business, and they distinguished the circular that it was not applicable in those cases. Now, another such major amendment is under section 68. I am referring to only those amendments which are going to affect normally most of the assessees. Now, in this case, section 68, a proviso was added with effect from 1/4/2013 to provide that in case of private limited companies and companies in which the public is not substantially interested, the recipient was under onus to explain the source of investment in the hands of the shareholders. Now, this was after the judgments of many high courts, Delhi High Court, Supreme Court, where it was held that in case of shareholders who were not able to explain the source of investment in their hands, no addition could be made in the hands of the company, because company has a separate identity and the shareholders have a separate identity. However, there were certain judgments like Nippon Builders
and others, wherein the courts pierced the corporate veil and said there is identity between the promoters of private limited companies and the shareholders. So therefore, they made the addition in the hands of the company. Now, a similar provision is sought to be inserted in section 68 to provide that any funds borrowed, and there is no clarity here, any funds borrowed even from NBFC or from any individual firm, etc., the borrower is required to explain the source of funds in the hands of the lender. Now, this is going to have a very far-reaching implication. I can share with you from personal experience, there are certain industries like hosiery industries, textile export business, in which there is a seasonal requirement of funds. And that seasonal requirement of funds is met by a well-oiled mechanism of brokers. Those brokers arrange the funds from different individuals, and those individuals pass the funds temporarily with the organizations who need the funds, and then the funds are also repaid within 6 months or a year, maybe after more or less time. But then the identity of the broker is known to the assessee. In many cases, the identity of the lenders is not even known. No doubt now confirmation, PAN number, bank statement, etc. will be insisted, and once you have returned the loan, how you will be able to contact that person, and there is no set SOP. There is no standard operating procedure for the department to say whether the source is explained or not. In many cases, if the bank statement of the lender, there is an amount which comes on same day from two different companies, then they can go further down to source. So therefore, this is quite a difficult proposition, because share capital, we are aware, is a permanent source of funds. So there was a lot of difficulty there also. But here, since it's a temporary source of funds, the difficulty is going to be much more, and it is going to be a much onerous task on the borrower to explain in many cases. Now, this amendment is of a very far-reaching consequence, because it affects the assessees mostly in the unorganized sector, small businesses, where they do not have the ability to borrow from the institutions, maybe because of the lack of collateral or lack of education. This is as regards section 68. I am skipping the amendments made in the faceless scheme, because I have myself not fully read them, and they keep on coming. So there is no finality of what changes they have made, but I see number of changes have been made. Now, there is a welcome amendment to the difficulty faced in cases of reorganization of business. For example, one company gets merged or amalgamated with another company. The appointed date, let us say, is 1st April 2019. However, the High Court order confirming the amalgamation comes 2 or 3 years later on, mostly, and because of the COVID or corona, it might still be more than that. So in those cases,
as per the present provisions, the successor company was required to include the income in its income of the predecessor company with effect from the appointed date. Suppose my appointed date was 1st April, my 31st March 20 and my 31st March 21 balance sheets and returns would have already been made, filed and assessed also. So to overcome this difficulty, they have made an amendment, provided for an amendment to say that in case the order of High Court is received, when it is received by the principal CIT or CIT as the case may be, up till that time, whatever assessment is made, that will not be treated as of the predecessor, that will be treated of the successor. And they have given a further window of 6 months to the successor company to file the returns from the date of receipt of the order. Now, this is a practical aspect. I had been telephoned recently also by 1 or 2 members how to proceed. So all that I could suggest was to follow the judgment of Supreme Court in the case of Dalmia Bharat. In the case of Dalmia Bharat, the Supreme Court had said, of course, that judgment should have been followed by all the officers, but it was not being followed because there was no uniformity and there was no CBDT instruction to that effect. In that, they had said that irrespective of the passage of time or the return getting time barred of the predecessor, the consolidated return should be accepted. So therefore, this amendment is a welcome amendment, and procedurally it makes easy for the successor company to file the return, including the income of the predecessor. Friends, now another difficult amendment, but this is not going to affect most of the people, is that section 43B, they say earlier it was allowed as an expense if a loan interest was converted into debentures. If I have a loan and I pay interest, but instead of paying interest, I do reorganization, capital funding or capital reorganization, and I convert it into debentures, that was allowed. Now it is said that it is not to be allowed. Now, therefore, this amendment has been made. I am skipping the topic of virtual asset amendment that has been made. I will leave it for Jain Saab, because there they have amended section 247, also defined what is the virtual digital asset, etc. And another major amendment is in case of raid or search cases. Now, in such cases, what used to happen was that if there was any incriminating material of on money, for example, in the case of builders, it was said that on money received is okay. Vinay ji has requested me to finalize my deliberation by this time. I thank all of you and conclude. Let Jain Saab take over. Probably he has another meeting, so let him take over. Okay. Thank you.
Thank you, Stacey. I mean, for your nice deliberation, and because while deliberating on budget. Let him complete the point which he said. Let him complete that. Don't sir, please. let him complete. Stacey, carry on. Actually, as far as such cases are concerned, now an amendment is provided that for a such case, for undisclosed income, no set-off will be allowed. So irrespective of whether it is business income or any income, it is provided that that income will be taxed. It will not be eligible for claiming set-off. That's all. Okay, thank you. Thank you, Stacey. I know कि detail में budget को एक बात को बताने में it needs more than a day. Yes. And we want to understand in half an hour. So it is really very difficult time. Or for me also and for you also. कोई बात नहीं. Thanks, sir. Thanks in any case. And without any background, over to Vejanji, our past president ICI, an eminent, the person to whom we always eager to hear. Please listen. Over to Vejanji. Thank you, Vinayji. I hope my voice is clear. Or no, it's absolutely loud and clear. There is no echo, I believe. There is an echo, something like this. No, I don't think. Good evening, friends, and it's a pleasure to be part here again in the G19 meeting. As we all know, we are hosting this meeting for last more than, I think now 35 years, I can say. We started somewhere in 1986, 87. I said, Satish ji, and this meeting of budget, which usually happens after budget, though we are holding this meeting every first Friday of the month, I believe, for the G19, which is called, which is the room allotted to the Chartered Accountant Bar of Income Tax at Delhi in the Central Revenue Building. That's why it is known as G19 building. Friends, today the topic is the budget 2022. And this budget is now almost more than 75 hours old. 3 days back, this budget was presented. You would have listened to the Honorable Finance Minister while she was speaking in the Parliament for about 2 hours. And then you would have been speaking to विनय जी, आई थिंक आपका स्क्रीन आपको कहीं वो म्यूट करना पड़ेगा, शायद आपकी आवाज आ रही है इसमें. ओके, ऑलराइट, स्टीची भी म्यूट है. ऑलराइट, नाउ the finance minister, you would have listened to the finance minister, and then you would have listened to the various debates which were going on the electronic media and the newspapers, and you would have the privilege of listening to the various members and others speaking at various forums, etc. I had the privilege of I have been delivering talk at various forums, and barroom talk is always a more prestigious and more privilege, I believe, there. Stacey has given you a glimpse of what many amendments which have been proposed and which have been worked out on that basis. Friends, as we see when the budget is expected, this is on 1st February now, it's against 28th February. There are a lot of expectation from the budgets. A lot of debate goes on, and electronic media and press media goes crazy, and everybody is asking for something here or there. And this time was no exception. We heard everyone asking one thing or another thing. Give me this benefit, give me this exemption, give me this issue. All these issues are going on this point. Somebody was asking increase standard deduction, somebody was increasing the threshold, somebody saying increase medical reimbursement, give a medical reimbursement, insurance, maybe ATC exemption, housing loan interest. Everyone was crazy asking one thing or the other thing. But as we all know, the finance minister has its own constraint, and she cannot afford to provide everything to everyone. And that's why I believe in this budget, what she had done is she has obliged everyone, saying this time no change. Absolutely no change. Be bear with me, no tax rate, nothing reduction, absolutely happy. All are happy and etc. I believe our profession should be much happier because the calculation and computation part is over. But having said so, I was worried. Had she said that I have also made no amendment in the income tax, what would have happened? आज की इस मीटिंग में मैं आके कहता कि सब कुछ क्या कहूं कि किसने करा. But the way she announced a lot of announcement about various projects for the dream budget, I will say yes, it is a dream budget for next 25 years.
It's a roadmap for the country's growth. It's a working plan on that issue. Something need to be done, what need to be the country done. And she has taken a very bold step, saying for the credibility and stability, there is no change in the tax rate. She is absolutely firm on that issue. I will not increase any exemption and deductions, and yet she has stood fast on that part. But she has corrected few things on tax rates. One, the long-term capital gain, which was considered as a part of a regular income, and the surcharge could have been 37%, which has been reduced to 15%. We all know. In case income is up to 15 lakh or 50 lakh in the case of individual HF, then there is no surcharge. From 50 lakh to 1 crore, the surcharge is about then 10%. From 1 crore to 2 crore, it is 15%. Beyond 2 crore to 5 crore, it is 35%. And beyond 5 crore, it is 37%. Long-term capital gain was a contention. And 2 years back, she reduced the surcharge in respect of long-term capital gain arising from listed share and the dividend income, and she has taxed the dividend income. But other long-term capital gain arising from share security was subjected to higher. And we all know that long-term capital gain in reality is not the income of that year. It is an accumulated income over the period, but getting taxed in 1 year when you transfer that asset. So it is a basically accumulated profit over the period, appreciation in the price. Taking care on this point, she has proposed that the long-term capital gain, in case you have income, even if your income goes beyond 2 crore, to the extent the long-term capital gain, surcharge on that will be restricted to 15%. Similarly, if your income goes beyond 5 crore also, the surcharge will be restricted to 15%. That's the advantage which she has given. And this will be applicable not only on shares, security, but all capital assets. So whatever capital asset you want to transfer, it will be applicable across the board on all that part. Maybe just a minute, I need to have somebody, Ashutosh Dugar is there. I think they need to some, his main screen is coming up on that issue. Just to give me 1 second to just to put it correctly. This is okay, sir. Don't. I know speaker. I think it should be speaker. No? Just give me 1 minute just to correct it. He is trying to unmute oneself, right? Repeatedly, but now he is muted. No, what has happened is that your screen is coming up, no? So I just want to put it that way. Yes, now I think it should be, sorry, again. Yeah, are you speaking? Now I think it should be better now, I believe. Your screen is coming up. Now that way the message from this long-term capital gain now is that one thing which we need to do is tax planning on that part is, in case you are intending to sell any long-term asset and your income is likely to exceed ₹2 crore because of this long-term capital gain, for tax planning, it is advisable to withhold the transfer of that capital asset before 31st March. Do it after 1st April. Because if you do it before 31st March, this new provision of new reduced rate will be applicable from 1st April. And if you do it after 1st April, then it will be 15%. So the message is loud and clear. For these 2 months, you can withhold it if you can do it. But if you are bound, do it. So if you want selling a property or selling a share, you can work it out and plan it out that you can postpone it for another 2 months. And if you do it after 1st April, the tax will do. And it has a substantial implication. 20% plus 37% plus 4% comes to roughly 28%. And 20% plus 15% plus 4% comes to roughly 24%, 23.92%. It is 1/7, 4% gain, which you can make it out on that part. Let's say one part. Another small change which she has made is regarding applicability of surcharge on AOP. We all know AOP are also taxed with the same rate, same surcharge. So there was a hue and cry by the AOP that many of these AOP joined what we call
joint venture, collaboration, etc., and form an AOP for tendering at purpose for a highway project or for infrastructure project. And then they say they are liable to pay 37% surcharge, and and when they are companies, and they are liable to pay only surcharge at 7 or 12%, as the case may be. Taking cue from that, surcharge on AOP comprising of companies only, when members of that AOP are only companies, not any other person. So in case there is a partnership firm or individual or anybody is a member of AOP, then surcharge will be 25 or 37, as the case may be. But in case there is an AOP which comprises of members only or companies as a member, then the surcharge applicable will be 15% and will not be 22 or 25 and 37%. Third small change she has made is regarding cooperative society, where she has reduced the MAT rate from 18.5% to 15%. And the fourth change, when I am talking of the tax rate, which may be relevant for few of my members here, is regarding the tax on dividend from a foreign company. Many of the Indian companies have foreign companies outside India, they have a subsidiary, etc., where their holding is 26% or more. And in budget 2012, a provision was introduced in by inserting section 115 BBD that any dividend received from a foreign company will be subjected to a concessional rate of 15%. I hope we are aware of this, that 115 BBD provision 50%. And the explanation given by the then Finance Minister, Honorable Pranab Mukherjee, was that many of the companies earn profit outside India, subsidiary company. They do not repatriate their dividend to India, because when they declare dividend, then they are liable to pay tax in India against on their dividend. In order to avoid and in order to encourage such company to declare more and more dividend and bring back to India this money, I am reducing the tax rate, dividend tax rate to 15%. So that has continued. But now this budget proposes to withdraw this provision and to say that the dividend received by a company, which even when it is holding 26% equity in the foreign company, will be taxed at the normal rate applicable to the company. With the result, the dividend will be income will be an ordinary income. Maybe it may fall in 22% bracket, maybe fall in 35% or 25%, whichever the option the company has chosen for getting taxed its company. So that's a benefit. But here again, there are one lesson to learn. Now, this new provision will come into effect from 1st April 2022. If you have any client which has a foreign company, subsidiary company, and where there are accumulated profit, and if dividend is declared and distributed before 31st March, then the tax rate applicable will be 15%. So you have a window from today onward to 31st March to get that dividend evacuated, what is called the profit evacuation from the company, and get it taxed at a 15% here. But at the same time, you don't want to declare, and that as was happening earlier, now these foreign companies will not be encouraged to distribute dividend unless there is a compulsion to it. And in dividend, there is another provision which helps us, that in case which section 80M, as and when you receive a dividend and you correspondingly declare a dividend, that to that extent income is not doubly taxed. So you can plan it out in future in case you don't want to intend to do it, that foreign company declared dividend, company received dividend, and company in turn declared dividend, so that that dividend income does not get taxed in the hand of the company, but get taxed in the hand of the ultimate shareholder. So these are the changes. So far the tax rates are concerned, so I could not find out any other change regarding the tax rate applicability on this issue. Now coming to certain exemption and deductions. Finance Minister has not given any exemption and deduction, but some changes have been made and some concession has been given. In the case of employees, you will know that COVID has affected us like anything in the year 2021 and 2022. A press release was issued in the month of June 21 saying that medical expenses borne by the employer in respect of the treatment of its employees or the family member of its employee will not be taxed. It will not be considered as a perquisite. Because as on date, otherwise, any expenditure incurred by the employer for the employee, which is otherwise the obligation of the employee, is considered to be a perquisite. Now, a press release was given in June 2021. A statutory recognition has now been given in this budget, saying that in case any expenditure has been incurred, employer incurs an expenditure,
for treatment of its employees or the family member of its employees, that will not be considered to be perquisite by inserting clause in 17(2) not to exclusion on that. So even for, and this provision is applicable for assessment year 2021, 21, 22 and current year also. So it is a retrospective amendment for that purpose. Many of people may not have claimed it. That may be a challenge by filing a revise or 119, whatever the provision you want to insert, or you're going to 264 in case you have not claimed that. Further, any amount paid by the employer to the employee or deceased employee family member because of the death of the COVID, that will not be considered to be a perquisite. That will not be considered income of the recipient. That's a provision which has been created on that part. And this provision is unlimited amount by an employer to the employee's deceased family. There is no restriction on that part. There is no obligation. For the purpose of this family member is a limited. Don't consider that family member covered all relative. Family member has been defined in section 10(5) for the purpose of LTC. I hope we have read section 10(5). For leave, travel, concession, exemption is given in section 10(5). And the family member in 10(5) is considered to be the himself, spouse, and the children, parents, brother and sister, whether wholly or partly dependent. So who are dependent, anyone or partly or wholly are dependent, only those are covered in the family member. So this is the benefit. When I'm talking of this medical reimbursement or medical expenses and the funds or grant given to the employee, I may just talk about section 56(2)(10) also. There also, this has been clarified that in case any expenditure has been borne for the purpose of treatment of medical, or any amount is paid by any person to another person in the case of a deceased because of the COVID death, then that amount will not be considered as income. Otherwise, under section 56(2)(10), any amount received by any person from any other person without consideration, where the difference is in aggregate is more than 50,000 rupees, that is considered to be as income from other sources. But now by inserting it is clarified, in case such amount is being paid consequent to a death by a COVID, then that amount will not be chargeable to tax if it is 10 lakh rupees. Language presently worded indicate that in case it exceeds 10 lakh rupees, then the same will become taxable. But that is, I don't feel, is the intent of the law. When the bill gets passed, it will be corrected. So my view is that up to 10 lakh rupees, it will be exempt, and beyond 10 lakh rupees, it will not be exempt. When I'm talking about this small concession on the exemption, there is another small concession which has been given to the state government employees, which TG was referring to, that central government employees, whatever they contribute in 80 CCD under National Pension Fund scheme, it totally exempt. They get 14%. Then there was a hue and cry by the other employees. But now this finance bill gives a small concession only in the case of state government employees, but not private employees. I could not understand why private sector employees should be discriminated against. If the central government employees and the state government employee can get 14% deduction, why not the other private employees should get 14% contribution as exempt on that part? I believe this is an apparent discrimination and which should not have happened on that part. So this is so far as regard employees are concerned, salary, and there is no change in income from house property. Coming to the business heads, there are 4 major amendments which need to be looked into. One is 28(4). We all know that there is a provision in section 28 which says what is the business income. And in 28(4), the business income is any benefit or amenity received in kind, which is whether convertible in money or not, that is considered to be as a business income. If I am carrying on a business, any benefit arising to that business is a part of a business income. Many companies are giving benefit by way of a holiday package, taking their distributor to Singapore, London, or Hong Kong, Bangkok, etc. for tour, or organizing program, taking away families, etc. All these are being given, and though legally these are taxable, but many people were not offering for these income for taxation. Considering this, and to bring those what we call a perquisites to tax, the finance bill has proposed to introduce a provision by way of TDS under section 194R. After 194, there is a new provision being inserted, putting an obligation on the person who is distributing and giving these benefit in kind or perquisite to its distributors, supplier, vendors, etc.,
to deduct tax at source at the rate of 10% on this benefit or amenity given. Since these benefits and amenities are being given by and large in kind, it is being provided for that he will ensure in case in kind that TDS get deposited. And what will do, he will collect from the person. In case किसी को वो लंदन लेके गए, हॉलिडे लेके गए, 2 लाख का खर्चा हुआ, उससे 20,000 बनते हैं, तो उन्हें कहेंगे आप लंदन चलिए, टिकट मैं दूंगा, लेकिन 20,000 मुझे दे दीजिए, TDS आपका काटना पड़ेगा. So this is a provision which has been already. Some of the people have asked me whether discount, distributor at discount, etc. has been given, whether they will be liable for TDS or etc. My firmly personal opinion is, in case these amounts have been paid in cash or relating to the business transacted, then these cannot be called benefit or packages or amenities arising from the business, because these are related to the sale and relating to sale. If it is related to the sale and there is a correlation with the sale, these will come into discount, etc. I think on 194H commission, etc., brokerage, etc., dispute has arisen. There also it was, the court have taken a view when these are related to the sale, so it will go to reduce the price of sale and get linked to be linked with that. So then that should not be considered. And which is paid in cash and in non-kind, that should otherwise not come, because there is an old judgment, I believe, from Bombay High Court in the case of Mahindra and Mahindra, where it has said that 28(4) is by and large in kind, not in cash. So in case, I believe in cash payments are being made, then they, of course, debit, credit note, that should not be formed part of 28(4). Looking to the fact that many of these businessmen may not be liable for maybe individual and HF, and their turnover may be less than 1 crore in case of business and profession less than 50 lakh rupees. Same benefit has been extended as in other TDS provision, that this provision will not be applicable to those individual and HF carrying on business if they give free distribution, etc. In their turnover is in the preceding year was less than 1 crore or less than 50 lakh in the profession. Threshold, of course, is 20,000 rupees. That's the working which has been done on that part of the issue. Now, these are the changes which have been made regarding 28(4). Next was 37(1) explanation. Satish ji was talking about this. We all know in 37(1) any expenditure incurred which is wholly and exclusively for the purpose of business, which is not personal, which is not capital, then that expenditure is eligible for deduction while computing business income or profession income. Now, in the past, in 80s, there have been a dispute going on this part, whether any expenditure incurred for the purpose of any provision which is prohibited by law or which is an offense, whether it will be eligible for deduction or not. This controversy has arisen mainly because in Mumbai, etc., at that time, there was some extortion, etc., of the businessmen, etc., and the money they were being paying to avoid that extortion, kidnapping, etc. So some people have claimed deduction of that expenditure, and which was allowed also a deduction. Now, that in order to take care of that, then explanation was one was inserted, and under that any expenditure incurred which is prohibited by law, which is an offense, that was not eligible for expenditure, and this has sustained over the period. But we all know a controversy has arisen. What about our gift freebies being distributed by the pharma companies to the doctor in order to promote their sales of the medicine, vitamins, etc., whatever they are producing, etc. So many freebies are given to the doctors, etc. Some of the judgment have come because Medical Council of India has taken a call that doctors are not supposed to accept this gift, and this is violation of their code of conduct and ethics. They should not do it. Now, taking cue from that, some ITT judgments, some judgments have come up that this is prohibited by law and this should not be allowed. But at the same time, there were contrary judgment. No, it is not prohibited by law. This is there in a code of conduct and ethics, and should not be done. Now, this budget finance bill 2022, taking a cue from the favorable judgment, has proposed that such deduction will not be allowed, which are also in violation of code of conduct or ethics, etc., of any such body like this. And in line with this, there are two more changes proposed. Any compounding or composition money paid for any offense also will not be eligible. Any money paid for any offense which is not in India, but under any law outside India. So meaning thereby, when you incur an expenditure, if it is a prohibited or offense under any law of the world, that expenditure will not be eligible. My view here is a little different on this part.
income tax is a tax on income, and income tax people are to tax the real income what a person has earned. In case a person has incurred actual expenditure, which may be ethical or unethical looking to the otherwise, there is no reason why the same should be disallowed in the income tax so as to enhance real income to an artificial income. What will happen? We used to have earlier a provision 37(2)(a), if you do advertisement beyond one particular amount, 20% will be disallowed. If you do incur expenditure on traveling, 20% will be disallowed. So you do not sit in a chair, armchair of the businessman. Businessman has to do business, and it is he who has to decide at the end of the day how. If it is unethical, then it is the Medical Council of India. They have to take care of their profession, not the income tax people have to take care of the Medical Council of India. That's an issue which is coming up. There is an interesting judgment of old judgment, CIT versus Pyara Singh, old judgment. I think somewhere delivered in 1980, maybe 80. I think if I'm correct, 80 ITR or that part. That's a very important judgment for the benefit of many my friends here looking into. In that judgment, Mr. Pyara Singh was a smuggler. He was bringing gold from Pakistan and selling gold in India because cross border in somewhere in Jammu and Punjab, some area, Selco type. What happened at one point of time, he was caught on the border with 65,000 rupees of currency. Custom people seized that currency and confiscated that currency. When his assessment was being made, his income from smuggling was estimated roughly 60,000 rupees. Against this, he claimed a deduction of 65,000 rupees being the currency confiscated by the custom people, which assessing officer denied the deduction. The matter traveled to the Supreme Court, and there was a lot of argument on that part, including an earlier judgment. A judgment is there for Badri Prasad Daga, where they say any loss incurred during the course of the business is an allowable loss. And the contention of the SSC Pyara Singh was also that this is a loss which has been incurred because my currency has been confiscated. This should be allowed, and applying Badri Daga. Then there was another judgment of if I am correct, Abdul Shakir. In that case, it was said that expenditure incurred for illegal activity is not allowable expenditure. But then the court said nothing doing. This expenditure has been incurred in the course of the business, and this has to be allowed. And the interesting aspect is the court made a distinction. If you incur an expenditure which is illegal in an illegal business, that is allowed eligible deduction. You cannot tax a gross receipt. That was a judgment which was laid down on that part. But in any case, I am of the view, frankly, Medical Council, etc., there may be many laws otherwise. You would have seen 3 years back, another amendment was made in the section 11 and 12, that in case of a charitable trust or society, which is governed by any other law, like education law or a doctor law, etc., in case it violates any of the other provision of that law, then we will not give an exemption under the income tax. There can be still a logic, because if you are not charitable under that law, why I should consider you charitable under law? But for 37(1), I could not. I wonder why denied. And interesting part is the way the amendment has been drafted. 37 is a section, subsection is 1. There is an explanation 1. Explanation 1 says that expenditure incurred which is prohibited by law, which is an offense, will not be done. Then there is explanation 2, which was inserted by the then Finance Minister, Mr. Jaitley, in 2014 about CSR expenditure. Now there is explanation 3 to explain the explanation 1. Interesting part. Explanation 3 to explain explanation 1. I was just wondering why you introduce explanation below explanation and to explain the above explanation. Why don't you modify the above explanation itself? That would have taken care of. Anyhow, that's for the legislature to decide how they want to do it. How much more complex we want to make a law. You read first explanation 1, then you read explanation 3. Another amendment which may be interesting is the education, health and education cess. We all know under the Income Tax Act, as I said, 37, all expenditure which is incurred is allowable. But income tax, when we pay on this income earned, may not be allowable, because there is a section 40A clause 2 which prohibits that any expenditure that income tax paid is not eligible for deduction. Now, some companies, some SSC took a stand that health and education cess is not an income tax. It is a cess, a separate cess. Why should the tax be paid on that? And this should be allowed as a deduction.
Bombay High Court in the case of Sesa Goa gave a favorable judgment. Yes, it is an eligible deduction and should be allowed. Chambal fertilizer case, Rajasthan High Court gave a favorable judgment. Now, few months back, a judgment came from Calcutta ITAT, which distinguished these two judgments of Sesa Goa and Chambal fertilizer High Court and declared the judgment to be per inquiry. I mean, saying that there is a Supreme Court judgment of all time 97 in Srinivasa case where surcharge has been considered, and it has been said that all these will form part of the income tax only and is not eligible. Taking cue from that, now an amendment has been proposed saying that health and education cess will not be eligible while computing business income. Since health and education cess was introduced in the income tax from 2005, this amendment is being made retrospectively from assessment year 2005-06. So this goes back to 17 year when this amendment is being made from 17 year assessment year 2005-06 on. So wherever you are intending to claim or you have claimed, I will tell you in view of this amendment that now this deduction will not be allowed. And some people have asked me in earlier seminar whether this retrospective amendment will sustain. I say yes, it is retrospective and it clearly stated in the finance bill, and legislature parliament has a right to legislate retrospectively. So now this deduction will not be eligible and allowed on that part. So these are the changes which have been part. Now there is no change in so far capital gain is there, but that the income from other sources. Before I go to other provision, let me switch over to the provision on this Bitcoin. A lot of debate was going on about this cryptocurrency, Bitcoin, what should be done, how it should be done. And at one point of time, I think just before the winter session, almost the news coming was that government is going to introduce a bill in the parliament prohibiting cryptocurrencies. Now this finance bill proposes to clarify the taxation of cryptocurrencies. And the cryptocurrency has been defined as virtual digital assets. A comprehensive definition has been given that what is virtual digital assets. And for that purpose, a new section 115BBH is being introduced. I hope my all friends are aware of section 115BBE, which was 60% tax on unexplained cash credit, 69 investment, etc. So on the lines 115BBH is being introduced. So any income arising from the cryptocurrencies like virtual digital asset will be taxed at a flat rate of 30% with plus applicable surcharge and education cess as the case may be. So this is only a clarificatory amendment applicable from 1st April 2020 onwards. One should not feel that this income was not chargeable to tax before 31st March 2022. One must keep in mind that under income tax law, a resident is supposed to pay tax on the total income from whichever source he would have earned. So one should not mind that it is legal income or illegal income. Whether it is illegal or illegality, that's not a question. So even if anybody has earned income before 31st March 22, it is chargeable to tax, he being a resident. Only difference will be before 31st March 22, it will be a normal slab rate. If you fall in 10%, you will 10%. If your income is less than 10 lakh, 20%. If you are beyond 10 lakh, you are otherwise in 30%, you need to pay 30%. So that's the only thing. Further, in order to ensure that there is no manipulation and there is no tax evasion, it said only the cost of acquisition of that cryptocurrency will be allowed. If you have bought one cryptocurrency for 10,000 rupees, sold for 12,000 rupees, then 2,000 rupees your income, you pay 30%. No expenditure will be allowed. But in my example, it is the reverse. You have purchased for 12,000 rupees, sold for 10,000 rupees, 2,000 loss will not be allowed. This loss will also not be allowed to be carried forward. Now, the best thing will be that in case, now if you look at a tax planning point perspective, if you look at this example, if you do what transaction during the year, there are two transactions. In case there is a loss in one and profit in one, you can net it off. In my example, if I have purchased for 10,000 rupees, sold for 15,000 rupees, 5,000 is a profit, and there is another cryptocurrency where you have bought for 12,000 rupees, sold for 8,000, there is a 4,000 rupees loss. So 1,000 rupees will be the income which you will pay. But if you do it this year, say 31st March 20 this year, there is a profit, and next year there is a loss, then that will not be set off because each year will be independent and that loss cannot be carried forward and cannot be set off. What can be the message from 1st April 2022 onwards?
that in case you have made a profit in the cryptocurrency during the year, and before the year end, you are holding certain other cryptocurrencies which you have acquired, and as on 31st March 23, whatever the year ending date, that value of that cryptocurrency is less than the cost, it will be better to sell it off on that day so that you get a loss and set it off against the income during the year, and on 1st April you buy it again. I believe that the way market has been going down, up and down in the cryptocurrency, this is the phenomena which is coming about. That it goes up like anything, it goes down like anything. So now I believe with this, the message will be to change like this on the future. That's a planning which one can do it. But this is no way legalizing, and I must forewarn all my friends, resident must ensure that there is a FEMA compliance. And my friends are not here, there can be a GST issue also, because this is not considered to be a currency. This is only an asset, a capital asset or business asset, depending upon how you do it. But this is not. In case you are doing it individually and you are not otherwise liable for GST, probably you may not be filing in this net, because then you are in personal transactions, not in the course of the business in GST. But otherwise, one may need to look into whether it can happen in the course of business or not. But FEMA also says that in case the money being paid goes ultimately outside, then the problem will be there. Further, in order to ensure that all these transactions get reported, what it is being proposed, a new section 194S, that TDS obligation will be there. The person at the time of purchase will be required to deduct tax at the source of 1%. If you are buying, say, for 1 lakh rupees, then you need to deduct 1,000 rupees TDS before making a payment, and you will make a payment of 99,000 rupees. That's the mechanism which you have to do it. Only threshold available is in two cases. If you are an individual HEF and your business in turnover is less than 1 crore rupees in the preceding year, or in a profession, if it is 50 lakh rupees, then 50,000 is the threshold. Then this provision, and in other cases, the threshold is only 10,000 rupees. So that point must be need to kept in mind, that you must take care of this provision, that this provision is applicable on that part. Now, another provision which you need to keep in mind on this point is that cryptocurrency can also be gifted. And we have a provision in 56(2)(10) which says if you receive any property which is a defined number property, then that property gift value is chargeable to tax. Presently, that definition of the property given in section 56(2)(7) does not include digital assets. Now, in order to ensure that nobody does a manipulation by giving gift of cryptocurrency from A to B, it has been provided that to amend the definition of the property in 56(2)(7) by including digital assets as one of the property. So in case anybody gives a property, the donor will not be liable for any tax, but the donor will have to include that value of the fair market value of that virtual digital asset which he has received and income from other sources. So that's an amendment which has been made on that part, and we need to take care of that. This is on what we call a virtual digital asset on the platform, which has been worked out on that. Other than that, there is no change on so far capital gain, etc. is concerned. So now I can go to section 68, which is cash credit. कुछ ज्यादा ही प्रेम रहा इनकम जिसको कैश क्रेडिट, कुछ पैसे आपकी किताबों में जमा हो जाते हैं तो देन प्रॉब्लम. Looking to the issue which has come on share capital, share premium, in 2012 an amendment was made in 68 by inserting a proviso that not only the source of the where you have taken what we call a nature and source of the credit appearing in the books of account, you have to tell nature and source of the creditor also who has given the money in the case of share capital and share application. This proviso at present is applicable in the case of a company other than a listed company only, and applicability is only on share capital and share premium. A few judgments have come up that in view of this proviso, there is no obligation on the assessee to explain the source of the creditor. Now, in order to remove that ambiguity, a new proviso is being inserted that in case there is any loan or any other money borrowed and which is appearing in your books of account as a credit, then you not only to explain your
nature and source, but that creditor has also to explain the nature and source, and if he does not explain, then it will be deemed to be your. This is so widely worded. Only happy thing which I can find out, this is applicable in loan and money, etc., but not other credits. But challenge will be, बैंक से पैसा लिया और बैंक से पूछेंगे आप स्टेट बैंक से कि तुमने मुझे 2 करोड़ का लोन दिया, अपना नेचर एंड सोर्स बताओ, कहां से आया पैसा तुम्हारे पास, और बैंक ने चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तो कहेगा बैंक हैज फेल्ड टू प्रोवाइड द नेचर एंड सोर्स और इनकम आपकी 2 करोड़ की। कोई एग्जम्पशन नहीं है किसी तरह। प्रैक्टिकली शायद वो नहीं तंग करे, लेकिन सवाल ये आ सकता है। तो अब आपको ये जब किसी से पैसा लोगे तो उससे पूछ लेना, भैया 3 चीजें मुझे अपने हाथ में जरूर दे देना, बता देना भैया। एक तो अपनी आईटीआर दे दो ताकि आपकी आइडेंटिटी शामिल हो जाए, एक अपना बैंक स्टेटमेंट दे दो जिसमें से आपने जहां से पैसा दिया है, और उस बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो डेबिट हुआ है उससे पहले जो क्रेडिट आया वो बता दो कहां से आया। तो जो आदमी आपको पैसा देने वाला है ना, वो कहेगा तो भाग जाओ, तो मेरी जन्म पत्री लेना चाह रहे हो, मेरे से पैसा लेना चाह रहे हो। I believe, frankly speaking, after complete computerization and complete digitization and database and pen being available, can't the department itself find out what is the nature and source of the other person? In case there is a ingenuineness, even otherwise the existing provision was sufficient. Because in case the creditor capacity is not there, it can always be discarded. I could not make it out why we need such amendment when we are saying that we have complete 360 degree of each person. Anyhow, that 68 is there, now it's there. Another provision is bonus stripping. We have a section 94. Earlier, when mutual funds were getting developed, so a tax planning tool was developed in mutual funds. All these mutual fund people, broker, etc., were propagating that you buy a unit of mutual fund at 20 rupees. We are going to declare a dividend in 10, 15 days or 20 days, and dividend will be 100%. So out of 20 rupees, 10 rupees dividend will come to you. So that dividend is exempt. That used to be under section 1032 exempt dividend. And then thereafter, you sell that unit because you have bought for 20 rupees, and after dividend, it will X dividend, it will come to 10 rupees. And if you sell after that unit after X dividend, then it will be sold at 10 rupees. So there will be a loss of rupees 10, and that loss can be set off against any other loss you have or income you have. So that was the what we call tax planning was going on. In order, and similarly, it was happening for dividend purposes. So 94.7 and 94.8 were introduced to provide that in case there is a mutual fund unit like this, and you are receiving any dividend like this, and thereafter you make a sale, then that loss which you incur to the extent of the income which you have received by way of dividend will not be will not be allowed. I can just give an example. I can redraft example, right? Suppose today date is 4th of February 2022, and somebody walks in that you have a unit. I take example share, like a unit of say 20 rupees. You buy at 20 rupees, and then on my cost is 20 rupees, and then on 20th February, a dividend is declared of 10 rupees, and then I receive 10 rupee dividend. My cost continues with 20 rupees, 10 rupee dividend was exempt at that point of time. And then after that, say on 2nd April, 4th April, 3rd April, I sell that unit. My cost in books is 20 rupees, and I sell for 10 rupees, I was eligible for loss. In order to avoid this tax planning, the amendment was made that in case you have bought a unit or a share within 3 months from the date of book closure means the day when dividend is declared, something like this, and you sell that unit or share within 9 months from the book closure. So meaning thereby, in case the book closure is 31st March, anything bought from 1st January to 31st March, and anything sold between 1st April to 31st December. Now, whatever income you have received, it may be exempt, but to that extent, in case you incur any loss, that loss will not be considered. So that was the purpose. Now, this tax planning was going on in respect of bonus share also today, because in 94.8, shares were not covered
equity share one turn, mutual fund units were covered. Now this section 94(8) is being amended not only to cover share but also units of what we call REITs and InvITs, which is the new model which they have developed 3 years back for real estate and investment trust, which we call, where the exempt income is received by. So now they say that what was happening today in shares also. If today you buy a share of State Bank of India, which is 500 rupees, and tomorrow the State Bank of India declared bonus share for 1 for 1, then and when you will sell the old share, your cost will be 500 rupees and your share will be sold at 250 rupees. You incur a loss of 250 and your bonus share value is 0 rupees, which you carry on. Now it's been said that all shares and securities will be liable for dividend stripping and nobody will be allowed. In case you incur any loss in way of this process, then to that extent loss will not be allowed, and such loss will become your cost of acquisition of bonus share or bonus. So that's a fair, equitable provision which has been created. Now I go to the 2 other provisions which may be relevant on that part. I have talked about a 115 BBH, and then there is a provision of 11 BBI, which I will come later on that part, which is now coming up. We all know under section 139(1), there is an obligation to file income tax returns. We all know that there is an obligation to file income tax returns. Now, in case one is not able to file the income tax return before the due date, can you give me just 1 minute? 1 minute. Friends, in a minute, by the time actually I handed over this to CG, my connection been disconnected and I could not complete my points. This is the interval. I thought कि interval में इधर थोड़ी सी advertisement होनी चाहिए ना, जैसे ऐसे बीच में interval में भी वो. I'm back. Please sir. Sorry. So interval की बात बाद में. So now 139(1), there is an obligation to file the return by 31st July or 31st October or 30th November. Earlier, there used to be provision that in case I fail to file the return, I can file under 139(4) at any time before the close of the assessment year. And then there used to be provision, the 139(5), that I can revise the return. Earlier used to be 2 years from the end of the assessment year, reduced to 1 year. And now it has been reduced to 3 months before the close of the assessment year. वर्चुअली आपने रिवीजन टैक्स और रिटर्न रिवाइज करने का पीरियड ऑलमोस्ट खत्म कर दिया. जब खत्म कर दिया तो सरकार को चिंता हो गई कि यार लोग तो टैक्स देंगे नहीं, गलती तो होती ही होती है. अब एक नया मैकेनिज्म लाया गया, अपडेट योर रिटर्न, और कहा गई आप अपनी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं 2 साल फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, क्योंकि ये प्रोविजन आ रहा है 1/4/22 से. तो आप 1/4/22 के बाद कोई भी पिछले 2 साल की रिटर्न आप रिवाइज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं. लेकिन उसकी शर्तें कितनी, मेरी फोटो क्यों नहीं आ रही, उसकी शर्तें कितनी स्ट्रॉन्ग रखी हैं. शर्तें उन्होंने रखी है कितनी स्ट्रॉन्ग कि साहब आपको अगर ये रिटर्न अपडेट करनी है तो 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा, 25% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा. और आप अगर ये अपडेट करते हैं 1 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, अगर मैं 1/4/22 को डेट मानूं कि 1/4/22 को मुझे कोई रिटर्न अपडेट करनी है, तो कौन सी, अगर मैं रिटर्न अपडेट करता हूं किसकी, 21/22 की, तो वो विद इन 1 ईयर आएगी 21/22 वाली. उसके लिए 25% एडिशनल टैक्स देना है. और अगर मैं 20-21 की रिवाइज करता हूं तो मुझे 50% एडिशनल टैक्स देना पड़ेगा. Just imagine, that's a provision which is coming up. Now, why it is happening? I am just wondering why one should be asked to pay additional tax within 1 year and 2 years, because this was earlier eligible for revision of returns. लेकिन बुराई में भी कोई अच्छाई ढूंढनी पड़ती है. रिस्ट्रिक्शन लगाई है उन्होंने कि भाई कौन कौन से लोग कर सकेंगे और कौन कौन से नहीं कर सकेंगे. लुकिंग टू टाइम कंस्ट्रेंट, मेरा थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा शॉर्टकट करना पड़ा, बट निटी-गिटी और भी है, बट वी कैन एक्सप्लेन लिटिल बिट. और आपके जो कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं और बाद में डाल सकते हैं. वी कैन टेक इट अप लेटर ऑन. सतीश जी भी है, मैं भी है, तो विल ट्राई टू आंसर बेस्ट ऑफ पार्ट ऑन दैट पार्ट.
नाउ लुकिंग टू दिस एस्पेक्ट, नाउ लुक एट दिस एस्पेक्ट, आपको जो एडिशनल टैक्स देना है वो टोटल टैक्स और इंटरेस्ट 234A-BC का जो भी बनता है उसको टोटल कैलकुलेशन का उसका 25% एक्स्ट्रा देना है। और आप कौन कौन से लोग इसको कर सकते हैं रिवाइज और कौन से नहीं कर सकते? जिनके यहाँ सर्च हो गई वो रिवाइज नहीं कर सकते, वो अपडेट नहीं कर सकेंगे। जिनके यहाँ सर्वे हो गया वो अपडेट नहीं कर सकते, जिनके यहाँ सर्वे हो गया। एक कंडीशन और लगाई गई है कि जिनकी स्क्रूटनी हो गई है, असेसमेंट रीअसेसमेंट, या जिनको 143(2) का नोटिस हो गया वो अपडेट नहीं कर सकते। तो मैं सोच रहा था कि शायद यार ये काम आ सकता है कि जैसे आपकी आज की डेट में सब 20-21 की स्क्रूटनी चल रही है, 21-22 की असेसमेंट की स्क्रूटनी चल रही है, और चलते चलते असेसिंग ऑफिसर ने कोई गलती ढूंढ लिया, आपने कहा झगड़ा खत्म कर देते हैं, इसको अपडेट करके बराबर कर देते हैं, वो नहीं कर सके। आखिरी काम तो ये था कि भाई झगड़ा खत्म करना है, आपकी स्क्रूटनी में मैटर आया हुआ है और असेसिंग ऑफिसर काम ने भाई, लेकिन कहा नहीं, और आपकी अगर वो 143(3) हो गई या 147 हो गई तो नहीं कर सकते हैं। दिस इज अनदर बॉटल। और कौन नहीं कर सकते? जिनको पीएमएलए के बारे में नोटिस आ गया है, जिनको किसी को बेनामी एक्ट का नोटिस आ गया है, किसी को फेमा का नोटिस आ गया है, बाहर की जिसके केस में 1998 की इंफॉर्मेशन आ गई है, असेसिंग ऑफिसर ने आपको नोटिस दे दिया है, और किसी के यहाँ प्रोसिक्यूशन हो गया। आई वॉज वंडरिंग व्हाई यू वांट टू पुट सच स्ट्रिक्ट कंडीशन। ऑब्जेक्टिव एक ही है कि जो ये 148 में अब नोटिस जो है वो इंक्वायरी के बाद इशू है, तो जो इंक्वायरी वाल आने के बाद और नोटिस होने से पहले उनको मौका मिल जाए। एक और है, सर्च के केस में इसकी टैक्स प्लानिंग का मॉडल बन गया, क्योंकि ये मीटिंग बार रूम की है तो हम उसमें डिस्कस कर लेते हैं। इसमें लिखा है कि जिसकी सर्च हो गई वो तो जिस दिन सर्च होगी वो तो उसी दिन इनवैलिड हो जाएगा, लेकिन सर्च में किसी के और के कागज मिल गए या कैश मनी ज्वेलरी मिल गई, उसकी इनवैलिडिटी तब आएगी जब उसको नोटिस मिल जाए, और उसको नोटिस 148 का ही दे सकते हैं आज की डेट में। तो दूसरा नोटिस तो 153C तो खत्म हो गया। अगर किसी के यहाँ सर्च में किसी और के कागज मिल गए या कोई असेट मिल गई और वो असेट इस 3 साल के पीरियड के अंदर फॉल करती है, उसके लिए इसमें एक बड़ा अच्छा मौका होगा कि इसको अपनी पेनल्टी या प्रोसिक्यूशन बचने के लिए वो अपनी रिटर्न अपडेट करके उस इनकम का टैक्स देके जान छुड़ा। हालांकि जो टैक्स की कैलकुलेशन एडिशनल की वो बड़ी काफी हैवी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आपका पूरा टैक्स इंटरेस्ट जो भी बनता है वो तो पूरा लगेगा, और उस टैक्स और इंटरेस्ट उसका 25% टोटल का एग्रीगेट कर। दिस इज द चैलेंज विच विल कम अप। आई एम ऑफ द व्यू कि दैट अमाउंट बड़ा हैवी है, लेकिन पेनल्टी को देखते हुए और प्रोसिक्यूशन वगैरह प्रोविजन को देखते हुए, और किसी को लगता है कि ये इशू आ जाएगा तो दिस बी बेटर प्रोपोजिशन, क्योंकि ये प्रोविजन 1/4/2022 से स्टैट्यूट पे आ रहा है। तो 2 साल असेसमेंट ईयर मेरे हिसाब से 21-22 और 20-21 के प्रोविजन एलिजिबिलिटी हो जाएगी, इफ आई एम करेक्ट। Assessment 2021 and 21-22 both will become eligible for this purpose, and if that be so, I will be of the opinion कि कहीं किसी को कोई नोटिस आता है तो it will be a better proposition to get out of this by paying this extra tax of 25% or 50%, whatever it is, and to tip by piece on that part. So this is a good, I will say, good measure which I will recognize on that. जैन साहब, टीडीएस के क्रेडिट का क्या होगा? मैं भी आ रहा हूँ अभी आपको क्वेश्चन से बाद में। टीडीएस वगैरह के सारे क्रेडिट मिलेंगे, उसमें उन्होंने पूरा कहा है कि जो आपका पहले तो पूरा अपना खाका खींच के जो इनकम उस डेट की आप वो बना लीजिए। आप ये मान के चलिए कि आप उस डेट को एक रिटर्न दोबारा से भर रहे हैं, और आप अगर रिटर्न भरेंगे तो आपकी टैक्स इंटरेस्ट क्या लायबिलिटी बन के आ रही है, आप सारी कैलकुलेशन कर लीजिए। उन्होंने कहा असेस टैक्स और माइनस जो टैक्स है, तो उसके अंदर आपने जो एडवांस टैक्स दिया है, जो आपने टीडीएस दिया है, 2 तरह की कैटेगरी, क्योंकि टाइम का कंसेंट है, मैं डिटेल में भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। 2 तरह की कैटेगरी है, जिन्होंने रिटर्न भरी हुई है या नहीं भरी हुई है। जिन्होंने भरी हुई है तो उनके पास तो सारा क्रेडिट है, और बाई चांस कोई ऐसी इनकम और आ गई है जिसपे टैक्स भी कटा हुआ है, वो उसका क्रेडिट भी मिल जाएगा। तो आप पूरी कंप्यूटेशन उस डेट को बना लीजिए। आई गिव एन एग्जाम्पल, अगर सपोज करिए एक्ट आ गया 1 अप्रैल 22 को, 10 अप्रैल 2022 को आपको पता लगा कि 2020-21 की रिटर्न में मेरी 3 लाख रुपए की इनकम छूट गई, कोई मैंने सेल करी थी या कुछ ऐसा था जो मेरे हाथ में नहीं आई, और मैंने 12 लाख रुपए की रिटर्न ऑलरेडी भरी हुई।
तो आपको 15 लाख के ऊपर टोटल टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे आप, और 15 लाख के ऊपर आपने जो टीडीएस दिया है, जो टैक्स दिया है, जो इंटरेस्ट दिया है, जो दिया है वो माइनस कर दीजिए। जो बैलेंस बचा उसके ऊपर आप आज तक का इंटरेस्ट लगा लीजिए जो बना। जो ए अगर रिटर्न ओरिजिनली भरी है तो ए नहीं लगेगा, लेकिन बी लग जाएगा, सी लगता है तो सी की कैलकुलेशन होके आ जाएगी। जो आपके पास बन के आया वो टोटल आपने कैलकुलेट करके लिया है, वो तो बन गया आपका एडिशनल टैक्स। जो वो एडिशनल टैक्स बना उसका 25, क्योंकि वो असेसमेंट ईयर 20-21 से रिलेटेड है तो 50%, और 21-22 से रिलेटेड है तो 20%, 25%, वो जोड़ के टैक्स जमा करा दीजिए। 140B की चालान भर के जमा कर दी जल्द से। जैन साहब के ऊपर ना पेनल्टी लगेगी ना प्रोसिक्यूशन। जैन साहब, इसमें आपने समझाते हुए अपडेटेड रिटर्न में लास्ट में कहा था कोई नोटिस आ जाए, तो नोटिस किस सेक्शन में आएगा? मैं आ रहा हूं। अगर 20-21 और 21-22 का, अब आप ये 2 साल की रिटर्न रिवाइज कर सकते हो, बिकॉज 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर, बट 2 year फ्रॉम दैट, आप इसकी रिटर्न 2 साल की होनी चाहिए। नाउ इसमें आप नोटिस अगर सपोज करो 20-21 का 143 तो आपको इश्यू हुआ है, कोई 147 इश्यू हो गया, या 21-22 का कोई नोटिस इश्यू हो गया। अब 21-22 के नोटिस जून 2022 तक आएंगे, 3 महीने का टाइम है। अगर उसमें वो आ गया फिर आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। आपको कोई 148 आ गया फिर आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई। आपकी कहाँ सर्च हो गई, जिस दिन सर्च हो गई तो उस दिन 2 साल पुराने वो खत्म हो गए। सर्च होने में एडवांटेज फिर भी मिल जाएगा। अगर मैं सर्च वाली अगर आप समझना चाहें तो सर्च के एग्जांपल मैं और दे देता हूं। सपोज करो 10 अप्रैल 2022 को किसी के यहाँ सर्च हो जाए, ये लिखा है कि जिस सर्च ईयर की नहीं कर सकते आप, और उससे पिछले 2 साल का नहीं कर सकते। पिछले 2 साल कौन से होंगे? असेसमेंट ईयर 22-23 और 21-22, 20-21 नहीं होते। तो 20-21 का फिर भी कर सकेंगे मुझे लगता है, क्योंकि ये सर्च में और 148 में गैप है, 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, 2 year फ्रॉम दैट ईयर, उसकी वजह से ये गैप आ रहा है। क्योंकि सर्च अगर 10 अप्रैल 2022 को होती है तो सर्च ईयर बन गया 23-24, और उसके पुराने वाले वाल बन गए 22-23 और 21-22, 20-21 फिर भी खुला रहेगा मेरा। और सपोज करो सर्च में कुछ मिलता है किसी और का, उसके ऊपर तो अभी कानून लगेगा नहीं, क्योंकि उसको अभी नोटिस इश्यू नहीं हुआ। वो अगर उसके बारे में इनकम को अपनी अपडेट कर लेगा तो वो घर बैठ सकता है आराम से अपने टैक्स, ना उसको पेनल्टी लगेगी ना प्रोसिक्यूशन होगा, 25 से 50% देके जान छूट जाए। इन माई ओपिनियन फ्रेंकली इट इज ए गुड व्यू। मैं हमेशा कहता था, मेरा वाई आई से इट इज गुड प्रोविजन, कि ये मान के चलना चाहिए वॉलंटरी कंप्लायंस से बेटर चीज कुछ नहीं हो सकता है इसमें से 2-4-5% लोग बेईमान लोग फायदा उठा के ले जाए, भाई रिटर्न गल भर के बाद में करें। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जो बाकी लोग 90% वॉलंटरी चल के आते हैं, हमारे ऑफिस में कितने लोग आते हैं कि यार मेरी गलती होगी, 2 साल पहले ये रिटर्न में रह गए, जन सब क्या करेंगे, चिट्ठी आएगी तो तंग आएंगे। हम कहते हैं भाई आज की डेट में तो कुछ नहीं कर सकते, फंस जाओगे तो कुछ करोगे। और सरकार पकड़ नहीं पाती, सरकार की एनफोर्समेंट मैकेनिज्म कितना पकड़ पाए। तो उनके लिए, सबके लिए ये अच्छी वर्किंग है कि आप जरा म्यूट कर लेते हैं आपके ना एक बार। तो ये अपने आप में एक अच्छा प्रोविजन है कि भाई 2 साल तक। मेरा कहना था कि 2 साल की भी सीलिंग क्यों लगाते हो? आपने 25 रखा, 50 रखा, 75 लगा के तीसरा दे दो, 100 लगा के 2 साल और दे दो पिछले बार। भाई आप उसको टू कीप द प्रेशर कि एसएससी ऑनेस्ट होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि एसएससी ऑनेस्ट होना चाहिए। आपको इंटरेस्ट सारे लग के आ रहा है और ऑटोमेटिक पेनल्टी देके जा रहा है। आप ये प्रोविजन क्रिएट कर ले कि हाँ, क्योंकि आएगा वही जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, और आपने ये ऑब्लिगेशन लगा दिया कि मैंने अगर नोटिस दे दिया तो फिर आपकी इनएलिजिबिलिटी हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है, अगर उन्होंने नोटिस दे दिया तो इनएलिजिबिलिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो सरकार ने पकड़ लिया उसके उस बात के पे। लेकिन जिनको नहीं पकड़ा और जिनको नोटिस नहीं आया है, मेरा कहना 1 साल, 2 साल, 1 साल 25, 2 साल 50, 3 साल 75, 4 साल 6 साल तक 100% ये वर्कआउट कर देना चाहिए। नाउ आई गो टू द फेसलेस असेसमेंट। एक नया वर्ड कभी कभी बड़ा सुंदर लगने लगता है, और फेसलेस भी एक ऐसा वर्ड हो गया है कि बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता। लोग तो कहते हैं कि मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखा दो तो आधी टेंशन खत्म हो जाती है। वो कहते हैं हम चेहरा दिखाना नहीं चाहते, आपका चेहरा तो हम देख लेंगे, मेरा चेहरा आप नहीं देख सकते। तो उसकी 2000 अगर मैं समझू ठीक तो 2019 में हमने वो ई असेसमेंट शुरू करी कि आप कंप्यूटर भेज दीजिए, अच्छी तरी बात है। फिर आपने कहा फेसलेस असेसमेंट शुरू कर देते हैं 2019 में। फिर आपने एक फेसलेस स्कीम अनाउंस कर दी। फिर आपने एक अमेंडमेंट करके 144B लिया है
और उसको इतनी, जिस समय वो स्कीम बनी इतनी ट्रांसपेरेंसी रखी गई, इतना बढ़िया लिखा गया उसके अंदर, और एक सेक्शन डाल दिया गया आखिर में सब सेक्शन 144B9 में कि देखिए ये फेसलेस की ये प्रोसीजर होगा, और मेरा कोई भी ऑफिसर इस प्रोसीजर को कहीं नहीं फॉलो करेगा तो कोई भी ऑर्डर पास किया हुआ नॉन एस्ट होगा, इनवैलिड होगा, कुछ नहीं होगा इन पर। बाद में चिंता चढ़ी कि भाई मेरे ऑफिसर तो ये जरूरी नहीं है, आपके ह्यूमन बीइंग है, गलती तो हो ही सकती है किसी न किसी से कहीं ना कहीं। तो 144B9 में अगर ऑर्डर नॉन एस्टेड हो गया तो रेवेन्यू लॉस हो जाएगा। असेसी की अगर गलती है तो उसको टैक्स तो देना ही चाहिए, हम भी कहते हैं देना चाहिए। तो इस बजट में जो पुराना कानून आया है, इस बजट की बड़ी महानता है कई बजट कि पिछले 2-3 सालों में जो जो चीजें पिछले बजट की है वो इस बजट में पता लगा गलती होगी, इसको ठीक करने की जरूरत है। कम से कम 20 जगह मैंने ऐसा नोटिस किया है कि जहां करेक्शन करने की कोशिश की गई है। आप ये जो यशपाल जी, जरा आप अपना वीडियो ऑफ कर लें, आपकी गड़बड़ आ रही है यशपाल जी। यशपाल जी आप अपना वीडियो ऑफ कर लें, आपका कैमरा हिल रहा है बहुत। यस नाउ उसमें देखिए क्या है गलती, मैं बता रहा हूँ। एक गलती अगर आप बड़े ध्यान बजट में देखें, मैंने बताया नहीं जब बिजनेस इनकम की बात कर रहे थे, एक सेक्शन 35 में लास्ट ईयर आपने देखा होगा 80G में अमेंडमेंट थी कि भाई जितनी भी ये चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी हैं ये डोनेशन लेती हैं, इनको 80G मिलता है। अब जो 80G की डिडक्शन हम इंडिविजुअल लेगा, जो जिसने भी चंदा दिया उसको तब मिलेगी जब उस सोसाइटी ने अपनी एनुअल स्टेटमेंट फाइल कर दी होगी बताते हुए कि मुझे किस किस से डोनेशन मिला। इसी तरह से सेक्शन 35 में जो साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन है उनको चंदा लेने की परमिशन है, और उनको जो डोनेशन देता है वो एग्जेम्प्ट होता है। तो वहां भी ये अमेंडमेंट करनी थी कि भाई जो चंदा उनको देगा उनकी डिडक्शन तब मिलेगी जब उसने वहां 35 जिसको मिला है उसकी एग्जेम्पशन डिडक्शन वो स्टेटमेंट फाइल कर दी होगी। लेकिन जब वो ड्राफ्टिंग करने लगे तो वहां लिख दिया नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन अनलेस दैट स्टेटमेंट हैज बीन फाइल्ड। मीनिंग देयर बाय साइंटिफिक वाले को डिडक्शन नहीं मिलेगी, डोनर के बारे में बात ही नहीं हुई। इस बजट में फिर अमेंडमेंट करेगी। इट वाज नेवर द इंटेंट, आई नॉट से इट वाज नॉट एन इंटेंट, इट वाज अ मिस्टेक कमिटेड। इंटेंट तो कुछ और होती है, इट वाज इंटेंट बेसिकली। इसी तरह से 144B में वहां लिख दिया कि एक अपॉर्चुनिटी जो फिजिकल हियरिंग की है वो कमिश्नर के मर्जी पर होगी। अब कोर्ट में सवाल आ गए खड़े हो गए कि भाई बिना हियरिंग के कैसे डिसाइड कर दोगे। भगवान में मंदिर में भी जाते हैं वो भी सुनता है, क्योंकि मंदिर में जाते हैं भगवान से हाथ जोड़ के पूछते हैं तो वो सुनता तो है जब आप बोलते हैं भगवान ऐसा करते, और इनकम साले कह रहे हैं हम आपका फैसला कर देंगे बिना सुने के लिए। तो 144B में जो फेसलेस असेसमेंट स्कीम है उसको चेंज करा जा रहा है। 144B 1 to 8 जो 8 क्लासेज हैं उसको रिप्लेस करके नया क्लास आ गया है, और उसमें ये लिख दिया है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू फिजिकल हियरिंग असेसी का राइट होगा। Shall word use has been provided. The assessing officer shall provide and for physical hearing in case the assessee is asked for through video conference. मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है आपसे, जो मैं पहले भी लेक्चर में कह चुका हूं कि इसमें वर्ड लिखे गए हैं रिक्वेस्ट पे, तो आप जो चिट्ठी सरकार को नोटिस में कोई नोटिस आए कोई भी आए उसका जवाब दें तो आखिरी लाइन जरूर एक लिख दें, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी ए फिजिकल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। और मैं यहां तक कह रहा हूं कि टेम्पलेट बनाकर रख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं ना थैंकिंग यू योर फेथफुली सो एंड सो एंड सो, तो आप थैंकिंग यू के ऊपर एक लाइन परमानेंट स्टेनो को अपने टाइपिस्ट को बोलिए भाई ये लाइन परमानेंट जाएगी। कोई भी चिट्ठी आए 148 का नोटिस आए कोई भी आए उसके नीचे एक नीचे लाइन डाल दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव ए फिजिकल हियरिंग थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस, ताकि गलती नहीं हो जाए, क्योंकि अगर आपने मांगी नहीं तो मिलेगी, ये सोच के चल रहा है। और अगर ये नहीं दी उसने ऑर्डर इनवैलिड हो। सेक्शन 144B9 जिसमें लिखा था कि अगर प्रोसीजर फॉलो नहीं किया तो इन नॉन एस्ट होगा, वो डिलीट किया जा रहा है। तो आज की डेट में ऑर्डर इनवैलिड नॉन एस्ट नहीं होगा, लड़ाई चलती रहेगी कि कितना लीगल है कितना नहीं है, वो समय बताएगा। लेकिन ये मान के चलना चाहिए कोर्ट बड़ी इस बारे में बहुत क्लियर है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस हैज टू बी फॉलोड, एसएससी हैज टू बी गिवन एन हियरिंग, उसको बिना सुने नोबडी कैन बी कंडेम्ड विदाउट हियरिंग। ऑडियो पल्ट्रम जो हम मैक्सिम यूज करते हैं वो फुली एप्लीकेबल हो जाएगा। नाउ आई गो टू इनकम एस्केपिंग असेसमेंट रीअसेसमेंट के बारे में। पिछले साल बहुत सारी प्रोविजन चेंज किए गए और 1/4/21 से वो नई व्यवस्था लागू की गई थी और नया प्रोविजन इंट्रोड्यूस हो गया। और जिस समय इंट्रोड्यूस हो गया तो ये शायद ध्यान से निकल गया
कि इस नए प्रोविजन के अंदर बहुत सारे पुराने लोग हाथ से छूट के निकल गए। मैं बड़े जब बजट आता है तो बड़े ध्यान से वर्ड पढ़ने की कोशिश करता हूँ, मेमोरेंडम एक्सप्लेनिंग द बजट, कि भाई सरकार की इच्छा कहाँ से प्रकट हो रही। और अगर लास्ट ईयर का बजट पढ़ूं तो 147 के बारे में उन्होंने लिखा था कि भाई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करने की जरूरत है, और हमारे बारे में एक चिंता लोगों को रहती है कि इंडिया में टैक्स लिटिगेशन बहुत लंबी चलती है। इन ऑर्डर टू पुट एन एंड टू दिस, it is proposed to reduce the period for reopening from 6 years to 3 years. But beyond 3 years, assessment can be reopened only when there is income escaping assessment of 50 lakh rupees or more, and which is represented by assets. And assets have been defined to mean bank balance, shares and securities, property, and advances. Meaning thereby there has to be some physical asset in the form, tangible asset to be formed, otherwise, though it was a limited provision, and that was 10 years. People accepted it happily, all right issue. A new procedure was announced where a prior approval was to be. That approvals required were too many, 4. Now those approvals have been restricted to 2, which I believe is justified. Because once a assessing officer has taken an approval for making an inquiry, there was no need to take another approval to seek approval for issuing inquiry notice also. Then once an assessing officer has passed an order after taking an approval in 148A, and which says that yes, income has escaped assessment, there was no need to take a prior approval again for issuing 148 notice, because that order itself has been passed after approval. So that's the right thing. But what has been done is that period for reopening of assessment beyond 3 years up to 10 years, the condition which was represented by asset, the scope is being widened. Now any expenditure incurred where the income escaping assessment allegation is of 50 lakh or more in respect of any expenditure incurred, including for any event, etc. Now that will also be now liable. And the third, entry or entries in the books of accounts. I was just wondering what will happen on this basis. मुझे नहीं लगता कि अब किसी की असेसमेंट खोलने में कोई मुश्किल काम होगा 10 साल तक, क्योंकि कहीं ना कहीं एंट्री और एंट्री तो बुक्स ऑफ अकाउंट में होती है, जिसकी वजह से होता है असेसमेंट खुलने का. I am just wondering what will happen in these cases. By and large, all cases will get covered and 10-year period will be now there. On the result, चौबे जी 26 जी गए थे, 6 से 3 करने गए थे, 3 के 10 हो. अब 10 साल तक की असेसमेंट खुल सकती है. लेकिन पॉजिटिव साइड एक है कि जो पिछले साल 1/4/21 का प्रोविजन था, जो कोर्ट की जजमेंट आई थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और राजस्थान हाई कोर्ट, वो सारी जजमेंट सस्टेन हो जाएंगी. कलकत्ता हाई कोर्ट एक्सेट्रा की वो कहीं पे इसमें इस बजट में छेड़ने की कोशिश नहीं है. सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी में गए हैं, अभी डिफेक्ट में पेंडिंग है. लेट्स सी व्हाट टू हैपन. दैट्स ऑन 148 फ्रंट ऑन दैट इशू. देन देयर आर 2 अमेंडमेंट रिलेटेड टू सेक्शन 156, जो आईबीसी में मर्जर डीमर्जर से कोर्ट से जो डिमांड है वो कैंसिल होती हैं, कम होती हैं. नाउ असेसिंग ऑफिसर विल बी इन अ पोजीशन टू इशू ए रिवाइज्ड डिमांड नोटिस 156A. ये इंटरनल प्रोसीजर है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं आना चाहिए. एक 158B सेक्शन है, आपने कभी पढ़ा नहीं होगा, सुना होगा. अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ और कोई कॉमन ग्राउंड पेंडिंग है तो उसमें अपील को अबेंस में रखा जा सकता है. नाउ दैट इज बीइंग सब्स्टिट्यूटेड बाय ए न्यू सेक्शन and by deleting all, by saying that in case there is a question on an issue where appeal is pending in a higher forum, then appeal can be kept pending subject to the consent of the assessee by a collegium. Collegium comprising of 2 or more assessee to commissioner. An example which has been given is कि आपकी एक कोई इशू है, सपोज करो कोई ATI की एग्जेम्पशन या डिडक्शन के बारे में कोई झगड़ा हो गया कि भाई इस अमाउंट के ऊपर या इस टाइप के खर्चे के ऊपर ये एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं मिलेगी, या क्या इंक्लूड होगा नहीं होगा, और आप या कोई और असेसी उसमें कामयाब हो गया ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में, और CIT अपील ने फैसला आपके फेवर में दे दिया फॉलोइंग दैट जजमेंट को बता देती, तो डिपार्टमेंट उसको नॉर्मली उस अपील को फाइल कर देता था ट्रिब्यूनल में या हाई कोर्ट में जहाँ भी होता. अब ये कहा गया है कि कॉलेजियम उसका जो होगा वो उस अपील को फाइल नहीं करेगा अगर असेसी कंसेंट दे देगा कि भाई मैं इस अपील को नहीं फाइल किया जाए,
और जो भी फैसला हायर फोरम पे होगा मैं उसको मान लूं। ये तभी होगा जब सीआईटी अपील ने आपके फेवर में करा, आपको तो राइट है ही नहीं रोकने का। I would, very interesting issue on that issue. It is only when the decision is in your favor and department will not file an appeal. एसएससी को राइट नहीं है कि अगर एसएससी के फैसला अगर इसमें हुआ है और एसएससी कहे भाई जो भी होगा वो होगा, मैं भी जीत जाऊंगा तो होगा, और कोलिजियम अगर कोलिजियम कहेगा, और कंसेंट देनी जरूरी है। मैं इसमें दिमाग लगा रहा था भी कंसेंट कैसे दी जा सकती है, कौन कंसेंट देगा। मैं उसके कई एग्जांपल देख रहा था कि सपोज करो आज की डेट में किसी इशू पे ट्रिब्यूनल ने फैसला फेवर में दिया हुआ है और सीआईटी ने वो आपका फैसला फेवर में कर दिया, आप क्यों रोकेंगे डिपार्टमेंट को ट्रिब्यूनल से जाने के लिए? इसलिए कि शायद वकील को फीस देनी पड़ जाएगी, ट्रिब्यूनल जाएगा तो वहां हो जाएगा, अपील चलेगी। ऑन द कंट्रेरी अगर उसमें डिमांड 1 करोड़ से कम है तो आप तो चाहेंगे ट्रिब्यूनल से फैसला फेवर करो और खत्म करो, हाईकोर्ट जाने का रास्ता ही खत्म हो जाएगा डिपार्टमेंट। इसी तरह से अगर कोई मैटर हाईकोर्ट में पेंडिंग है तो आप कहेंगे ठीक है ट्रिब्यूनल से खत्म करो, हाईकोर्ट में काम है, मामला खत्म करके 2 करोड़ से ऊपर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। Practically I believe may be very few taker on this point on this issue. Now then there is 2 amendment regarding the TDS provision is 194 IA. आज की डेट में TDS काटना पड़ता है जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, 50 लाख से ज्यादा की, 50 लाख या उससे ज्यादा की है और वो एग्रीकल्चर नहीं है तो 1% TDS काटना पड़ता है। सरकार को लगा कि प्रॉपर्टी तो आपने खरीद ली 45 लाख की, सर्कल रेट था उसका 51 लाख रुपए, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये 51 लाख की 45 लाख में TDS में नहीं कटा। So now the law is being amended to provide that 1% TDS is to be deducted not on the consideration but higher of the consideration or the circle rate whichever is higher. अगर दोनों 50 लाख से नीचे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर नहीं कटेगा, लेकिन दोनों में से एक क्रॉस कर गया तो हायर वाले पे आपको काटना पड़ेगा। मैं आपको अगर एग्जाम्पल, लेकिन ये ध्यान रखना कि इसमें डिस्काउंट नहीं लगेगा 10% का जो 50C में या 56(2) में मिलता है। अगर सपोज करो आपने कोई फ्रेंड्स कॉलोनी में प्रॉपर्टी खरीदी है 2 करोड़ रुपए की, उसका सर्कल रेट बनता है 2 करोड़ 20 लाख रुपए का, और वो क्योंकि 10% की कैटेगरी के अंदर आती है तो आपको वो 10% का डिस्काउंट लगा के नहीं लेना है, वो 2 करोड़ 20 लाख पे ही लगेगा जो फुल सर्कल रेट है उसको। सो देयर इज नो डिस्काउंट फॉर TDS। वो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा बेशक, क्योंकि 2 करोड़ की लिया, 2 करोड़ 20 का सर्कल रेट है तो आपको नहीं लगता है, लेकिन स्टिल यू हैव टू डिडक्ट TDS ऑन 2 करोड़ 20 लाख का, ताकि इनकम टैक्स वाले को पता लग जाए कि हाँ भाई ये प्रॉपर्टी के सर्कल रेट ये आ गया है इसके बारे में। तो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू डिडक्ट टैक्स ऑन 194 IA on this basis on eligibility. There is another amendment, you will know there's a last year a provision was created in 206 AB saying that in case the other person to whom you are deducting tax at source and the tax deducted is the preceding year was 50,000 rupees or more, and if he has not filed any of the return in the last 2 preceding assessment year, then the TDS has to be deducted at double the rate. Now that period is being reduced from 2 years to 1 year. That's a provision. Then there are small amendment regarding merger and demerger of the company, where they're saying that now in the case of a merger or demerger, during the period when the application is pending before the NCLT or any other authority, the assessment can continue on the old assessee, in the name of the old assessee, but shall be deemed to be continuing in the name of the new assessee. So that will also create a Pandora box on merger and demerger on that part of the group. Further, in the case of such merger or demerger, there used to be a challenge because the order of merger or demerger or amalgamation used to come after 2-3 years, and by the time assessee was not in a position to file a revised return of the merged entity, etc. Now it has been provided by way of the amendment in section 179 itself that return can be filed within a period of 6 months from the date of the order of the merger or amalgamation, etc. This is a good provision which has been worked out on that part. Then there is another change regarding the appellate procedure. In the case of TDS, under section 195, TDS is to be deducted when you are making payment to a non-resident. In many of the contracts, the obligation to pay tax is on the deductor, not on the deducted. And deductor sometimes in a doubt that whether TDS is liable or not liable to deduct it. So there used to be one section 248, which used to say that you can pay tax and then file an appeal before the CIT appeal. Now that section 248 is being deleted. It is being provided that the deductor can deposit the tax and thereafter he can make an application in the prescribed form under section 239A to the assessing officer
saying that tax is not required to be deducted and hence you please refund that tax. And then again, AO will decide that application, and if he decides against, then you can file an appeal against it. These are the major changes, except the change which I have not touched upon about the charitable societies, charitable trust institution, etc. कोई बजट ऐसा नहीं है जिस बजट में चैरिटेबल ट्रस्ट और सोसाइटी इंस्टीट्यूशन के प्रोविजन के साथ छेड़खानी नहीं होती। कुछ जरूरत से ज्यादा ऐसा लगता है चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन के बारे में सोचा जाता है कि दैट दे आर बेसिकली मेंट फॉर अवॉइडिंग टैक्सेस। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेरा पर्टिकुलरली हम सबका शायद अनुभव होगा कि जितनी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन है, दे आर रेंडरिंग सर्विस टू द सोसाइटी, दे आर डूइंग ए गुड सर्विस। चाहे कोई भी संकट आया हो नेचर का, और कोरोना ने 2 साल में ये दिखाया है कि चैरिटेबल ट्रस्ट सोसाइटी ने कितना लोगों के समाज के लिए काम किया है। शायद सरकार की जितनी भी बॉडी जो अच्छी हैं हेल्थ की हैं, ये है इतनी सपोर्ट नहीं कर पाती लॉकडाउन में जितना कि अगर एनजीओ ने काम नहीं किया होता, चाहे लोगों को शेल्टर देने में, लोगों को खाना खिलाने में, लोगों को जॉब दिलाने में, अपॉर्चुनिटी देने में। लेकिन फिर भी एनजीओ के प्रोविजन इनकम टैक्स में मेरे हिसाब से बड़े हार्श, और इस साल तो और इतने हार्श किए हैं। अब मैं अभी बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको करना पड़ेगा उसके बारे में। चिंता इसलिए होती है ज्यादा क्योंकि ये सारी एनजीओ पार्ट टाइम लोगों से चलती हैं जो अपना ऑनरेरी काम करते हैं, जिनको सैलरी नहीं मिलती, रिटायर्ड लोग हैं, प्रोफेशनल हेल्प बाय अल्लाह नहीं होती है, फिर भी एनजीओ के साथ इतने सारे सख्त प्रोविजन। और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट तो ये है कि पिछले साल 3 बार इसकी अमेंडमेंट की गई, नए नए प्रोविजन लाए, सबके रजिस्ट्रेशन किए गए। ये कहा गया कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करेंगे और 3 साल तक चलेगा, कुछ पूछेंगे नहीं। अब ये चिंता आ गई उसी प्रोविजन को देखते हुए कि यार ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले गया और ये बेनिफिट ले जाएगा, कल कोई बेईमान निकला तो क्या करें। अब उसके लिए ये चेंजेस करे गए हैं चैरिटेबल ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन में। लुकिंग टू द टाइम कंस्ट्रेंट, 5 बजने चाह रहे हैं, मैं 2-4 मिनट में फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेंगे और उसको खोल देंगे। जो हमारी बार रूम की जो G19 की हल्ला हुआ, वो जो मुस्कुराहट है वो मिस नहीं हो जाए लगे जब बहुत मोनोटोनस लेक्चर हो गया। पहली बात, ना आपने सोचा, ना मैंने सोचा, ना हमने सोचा, चैरिटेबल ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन का ऑडिट करना मैंडेटरी है। इनकम टैक्स में कहीं नहीं लिखा कि बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी जरूरी है, ना सेक्शन 1023C में रिक्वायरमेंट है, ना 11 में। तो इसलिए दोनों ये प्रोविजन अमेंड किया जा रहा है to make it mandatory that every charitable trust or institution below the threshold limit shall be required to maintain books of accounts. जब बुक्स ऑफ अकाउंट रख लिया आपने और आपकी इनकम कंप्लीट हो गई, असेसिंग ऑफिसर ने आपको एग्जेम्पशन डिनाई कर दी क्योंकि वो तो 11-12 में बिजनेस तो है नहीं, आपकी इनकम कैसे कंप्यूट हो, ये अपना आप में एक बड़ा भारी सवाल है। टोटल ग्रोस रिसीट को टैक्स कर दें क्योंकि खर्चा तो वो बिजनेस तो खर्चा है नहीं, 28 to 37 लगता नहीं है कि जो आपको खर्चे की डिडक्शन मिल जाए। कुछ उन्होंने लिखा कि भाई कुछ असेसिंग पर टोटल ग्रोस रिसीट पे टैक्स करते हैं, कुछ नेट पे करते हैं। टू गिव ए क्लैरिटी, नाउ इट इज बीइंग क्लैरिफाइड कि जितने भी आपके खर्चे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो सारे आपको मिल जाए, ग्रोस रिसीट माइनस जो होगा। लेकिन वो खर्चे जो आपने कॉर्पस से किए हैं वो नहीं मिलेंगे, वो खर्चे जो आपने वॉलंटरी डोनेशन कंट्रीब्यूशन से हैं वो नहीं मिलेंगे, वो खर्चे जो आपने लोन लेके किए हैं वो नहीं मिलेंगे। अब ये अपना आप में बड़ा भारी सवाल आएगा कि आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाएगी खर्चे में। डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी उन असेट की जिनकी आपने एप्लीकेशन ले ली है। फिर ये सवाल आया कि आपकी इनकम होगी कैसे कंप्यूट इसके बाद, तो बोले सेक्शन 11 में लिखा है इनकम टू द एक्सटेंट इट इज अप्लाइड देन ओनली अप टू 85% दैट इज ओनली नॉट लायबल टू टैक्स। और अप्लाइड का मतलब होता है कि आपने पेमेंट कर दी है, तो जो आपने पेमेंट नहीं करी, जो आउटस्टैंडिंग है उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो मीनिंग देयर बाय बुक्स ऑफ अकाउंट रखनी है और कैश बेसिस हो गया। आपके अगर बैलेंस शीट के अंदर पेबल खड़ा है तो वो दैट विल नॉट बी कंसीडर्ड टू बी एप्लीकेशन ऑफ इनकम ड्यूरिंग द ईयर, दैट विल बी दो आपको सेक्शन 11(2) में जो आपका प्रोविजन है आपको अगले साल क्लेम करने का वो आप ले लीजिए, बेनिफिट देना है। एक और सवाल आएगा जब आपकी ये इनकम कंप्यूट ऐसे होने लगी, जब एग्जेम्पशन डिनाइड कर दी गई है और खर्चा होने लगा, तो आपने जो कैश पेमेंट करी है उसका क्या होगा 10,000 से ऊपर, तो 48(3) लगेगा। आपने कुछ ऐसी पेमेंटें करी हैं जिसपे TDS नहीं काटा, 40I लगता है,
वो भी TDS आपको नहीं काटा तो वो भी डिसअलाउ। तो मीनिंग देयर बाय वन हैज टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड टू फेस दिस म्यूजिक ऑन दिस पार्ट। एक प्रोविजन और है कि अगर आप 85% का ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं 85% तक का, तो यू कैन एक्यूमुलेट इट फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years सेक्शन 11 में, और 1023C में भी 5 year का है। लेकिन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है कि एक में एंड ऑफ 5 year, एक में 5 years। तो ये सवाल उठा कि ये इनकम अगर मैं फेल हो जाऊं तो कौन से साल में टैक्स होगी, 6th year में या 5th year में? नाउ दिस कंट्रोवर्सी इज बीइंग सेटल्ड एट रेस्ट बाय सेइंग इट विल बी 5th year ओनली। तो आपको 5वें साल के अंदर अंदर खर्चा कर देना, नहीं करा तो 5वें साल के अंदर ही वो इनकम को आपको ऑफर करना पड़ेगा। अनदर प्रोविजन जो अच्छा है चेंज के लिए, एक सेक्शन 13(1)(c) है, आपने सुना सेक्शन 13 है ना, 1 की वायलेशन के बारे में। अगर आप वायलेट करेंगे तो 11-12 की आप एंड इफ एनी ऑफ द कंडीशंस आर वायलेटेड देन 11-12 एग्जेम्पशन विल नॉट बी। तो 13(1)(c) है जिसमें कि आपने ट्रस्टी, सेटलर और उनके रिलेटेड पर्सन को कोई पेमेंट की है विच इज नॉट रीजनेबल और commensurate to the services rendered etc, that expenditure is not allowable expenditure। उसके चक्कर में कुछ जजमेंट थी जिसमें टोटल एग्जेम्पशन डिनाइड हो जाती थी और टू दैट एक्सटेंट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता। इन ऑर्डर टू मिटिगेट दैट नाउ इट इज बीइंग प्रोवाइडेड कि दैट अंडर सेक्शन 31(c) इन केस असेसिंग ऑफिसर फाइंड्स आउट दैट एनी एक्सपेंडिचर इज अनरीजनेबल, वो जितनी भी खर्चा होगा वो जिसको दिया गया उसकी इनकम मानी जाएगी, और जो उसकी इनकम मानी जाएगी डीम्ड इनकम 30%, जैसे वो क्रिप्टो करेंसी वाली बात थी उसी रेट से टैक्स होगी। क्रिप्टो करेंसी वाले से 115 BBIA प्रोविजन इज बीइंग क्रिएटेड that any payment received by a person who happen to be settler etc under section 13(1)(c) which is declared, that will take 30% plus applicable surcharge. Not only that, trust or institution will be required to pay penalty at the 100% of the amount so paid. Section 271(AA)(e) new penalty is being introduced, और ये 100% तब होगी फर्स्ट ईयर पहले ऑफेंस में, पहली बार जो गलती करी, और अगली बार गलती करी तो 200%। अब आपने किसी को 2020-21 में गलती से कोई सैलरी दे दी किसी को, ट्रस्टी के बच्चे को 12 लाख रुपए की, और वो 12 लाख में असेसिंग ऑफिसर ने कह दिया ये काम धाम कुछ नहीं करता, मैट्रिक पास है, सो 3 लाख रुपए से ज्यादा नहीं मिलने चाहिए। अब 9 लाख रुपए की इनकम तो बन गई उसकी जिसको दिया गया है, 30% टैक्स तो वो देगा वहां पे, और ये 9 लाख रुपए के ऊपर अगर पहले साल 20-21 में दिया तो 9 लाख की पेनल्टी ट्रस्ट देगी, अगले साल 18 लाख की पेनल्टी देगी। दैट इज अ प्रोविजन। लेकिन एक बात अच्छी है, एग्जेम्पशन कैंसिल नहीं है। एग्जेम्पशन कैंसिल नहीं होगी तो 115 TD का प्रोविजन नहीं लगेगा और वो आपको चैलेंज बचा रहेगा। इन एडिशन देयर टू कमिश्नर को पावर है जैसे रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की, जो मैंने बताया था कि अगर जेन्युइननेस नहीं है, ये नहीं है, वो एक्टिविटी भी स्पेसिफाइड कर दी गई है कि किन केसेस में माना जाएगा कि ये ट्रस्ट काम ठीक जेन्युइननेस नहीं कर रही, स्पेसिफाइड एक्टिविटी। एंड टाइम पीरियड हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड टू 6 months टू द कमिश्नर, एंड इन केस असेसिंग ऑफिसर मेक्स ए रेफरेंस, then that period will be excluded while during pendency of the assessment for completion of the assessment under section 153 on this. Friend, these are the by and large provision under the Income Tax Act which has been made. As I said, there are 82 clauses in the finance bill amending the income tax. और thanks to the finance minister that उन्होंने इतना बड़ा चेंज नहीं करी रेट में, टैक्स में, प्रोविजन में। अगर वो रेट वेट चेंज कर जाते, नहीं करते, तो ये भी कह सकते थे कि आपके पास मैंने कोई प्रोविजन भी चेंज नहीं किया। तो जितनी देर मैंने 1.5 घंटा लेक्चर दिया तो शायद लेक्चर देना बड़ा मुश्किल होता, 1.5 मिनट में खत्म करना पड़ता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट इंक्लूडिंग टू मी कि भाई आप 2-2 घंटे लेक्चर एक हफ्ते 10 दिन तक बजट के बाद देते रहे, और वरना आप मेरे जैसे स्पीकर का क्या होता है और आप जैसे लोग ये जितनी बुकिंग की होती है उसका क्या होता है। तो ये बुकिंग का साधन है, तो ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। नाउ ओवर टू विनय जी, नाउ वी कैन ओपन द हाउस एंड My request to all my friend will be, आप अपना वीडियो ऑन करके मेरे से पूछेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ताकि हम समझ सकें कि भाई क्या पूछना चाह रहे हो, क्या सवाल है आपके, क्या वर्किंग है। आई कैन सी यू ऑन ऑल द स्क्रीन। थैंक यू विजयन जी, इट्स ए नाइस डेलिब्रेशन। और सबको अब तो कोई शंका ही नहीं बची होगी कि जो फाइनेंस बिल में कोई आया है। और एक बात और, सर हमेशा एक बात कहते हैं कि
फाइनेंस मिनिस्टर इज सो काइंड ऑन द स्पीकर्स, उनके लिए तो 5-7 दिन का तो वो काम दे देते हैं, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। फाइनेंस मिनिस्टर को खाली यहाँ पे नहीं, जब भी बिल डिस्कस होगा, पास होगा, उसके बाद भी इसी प्रकार की अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए बनी रहती है। नहीं नहीं, उसका तो मैं साधन बता दूं। मेरा अपना एजेंडा तो पूरा है 4 साल 1 साल का। चार तरह की चीजें चलती हैं। मार्च तक तो चलेगा बजट, और मार्च से जून तक चलेगा आपका TDS, और जून के बाद चलता है, अक्टूबर तक चलता है फिर ये आपका टैक्स ऑडिट। अक्टूबर सितंबर से लेके दिसंबर तक चलता है, फिर आपका ये सर्चिजर सर्वे चलता है, और फिर चलेगा रिकवरी और वो पेनल्टी वाला। तो हमारा एजेंडा मुझे पता है कि क्या क्या कौन से मौसम में कौन से सेमिनार कौन से वेबिनार चलते हैं। तो सारा एजेंडा बिल्कुल फिक्स घूमा फिरा घूमते रहते हैं। जैन साहब, ये जो रिटर्न जो अपडेट होंगी, इसमें रिफंड में मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई देखो, मेरे पास टाइम नहीं था, ये बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है। लॉस की रिटर्न है तो आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी अपडेट करने की। लॉस की रिटर्न फाइल कर कोई रखी है। नहीं, एक ट्रैफिक है, इसके अंदर एडिशनल टैक्स होगा तो ही आप भर सकेंगे रिटर्न, वरना नहीं भर सकेंगे। रिफंड तो मिलने का कोई मतलब ही नहीं। TDS का क्रेडिट रह गया और अब TDS का इनकम लेने के बाद रिफंड बन रहा है, तब नहीं, अच्छा आपकी एलिजिबिलिटी नहीं रहेगी। टैक्स तो हम दे ही रहे हैं ना, एडिशनल टैक्स तो, लेकिन वो रिफंड में से एडजस्ट हो रहा है। नहीं, वो आपकी लायबिलिटी नहीं आएगी। देन यू आर रनिंग बिकॉज़ द लॉ इज क्लियर। TDS तो पहले ही एडजस्ट हो जाएगा ऊपर से, आप रिफंड नहीं मांग सकेंगे। आपको थोड़ा सा उसमें शायद प्रैक्टिकल व्यू लेके एक आधा TDS छोड़ना पड़ेगा, टैक्स जमा करा के जान छुड़ानी पड़ेगी। अच्छा अच्छा अच्छा। मुकेश जी, इनकम फालतू दिखा देना थोड़ी सी, उसमें TDS मेरा एडजस्ट कर एक लेना। सवाल है। रानो पूछो। मेरा एक सवाल है, ये जो अमेंडमेंट्स आई है रिट्रोस्पेक्टिव से, जैसे 14A आया और सेस वाला की सेस आपको अलाउ नहीं होगा, अगर मैं पहले से इसका बेनिफिट ले चुकी हूँ क्योंकि देयर वर सो मेनी जजमेंट्स, तो डिपार्टमेंट के पास क्या वो रेक्टिफिकेशन वाला वो लगा के कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मेरा वो बेनिफिट छीन ले? क्या लगा के, मैं समझा नहीं। जैसे कैम इन्वेस्ट लगा के मेरे को कोई बेनिफिट मिल चुका है कि मेरे पास एग्जेम्प्टेड इनकम नहीं थी, तो मेरा 14A नहीं डिसअलाउंस हो सकता। अब ये रिट्रोस्पेक्टिव इन्होंने अमेंडमेंट डाल दी कि हमेशा यही इसका ये मतलब था। नहीं, तो अब क्या है? 14A में तो मेरा व्यू ये है कि ये रेट्रोस्पेक्टिव मानी नहीं जाएगी, ये एप्लीकेबल 22-23 से, क्योंकि उसमें लिखा है, उन्होंने लिखा है दैट दिस अमेंडमेंट शैल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। यस, तो एग्जैक्टली। ये मेरा ऐसा मानना है कि ये अमेंडमेंट नहीं लगेगी, और इसके बेसिस पे नहीं ले सकते, क्योंकि सिमिलर अमेंडमेंट आई थी लास्ट ईयर इसके 36(5) के बारे में, 36(1)(5). तो उसके बारे में भी अभी ट्रिब्यूनल के जजमेंट आ गए हैं कि उनमें भी लिखा था दिस इज क्लैरिफाइड, और वो भी कहा था। लेकिन जो सेस का, एजुकेशन सेस का है, उसमें उन्होंने 2005 में लिख दिया, एक्ट में लिख दिया है कि दिस अमेंडमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम रेट्रोस्पेक्टिव 2005-6, और वो पार्लियामेंट का राइट है रेट्रोस्पेक्टिवली लेजिस्लेट करने का। इस केसेस में जिनकी असेसमेंट हो गई है, तो डिपार्टमेंट को 148, 147 या 154 का जो प्रोविजन बनते हैं वो भी किया जा सकता है। तो उस केस में क्या पेनल्टी भी लगेगी क्या? 148 के केस? ये तो लॉ बहुत सेटल्ड है कि जो आप उस दिन नहीं कर सकते थे, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कंट्यूमेशियस नहीं माना जाएगा, तो उसके बारे में पेनल्टी नहीं लगेगी, इंटरेस्ट लगेगा। तो what will be the now? इंटरेस्ट इज ऑलवेज कंपनसेटरी, वो नहीं छूटेगा। हाँ, नहीं तो what will be the course of action for SSC 3 साल से पहले वाले केसेस में? They should wait for 148। ये एजुकेशन सेस वो लेके क्लेम कर चुके हैं, और कोई डिपार्टमेंट ने उनके अगेंस्ट में आज तक कोई ऑब्जेक्शन। अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हो? नींद तो जिसको लेना वो करेगा। आप अपने आप क्यों ले लिया नहीं ले लिया, किसको पूछना है? अभी आपने मेरे को BA में नहीं सुना। मैं आज के क्वेश्चन जी बताइए। हाँ सर, ये बताएं कि ये क्रिप्टो एसेट्स के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, कि क्रिप्टो एसेट को क्रिप्टो एसेट से यदि आपने एक्सचेंज किया है और वो उसको किसी फॉरेन एक्सचेंज में आपने उसे होल्ड किया है, उसको कन्वर्ट नहीं किया है इंडियन करेंसी में या किसी भी करेंसी में, माने यूथेरियम ले लिया आपने या बिटकॉइन ले लिया अगेंस्ट से टोकन्स, नॉन फंजिबल टोकन्स और एनी अदर क्रिप्टो एसेट्स जो इन्होंने डिफाइन किए हैं, तो उसका टैक्सेशन और TDS कैसे प्रोवाइड करेंगे? देखिए, 2 चीजें प्रैक्टिकली बड़ी ध्यान में रखने वाली बात है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स ऑन इनकम एंड इट डज नॉट लीगलाइज और इलीगलाइज एनी ट्रांजेक्शन। तो आपकी पहली ट्रांजेक्शन में तो ये बिल्कुल अजम्पशन करके चलनी चाहिए कि
अगर फॉरेन करेंसी की कोई ट्रांजैक्शन की है तो इसमें कहीं इनकम टैक्स वाले आपको फेमा की अप्रूवल नहीं दे रहे, वो नहीं दे रहे, वो आपका एक सेपरेट इश्यू है जो आपको डील करना पड़ेगा। और इसके जहां सवाल टीडीएस के बारे में, इसमें एक बिल्कुल क्लियर 3 जगह प्रोविजन प्रोवाइड किया गया है, क्योंकि 2 अमेंडमेंट है इस बजट में जहां पे इन काइंड के इशू आए हैं। एक 2814 के बारे में जो बेनिफिट एमिनिटी बिजनेस के बारे में है, जहां लोग डिस्ट्रीब्यूटर को इन काइंड देते हैं। एक क्रिप्टो के बारे में भी है। इन्होंने बिल्कुल क्लियर लिखा है कि अगर ये ट्रांजैक्शन इन काइंड में है, एक क्रिप्टो करेंसी के बदले दूसरी खरीदी गई है, तो जो आदमी ले रहा है ही विल एंश्योर दैट टीडीएस इज डिपॉजिटेड। तो आप अगर आपने कोई क्रिप्टो करेंसी ली है दूसरे से इन लिeu ऑफ एक्सचेंज ऑफ दूसरे में, तो आप उससे कैश में पैसे लेंगे या कुछ लेंगे, आप उसकी जो वैल्यू आपने एक्वायर की है उसका टीडीएस आपको जमा कराना पड़ेगा। सिमिलरली जो उसने लिया है उसको जमा कराना। टैक्सेशन कैसे होगा? टैक्सेशन तो बिल्कुल सिंपल, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दैट डे। बार्टर के बारे में तो प्रोविजन है इनकम टैक्स के अंदर। आज की डेट में कोई आदमी एक मशीनरी बेच के दूसरी मशीनरी खरीद ले और उसकी इनकम कैलकुलेट करने का प्रोविजन क्या है कि जिस डेट को आपने वो ट्रांजैक्शन की, उस डेट को उस मशीनरी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी वो निकाल लेंगे, उसकी क्या फेयर मार्केट वैल्यू थी वो निकाल लेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। आपकी कॉस्ट या फेयर मार्केट वैल्यू इज योर प्रॉफिट। अच्छा, उस एसेट को यदि गिफ्ट कर दे तो कैसे 56 को कैसे अप्लाई करेंगे, और वो भी किसी फॉरेनर को? देखिए, अगर आज की डेट में कंप्यूटेशन में कोई चैलेंज आ रहा है तो अकाउंटिंग में बहुत सारे मेथड हैं, फेयर एस्टीमेट, रीजनेबल एस्टीमेट, एलोकेशन, एप्रोप्रिएशन, उसके बेसिस पे हो जाएगा। कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वैल्यूएशन मुश्किल हो। नो, वेरी राइट। लेकिन डोनी जो है वो तो फॉरेन में बैठा है, कोई फॉरेनर है, यदि आपने उसको दे दिया, अगर आप इनकम टैक्स वाले कह रहे हैं कि हमें नहीं, भाई हमें नहीं, मतलब आप अगर किसी को पेमेंट कर रहे हैं, आपको ढूंढना है कि किसको पेमेंट जा रही है। ये मेरा जिम्मेवारी नहीं है कि आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, मैं ढूंढ के बताऊंगा आपको। आपके हाथ से पेमेंट छूट रही है ना, तो आप टैक्स काट लीजिए, और काटने से पहले आप पूछिए उस आदमी से कि साहब मुझे आपका पैन नंबर चाहिए, मुझे आपका ये नंबर वो चाहिए, मुझे आपकी डिटेल चाहिए टीडीएस के। अच्छा, जैन सर, मतलब ये देखिए क्या प्रैक्टिकल, आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं ले सकते कि भाई मेरी मजबूरी है टीडीएस नहीं काटूंगा। हेलो, हाँ अंशुल बोलो। एक मिनट गुप्ता जी। हाँ जी, बस ठीक हो, बताओ। जैन सर। हाँ जी हेलो सर, एक क्वेरी थी। वो आधार ऑथेंटिकेशन एजुकेशन एक्सेस वाला इश्यू है ना, वो आपका आधार लिंक नहीं है शायद उससे, पैन नंबर से। हेलो, एक मिनट बाकी लोग म्यूट कर लें प्लीज। एक मिनट नहीं, आंटी के नाम से अनिल जी आप अपना माइक म्यूट कर लें। सर मेरा ये कहना है। हाँ बस, तो फिर आप एक मिनट पहले अनिल जी को बात में लेंगे। क्रॉस कर रहे हैं अनिल जी नीचे आ जाओ, तो उस पे आधार ऑथेंटिकेशन यार। ठीक है जैन सर। हाँ सर एक मिनट मुझे सुन लेंगे सभी। मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको कोई मोबाइल फोन आता है तो प्लीज आप उसको बंद कर ले तो अच्छा रहेगा, ताकि औरों को डिस्टर्बेंस हो। चलिए सर। हाँ जी सर। हाँ जी, एसएल गुप्ता जी प्लीज एक मिनट। जैन सर, जैन सर मैं एजुकेशन सेस के बारे में बात कर रहा हूँ। पिछले सालों में मैंने जैजू के मार्च 16 में, मार्च 17 में, मार्च 18 में एजुकेशन सेस को एज एक्सपेंस क्लेम कर लिया 143(3) के अंदर। तो उसके बारे में क्या एडवाइस करते हैं, क्या स्टेटस है? अभी रानो जैन जी ने यही सवाल पूछा था। देखिए, एजुकेशन सेस की जो अमेंडमेंट है वो रेट्रोस्पेक्टिवली एक्ट में कर दी गई, ठीक, और पार्लियामेंट इसको मोहर लगा देगी तो ये एक्ट बन गया कि 2005 के बाद ये खर्चा अलाउेबल नहीं था जी। अगर ऐसा होता है तो असेसिंग ऑफिसर का राइट हो जाएगा 154 का ऑर्डर पास करने के लिए विद इन ए पीरियड ऑफ 4 days। तो जिस डेट को वो ऑर्डर पास हुआ है, अगर उसको लगता है बाद में, तो वो 154 का ऑर्डर पास कर सकता है। सर मेरा कहना ये है, आपको ध्यान हो, जब ये गवर्नमेंट आई थी, अरुण जेटली ने कहा था कोई भी हम ऐसे अमेंडमेंट नहीं करेंगे जो रिट्रोस्पेक्टिव हो गया एंड व्हिच इज डेट्रीमेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द एसएससी। देखिए, प्रॉमिस और लॉ में बहुत डिफरेंस है सर। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं ना, आपने बजट सुना, वित्त मंत्री जी ने बहुत सारी घोषणाएं की, कोशिश वो पूरी करेंगे कि वो जितनी घोषणाएं की उसको पूरा करें, लेकिन आधी अगर घोषणाएं पूरी नहीं होंगी तो आप ये तो नहीं कह सकते पकड़ ले कल कानून में खड़ा कर दो उनको लाके कि आपने ये घोषणा की थी पूरा नहीं की। उन्होंने कहा भाई हम रेट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट नहीं करेंगे, और नहीं करेंगे। अब एक मजबूरी है, एक गलती हो रही है। पर देखो, मैं एजुकेशन और हेल्थ सेस के बारे में आई बिलीव लेजिस्लेचर इज राइट ऑन दैट सर। इंटेंशन कभी नहीं थी। आई थिंक इनोवेटिव एक एग्रेसिव वर्किंग की लोगों ने इसको क्लेम करने की, और वो हो गई।
नहीं होल्ड करे सर एक इशू ऐसा है कि मान लीजिए क्या उसके पास तो राइट है, एओ के पास यही तो कह रहा था। 150 में पास कर दे, यदि मैं चाहूँ। सुमनीत जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है? ठीक है, हो गया सर मेरे सर, यदि मैं चाहूँ तो क्या मैं उसको कैसे कर सकता हूँ? क्या कह रहे हैं? यदि मैं चाहता हूँ, मैंने सपोज 50 लाख रुपया 1 करोड़ रुपया एजुकेशन सर का बेनिफिट लिया हुआ है और मैं उसको चाहूँ, आपका कहना है एओ के पास तो राइट है 154 का। हाँ। यदि वो करेगा, मेरे को वो 2 साल बाद करता है, 3 साल बाद करता है, विद इंटरेस्ट पेनल्टी तब लगाएगा। इससे बढ़िया क्या है कि 1 अप्रैल को एक्ट बनेगा, अगले दिन एओ को चिट्ठी लिख दो कमिश्नर को कि साहब मैंने ऐसे डिडक्शन क्लेम की थी, अभी एक्ट बन गया, मेरे को बनती नहीं है, मेरा ऑर्डर रिवाइज करके दे दो मुझे, वो दे देगा आपको इमीडिएटली। मतलब ये रास्ता अडॉप्ट कर सकते हैं। पहले भी तो 148 कराते थे हम ऐसे ही। हाँ जी। अभी भी जो रिटर्न आज की डेट में गलती रह जाती है, जो एसएससी बहुत ऑनेस्ट होते हैं, दे राइट ए लेटर टू द कमिश्नर कि साहब मैंने रिटर्न भरी थी, मेरे से गलती हो गई है और मैं इसको टैक्स देगा, मैंने जमा करा दिया, आप मेरे को मेहरबानी करके ठीक कर दीजिए। वो आपको अगले एओ को बोलता है, अगले दिन 148 का नोटिस आता है, आप दोबारा रिटर्न भरते हैं और रेगुलराइज करता है। थैंक यू सर। ऐसे कैसे कई बार पेनल्टी बच जाती है अगर बोनाफाइड होकर आदमी आ जाए। सर एक क्वेश्चन था। राणा जी आप अनम्यूट हैं, अंकित जी का प्रश्न ले लेते हैं एक बार। हाँ सर, एक इसमें 148 का मैं वो पढ़ रहा था जो अमेंड हुआ है, उसमें था कि अगर पहले तो अपना कैमरा ऑन कर ले, शक्ल जरूर नजर आनी चाहिए, पता तो लगे। सर मैं कहीं पे बाहर था, वॉकिंग पे था, इसलिए वॉकिंग पे अच्छा पता लगेगा, इसीलिए तो है ना, तो लगे कि आप क्या कर रहे हैं। सर मैं किसी आया था काम से, आपको पता नहीं हमारे एक बार कंडोन कर दीजिए। प्रोटोकॉल निकालते हैं, मैं सभी लोगों अपने दोस्तों को कह के थक गया कि टाई मत छोड़ना। नहीं सर, मैं हर बार आता हूँ वीडियो के साथ, इस बार मुझे कंडोन कर दीजिए प्लीज। हाँ चलिए बताइए सर। इसमें 148 में एक अमेंडमेंट हुई है, जैसे कि अगर किसी रिस्पेक्ट में कोई ट्रांजैक्शन पकड़ी है इन्होंने, तो उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड पिछले जितने साल थे वो सब में नोटिस भेज देंगे। तो अगर जैसे हम कई बार 148 के केसेस में ग्राउंड लेते हैं कि भाई एक बैंक की ट्रांजैक्शन आई है जो पिछले साल की सेल्स से रिलेटेड थी, आप ओपनिंग बैलेंस की पे मतलब एडिशन नहीं कर सकते, और पिछले साल का वो या तो खुला नहीं होता है, टाइम बार होता है। तो अब क्या डिपार्टमेंट जिस साल सेल्स हुई थी या 4 साल पहले की सेल हुई थी, तो वहां भी पहुंच जाएगा? नहीं भाई, मैं नहीं समझ पाया आपका क्वेश्चन। सर जैसे 2015 का कोई केस है जिसमें 2015 में कोई सेल्स करी, उस सेल्स की पेमेंट वो डेटर खड़ा और वो उस डेटर से पेमेंट आई 2021 में। अब जब 2021 का नोटिस खुलता है, असेसमेंट खुलती है, तो हम लोग ग्राउंड लेते हैं कि ये तो पुरानी किसी सेल्स की पेमेंट आई है, आप इस में तो इस पे एडिशन नहीं करो। वो अंकित जी ये मेरिट बेस्ड है, असेसिंग ऑफिसर तो आपको बुला के पूछ लेगा, आप उसकी तसल्ली करा देंगे तो वो मान जाएगा कि भाई इस साल की इनकम नहीं है तो नहीं मानेगा। हाँ बट सर क्या अब इसमें डिस्प्यूट क्या है? सर क्या वो 2015 पे भी चला जाएगा? क्यों नहीं चला जाएगा, मतलब रीजन क्या है, मतलब इसी पे? सर पहले नहीं होता था वो चीज, इसलिए। नहीं कोई कानून में कोई चेंज नहीं है। मैं पूछता हूँ कि आपका अगर 17-18 का खोला और उसमें आपने एक्सप्लेनेशन दी कि पता लगा 17-18 की नहीं है, ये तो 15-16 की इनकम बन रही है और उस डेट को 15-16 लिमिटेशन में आ रहा है, तो खुल जाएगा, क्यों नहीं खोलेगा वो? अच्छा भाई ये भाई आज की डेट में सपोज करो आपकी कोई असेसमेंट चल रही है 20-21 की है के पास, वो आपसे कैश क्रेडिट पूछता है कि 10 लाख रुपए का लोन आया, आप ये एक्सप्लेन कर दो, और आप नहीं करते हो और उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि भाई ये पिछले सालों का है बोगस, तो वो रीजन रिकॉर्ड करेगा, पिछले साल का 148 आपके हाथ में दे देगा। तो सर जो अमेंडमेंट में क्लॉज था कि वो हर साल उस हर रिस्पेक्टिव असेसमेंट ईयर का नोटिस भेजेगा, वो क्या इंटरप्रिटेशन आ रही थी उसमें? 148 तो अभी नहीं, वो तो सर्च के केस में था ना, कि भाई सर्च के केसेस में पहले ऑटोमेटिकली 6 साल के केस खुल जाते थे, मूवमेंट सर्च हो गई थी, अब वो प्रोविजन हटा लिया, अब तो 148 जो प्रोविजन है वो लगेंगे। अच्छा ओके, थैंक यू। नथिंग न्यू बेसिकली। अनिल जी एक मिनट होल्ड करें। अनिल जी एक मिनट। रानो जी, फिर प्रांशु जी और फिर अनिल जी। रानो जी, मेरा बहुत छोटा सा सवाल है, अगर मेरे पास 2 क्रिप्टो हैं, एक ही साल में, एक में मुझे प्रॉफिट होता है, एक में लॉस होता है, तो क्या मैं वो सेट ऑफ कर सकती हूँ? हाँ देखिए, मेरी आज की डेट में इंटरप्रिटेशन ये है कि उन्होंने ये लिखा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो माइनस किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉस इसका अलाउड नहीं होगा, इसका मतलब है दूसरी इनकम के अगेंस्ट अलाउड नहीं होगा। ये एक तरह की स्पेकुलेशन की अपने आप में जैसे स्पेकुलेशन होता है वो ट्रीट माना जाएगा। कैरी फॉरवर्ड लॉस अलाउड नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने जब मैं बोल रहा था तो मैंने लेक्चर में बड़ा क्लियर किया था कि भलाई इसी में है कि अगर आपके पास प्रॉफिट हो गया ड्यूरिंग द ईयर में,
और दूसरा कोई क्रिप्टो करेंसी आपने होल्ड किया है जिसमें 31 मार्च को लॉस आ रहा है, तो आप उसको बेच के उस दिन बराबर करके सेटअप कर लो, क्योंकि अगर आपने 1 अप्रैल के बाद बेचा तो फिर वो शायद आपको लॉस नहीं होगा। तो आज की डेट में मेरा इंटरप्रिटेशन है वो फेयर एनफ है। और उसमें जो जजमेंट मैंने पीछे बताई थी कि जो प्यारा सिंह वाली जजमेंट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, और ये बजट आने के बाद ही मैंने काफी रिसर्च करके पढ़ी, कोशिश की भाई ये क्या इशू है। सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उसमें ये जो मैंने निकाला, इफ यू इंकर एन एक्सपेंसिव विच इज इलीगल अगेंस्ट ए लीगल बिजनेस देन दैट इज नॉट अलाउेबल, बट इफ यू इंकर एन इलीगल एक्सपेंस अगेंस्ट इलीगल बिजनेस दैट इज अलाउेबल। तो अगर मैं क्रिप्टो करेंसी को लीगल इलीगल माने तो इलीगल का इलीगल है, तो वो दोनों के आपस में सेट ऑफ तो मिल जाएगा, खर्चा नहीं मिलेगा। तो उसमें एक लार्जर क्वेश्चन रह गया है जो शायद कई लोगों का इंटरेस्ट हो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मैंने किसी को पेमेंट करके खरीदा तो मिल जाएगा, लेकिन जिसने खुद बनाई, खुद लोग कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी बर्निंग करके कंप्यूटर करके बनता है, क्रिप्टो करेंसी जनरेट की है, वो शायद खर्चा नहीं मिलेगा क्योंकि वो आपने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में नहीं आएगा। दैट्स ए चैलेंज विच इज कमिंग अप कि वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर आपने किसी को पे करके खरीदा तो मिल जाएगा। और क्योंकि अब 1 अप्रैल 2022 के बाद टीडीएस आ रहा है, वो तो नेचुरली एक्विजिशन कॉस्ट वो होगी जिस पर आपने टीडीएस काटा, नहीं काटा तो वो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वैसे ही बाहर हो जाएगी। प्रांशु जी सर मेरा ये कहना है अनिल जी एक मिनट, प्रांशु जी एक मेरी रिक्वेस्ट है, होते हैं उसकी कोई कॉस्ट, एक मेरी रिक्वेस्ट है, इसमें जरा अपना हैंड रेज कर ले तो मैं नाम 1 बाय 1 नाम अनाउंस कर देंगे, क्योंकि तो फैसिलिटी है आप यू कैन रेज योर हैंड, तो 1 बाय 1 कर लेंगे। आप प्रांशु सिंगल प्लीज। प्रांशु सर मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर मेरी क्रिप्टो करेंसी भी फॉरेन वॉलेट में है तो वेदर इट वुड बी अ फॉरेन एसेट और नॉट? भाई देखो, इसका जवाब इनकम टैक्स वाला तो देंगे, और अगर मैं कॉमन सेंस से आपका जवाब दे दूं तो आपने पहला सेंटेंस कहा, आपने खुद ही एडमिट कर लिया कि मेरी फॉरेन वॉलेट में जी। मैंने जब मैं ये क्रिप्टो करेंसी के बारे में जब मैंने शुरू किया तो मैंने कहा था कि लीगल और इलीगल का इसमें कोई जवाब नहीं आ रहा है, ना ये सरकार लीगलाइज कर रही ना इलीगलाइज कर रही इस बात को जी। और फेमा का कानून मुझे बहुत क्लियरली कहता है कि मैं रुपी दे के फॉरेन करेंसी नहीं एक्वायर कर सकता, कोई एसेट एक्वायर नहीं कर सकता। ट्रू। अगर देखो हम सब चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं फेमा की बेसिक लॉ समझा देता हूँ अगर 1 मिनट के लिए समझना चाहें। आज की डेट में मैं रेजिडेंट हूँ, मेरा राइट है मैं रुपीज में कुछ भी करूँ। इंडिया से बाहर मैं कोई भी एक्सपोर्ट करूँ, कोई भी चीज भेजूं, उसके जो पैसे मिलेंगे वो रिजर्व बैंक के पास जाएंगे। फॉरेन करेंसी विल गो, मेरे बैंक में आते हैं, वो मेरे पास नहीं आते हैं, वो बैंक में रिजर्व बैंक के अकाउंट में आते हैं। उसके बदले में रिजर्व बैंक के बिहाफ पे बैंक मुझे इंडियन रुपीज देता है। इसी तरह से जब मैं कोई चीज इंपोर्ट करूंगा, कोई भी हो, चाहे कोई सॉफ्टवेयर हो, ये हो, मैं बैंक पे जाता हूँ, बैंक में से रुपये लेके उसके रिजर्व बैंक से डॉलर खरीद के वो बाहर बेचता है। तो हम ये समझे कि मेरे पैसे से मैं फॉरेन करेंसी पे डीलिंग कर लूंगा, वो टोटली प्रोहिबिटेड है। फेमा के अंदर इट इज ए सीरियस क्राइम that to deal in foreign currency by a non-resident, by a resident. That I understand, sir. Secondly, even for a foreigner, non-resident, dealing in Indian currency outside India is prohibited. रुपीज में डील नहीं कर सकते। दुबई में बैठ के कोई इंडियन रुपी डील कर लेगा तो दैट्स ए वायलेट क्रिमिनल ऑफेंस। नाउ आज की डेट में आपने कोई बिटकॉइन खरीद रखा है, और एक मिनट अनिल जी, बाथरूम अनिल जी आप म्यूट कर लीजिए साहब। अनिल जी हाँ जी सर, म्यूट कर लीजिए, म्यूट आप म्यूट किया सर, अनम्यूट मत करिए, म्यूट कर लीजिए। अब म्यूट किया सर। मेरी एक क्वेरी है सर। 1 मिनट रुक जाइए अनिल जी, 1 मिनट जब दूसरे का जवाब दीजिए। नाउ क्वेश्चन इज कि अगर आपकी पेमेंट हो गया और उस पेमेंट से आपने बाहर वाले से क्रिप्टो करेंसी खरीद ली तो आपकी फेमा की वायलेशन वही होगी। बिल्कुल हो गई सर। अब वो मुझे नहीं पता जितने लोग इंडियन रेजिडेंट ये क्रिप्टो करेंसी लेके घूम रहे हैं वो आई इंडिया में कैसे। एग्जैक्टली ये तो ये जितने एक्सचेंज वाले हैं, वजीर एक्सचेंज और ये जवाब देंगे कि ये कहां से आती है। मैं तो ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि साहब ये इंडिया में ही थी और इंडिया से खरीदी थी। मैंने इसलिए राइटर लगाया है कि अगर आपके हाथ में वो करेंसी आई हुई है और वो क्रिप्टो करेंसी आपके हाथ में है और वो बाहर से चल के आई हुई है आपके अकाउंट में, तो आपके हाथ में फेमा की वायलेशन। नहीं, बट सपोजिटली मैंने वजीर एक्स से ही खरीदी क्रिप्टो करेंसी, बट मैंने उसको अपने फॉरेन वॉलेट में ट्रांसफर कर दी फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। फॉरेन वॉलेट कहां से आया? फॉरेन वॉलेट सर ऑनलाइन ऐप है, ऑनलाइन ऐप पे फॉरेन वॉलेट। ऑनलाइन ऐप में वो फॉरेन वॉलेट में जो आपने करेंसी पे की वो तो फॉरेन करेंसी में पे गई ना, इसका मतलब। नहीं, मैं वजीर एक्स से ट्रांसफर कर सकता हूं अपने फॉरेन वॉलेट में फ्री ऑफ कॉस्ट। अरे भाई वो पेमेंट कैसे हुई है? अगर फॉरेन वॉलेट की लोकेशन आउटसाइड इंडिया है जी, देन इट इज एन एसेट आउटसाइड।
और फिर फेमा के बारे में आप सोच लेना। और अनिल फिर कुमार आप जैन जी, शेड्यूल FA वाला शेड्यूल भरने के लिए तैयार है। अनिल कुमार जैन जी बोलिए सर। मैं उसका जवाब एक कॉमन सेंस से देता हूँ। मैं अपने यहाँ से उठा के कुछ ज्वेलरी अपनी उठा के जाता हूँ पहन के, और दुबई जाके एक लोकर में रख के आ जाऊँ जी, और इंडिया में आके फिर मैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न भरूँ, तो मुझे बताना पड़ेगा नहीं बताना पड़ेगा कि फॉरेन एसेट्स। ट्रू, बिल्कुल। भाई मेरी बीवी की ज्वेलरी वहां पर 10 ग्राम या 20 ग्राम जो भी है वो वहां रखी हुई है। ग्राम का राइडर नहीं है सर, ग्राम का राइडर नहीं है। हाँ जी सर, किलो का हिसाब चल रहा है। हाँ जी सर, मेरी एक क्वेरी थी सर। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर, जैसे आपने कहा कि अभी ये डेफिनेशन जो अनडिस्क्लोज इनकम की चेंज हो गई है, सो अब ऑन दैट बेसिस जो अभी हाई कोर्ट ने असेसमेंट नोटिस क्वेश्चन कर दिए हैं, सो देन अगेन फॉर द असेसमेंट ईयर 17, 18 और 16, 17 ये अनडिस्क्लोज पेनी स्टॉक एक्सीडिंग 50 लाख का ये दोबारा से 148 इशू कर सकते हैं सर? देखिए क्या है कि हाई कोर्ट ने लास्ट सेंटेंस में ये जजमेंट में ये वर्ड यूज किए हैं कि असेसिंग ऑफिसर एंड बोथ पार्टीज आर फ्री टू टेक एक्शन एज इन अकॉर्डेंस विद लॉ। अगर आज की डेट में अगर वो लिमिटेशन पीरियड के अंदर आ रहा है और खेल खोला जा सकता है, तो वो रीजन रिकॉर्ड करके खोल सकता है, उसमें क्यों नहीं खोल पाएगा? मतलब नाउ इट कैन बी ओपन अप टू 10 इयर्स, बट अप टू वो देखिए 10 साल का प्रोविजन के बारे में मैंने पीछे एक लेक्चर दिया था, आज से 1 महीने पहले शायद ITT बार का दिया था। आप 149(1) का एक नीचे वाला प्रोवाइजो पढ़ लीजिए सर। वो प्रोवाइजो में अप टू 14, 15 तक वो तो टाइम बार हो गया। एक मिनट सुन लीजिए। कानून में उन्होंने बहुत क्लियर लिखा है कि जिस डेट को वो नोटिस देगा उस डेट को पुराने कानून के अंदर उसको खोल सकता था या नहीं खोल सकता था वो लगेगा। हाँ जी सर। तो आज की डेट में पुराने कानून का 6 साल का मान के चलूं तो 14-15 साल का वो 14-15 का नहीं खोल सकता। नहीं, 15, 16, 17 सुन लीजिए अनिल जी, 31/3/22 के बाद वो 15-16 का नहीं खोल पाए। हाँ जी। और 31/3/23 के बाद 16-17 का नहीं खोल पाए। हाँ जी। बस बाकी खोल पाएगा ऑब्वियसली। बाकी वो पेनी स्टॉक है, मतलब हाई कोर्ट से क्वेश्चन होने के बावजूद भी फिर अगेन ही कैन रीओपन इट ना सर? यस ही कैन, व्हाई नॉट, ही कैन ओपन हियर। He can reopen if it is exceeding 50 lakhs. So now the definition has been changed. It includes any data or entry. वो डेफिनेशन का भी इशू आएगा कि किस साल से एप्लीकेबल होगी। वो 1/4/22 से एप्लीकेबल है। 1/4/22 से, और नोटिस भी अगर 1/4/22 के बाद आता है। हाँ, तो फिर 1/4/22 के बाद नोटिस आता है। उस पे भी सवाल होगा कि ये डेफिनेशन उस साल पे लगेगी या नहीं लगेगी। क्योंकि सवाल ये होगा कि 2021-22 में वो पुराने कानून के अंदर टाइम बार हो गई। नेक्स्ट कॉलर को ले लेते हैं। सुमनीश जी, आपका कुछ क्वेरी थी? सुमनीश जी बोलिए। सर मेरी एक क्वेरी है, जो अभी आपने एग्जांपल दिया था TDS का। हाँ जी बोलिए। 14-15 लेकिन 17-18। हेलो। हाँ जी कैरी ऑन। सर आपने जो TDS का एग्जांपल दिया था 48 लाख और 51 लाख का, उसमें अगर ओनर 2 हो जाते हैं प्रॉपर्टी के ओनर, तो हम एक प्रॉपर्टी कंसीडर करेंगे या उसको 2 में डिवाइड करेंगे? कैसे आप क्या खरीद रहे हैं? सर प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। आप क्या खरीद रहे हैं? आप कौन है? बायर। और आप बायर हैं, और आप एक है 2 हैं? आप ज्वाइंट। 2 नहीं, आप एक है 2 हैं बायर? इंडिविजुअल। रजिस्ट्री की सेल डीड क्या है? 1 की है। सेल डीड 2 की है। सेल डीड 1 की है। तो फिर लग जाएगा आपको। और 2 की है फिर नहीं लगेगा? 2 तो अलग हो ही गई ट्रांजेक्शन, फिर तो ट्रांजेक्शन अलग हुई। कभी कभी जब ऐसे सवाल आते हैं ना, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बहुत पुरानी एग्जांपल है कि बेसिक्स पे चले जाइए। बच्चों को जैसे गिनती सिखाई जाती है ना, 2 + 2 4, तो वो सीख नहीं सकता, तो उसको कहते हैं एक लाइन लिख, 1 1 2 लाइनें खींच देते हैं, फिर कहते हैं 1 2 3 4। तो आपका सवाल ऐसा है।
जी चलिए साहब, ये नाम नहीं आ रहा है इसमें, 70178632 समथिंग फोन नंबर आ रहा है, वो बोलिए प्लीज। हाँ जी सर बोलिए। हाँ बोलिए। ये फोन आ रहा है, इसको पेगासस में दो, पता लगेगा कौन है। जी बोलो बोलो, आप बोलो साहब। हाँ आवाज आपका 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 माइक ऑफ लग रहा है, इसकी वजह से आवाज नहीं आ रही। मुकेश जी बोलना चाह रहे हैं, शायद मुकेश मित्तल जी हैं। हाँ अरे वाह मुकेश जी बोलो। अरे वाह, वो आप फोन से कनेक्ट कर किया हुआ है क्या आपने? हाँ फोन पे इनका माइक नहीं काम कर रहा लग रहा है ना। जी बोलो मुकेश जी, आपकी छोटी सी फोटो आ रही है। काम नहीं कर रहा, इनका माइक ऑन ही नहीं है, मैं देख रहा हूँ। जी बोलो। कंट्रोल पे वो नजर नहीं आ रहा, इनका माइक, इनका ऑडियो ऑन नहीं है। आप मुकेश जी आपको एग्जिट करना पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा, माइक ऑन करते हैं। एक बार एग्जिट करते हैं, दोबारा आ जाइए। आगे आगे आवाज आ गई, आवाज आ गई, बोलिए। नहीं आ रही, अब आएगी सर। बोलूं मैं? हाँ बोलो सर, आपको आ रही है आवाज? अब आ गई, आ गई। सर एडीआईटी ने 131 में सम्मन्स इश्यू किए, वो डिटेल्स मांग रहा है फाइनेंशियल ईयर 2012-13 टिल डेट। मेरा सेसी कहता है कि 6 साल +1, तो आपने ही बोला हुआ था, इससे पुराना तो रिकॉर्ड रखना ही नहीं था आपने। हाँ आप कह दो नहीं है, ठीक है भाई। ये क्यों कह रहे हो कि 12-13? आप तो 18-19 का भी कह सकते हो नहीं है। ठीक है, ये कहाँ लिखा है कि 6 साल का रिकॉर्ड रखना है? मतलब कंपनीज एक्ट में जैसे है वहां पे साफ वो अलग बात, कंपनी इनकम टैक्स में तो कोई नहीं है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मेरे से एक सवाल पूछा था, शायद किसी यहाँ पे आया हो चैट पे, की बुक्स के अकाउंट के बारे में। इनकम टैक्स वालों ने 44AA में ये लिखा, 44AA में लिखा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट टू बी मेंटेन। हाँ जी 44 में आता है ना वही, और वहां लिखा है कि टू बी मेंटेन एट सच प्लेस एज में बी प्रेस्क्राइब। और रूल 6F में लिखा प्रेस्क्राइब। प्रोफेशन के लिए तो प्रेस्क्राइब कर रखी है, अब पीरियड भी 6 साल का लिखा हुआ है। बिजनेस की आज तक प्रेस्क्राइब नहीं हुई किताबें, ना पीरियड प्रेस्क्राइब। तो जैसे सर वो किसी के यहाँ सर्च हुई है, उससे उस क्लाइंट ने ट्रांजैक्शन की हुई है बैंकिंग की, वो उसको बोगस मानना चाह रहे होंगे। नेचुरली अब कह दो कि नहीं है रिकॉर्ड अवेलेबल, और क्या करो, और एक्शन में अवेलेबल नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि घर पर रखा और फिर कह दो कि नहीं। ठीक है, तो मतलब 1/4/15 या 1/4/17 ऑनवर्ड्स दे दें उनको चार्ज। आपकी चॉइस है, जो भी करना चाहो। यू कैन ऑलवेज से कि नहीं अवेलेबल, अगर नहीं है तो अवेलेबल। ठीक है, ठीक। जी अनिल सर, यस प्लीज प्रहलाद जी। सर लास्ट टाइम जो डिस्कशन चल रही टैक्स ऑडिट की, आप बजट वाली रख दो आज, बाकी बातें बाद में कर रहे हैं। तुम तो ऑडिट वालों को परेशान कर रहे हो। वो कंप्लीट नहीं हुआ था ना। बजट के जो बारे सवाल है उसी का थोड़ा सा, क्योंकि काफी सवाल है, तो मैं चाह रहा हूँ कि वो सब डिस्पोज ऑफ कर लें सके। अनिल जैन जी के जे। हाँ जी बोलिए। विनय जी मीनवाइल आप उस पे भी देख लें, चैट बॉक्स पे कोई अगर आ रहे हो तो। हाँ यूट्यूब पे सर, मैं फिर से उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहा हूँ जो आपने अभी जवाब दिया था उसका, क्रिप्टो एसेट्स का। क्रिप्टो एसेट्स यदि एक्सचेंज में आती है और फॉरेन वॉलेट में रहती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में फेमा के बारे में क्या आपका ओपिनियन है? भाई देखिए, मेरी तो बिल्कुल क्लियर व्यू है, अगर क्रिप्टो एसेट फॉरेन डॉलर में आए तो सीरियस वायलेशन ऑफ फेमा। मीनिंग देयर बाय इज कि कोई यदि क्रिप्टो एसेट्स किसी और फॉरेन कंट्री में बेच रहा है और फेमा का कोई रूल नहीं है इसके ऊपर, एंड कोई पेमेंट वहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स में कर रहा है और वो भी फॉरेन वॉलेट में आपको पेमेंट देने के लिए तैयार है, तो आप नहीं ले सकते। भाई मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ, एज ए रेजिडेंट आपके लिए फॉरेन करेंसी अनटचेबल है, फॉरेन एसेट्स अनटचेबल, और ओनली मोड ऑफ modus operandi is through legitimate way means of banking channel or the currency which you buy from bank as per the law. आप किसी भी तरीके से अदरवाइज नहीं कर, और उसके लिए ऑथराइज डीलर का होना, जिसे ऑथराइज डीलर हम बैंकर को कहते हैं, बैंक को कहते हैं। उसके अलावा कोई भी अगर ऐसा किया जाता है तो वायलेशन। अगर मैं घूमने के लिए भी जाता हूँ बाहर और मुझे वहाँ $100 की भी करना है, तो मुझे $100 अपने बैंक से लेके जाने हैं यहाँ से, मैं खर्चा नहीं कर सकता। अब ये मुझे नहीं पता ये जो एक्सचेंज जो चला रहे हैं इन्होंने कैसे फॉरेन एक्सचेंज की कंप्लायंस की है, क्या की है, क्योंकि मेरे साथ टीवी की डिबेट में 3-4 दिन से काफी लोग आ रहे हैं, ये क्योंकि वो टीवी वाले इनको भी उठा के लाते हैं। नहीं, इसमें मैंने उससे सवाल पूछ लिया था। इसमें एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें आईटी इन्वॉल्व होती है। आईटी के प्रोफेशनल जो हैं वो टोकन्स यदि मार्केट वहां पर किसी को ट्रांसफर करते हैं तो उसके बदले में पेमेंट फॉरेन एक्सचेंज में नहीं आ रही, पेमेंट किसी क्रिप्टो एसेट में आ रही है। भाई बार्टर ट्रांजैक्शन इज एज गुड एज फॉरेन एक्सचेंज। अब वो हम गलत समझ रहे हैं, बार्टर हो रही है।
इशू तो बहुत सिंपल, आप अगर आपकी बात मैं मान लूं तो मैं यहाँ से आज की डेट में किसी को अपनी सर्विसेज देके मुझे कह दूं तो मुझे 2 कंप्यूटर भेज दे, तो उससे क्या वो नहीं लगेगा क्या? फॉरेन एक्सचेंज फैमा नहीं लगता? लग गया फैमा, क्योंकि मेरी सर्विसेज गई है, वो एक्सपोर्ट है, जो आया वो इम्पोर्ट हुआ है, और दोनों में वो नहीं आया, एक्सचेंज ही आया। और इस केस में टीडीएस अप्लाई नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कोई फॉरेनर ही दे रहा है आपको क्रिप्टो एसेट। टीडीएस क्यों नहीं लगता? नहीं, फॉरेनर ही कोई आपको फॉरेन एसेट दे रहा है ना, क्रिप्टो एसेट दे रहा है, तो टीडीएस कौन काटेगा? आप परचेज कर रहे हैं ना, आप काटेंगे टीडीएस? नहीं, हम परचेज नहीं करें, हम क्रिप्टो हमको बार्टर सिस्टम में आ रही है, बेच तो बार्टर में जो आप अक्वायर कर रहे हैं उसकी पेमेंट जा रही है ना, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा ना। यू मीन टू से कि जो एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसके ऊपर हमको? भाई आप मुझे नहीं, जो आप बार्टर में जो ले रहे हैं उसकी फेयर मार्केट वैल्यू पे टीडीएस काटना आपकी जिम्मेदारी। ओके, राइट, थैंक यू। संजय सक्सेना जी का फोन है और मैसेज क्वेरी है, कैन आई फाइल अपडेटेड रिटर्न इफ आई ओमिटेड टू फाइल रिटर्न थ्रू? Can I just explain? Sanjay, okay, fine. It Yeah, was yeah. on YouTube, that's why I was. Yeah. Sir, Jain Saab, Sanjay Saxena here. Sir, regarding filing of updated return, I have read section 140B also, where an earlier return has not been filed and the tax is payable. Suppose in my case, entire tax has been deducted by way of advance tax, self and TDS. Still, but I omitted to file return. I can still avail this opportunity to file the updated return after passing the bill. भाई आप पढ़ ली, पहला सेंटेंस तो आप खुद ही पढ़ रहे थे। पहला सेंटेंस, पहला वर्ड पढ़िए, 2 वर्ड जो पहले अभी आपने पढ़े। Where an earlier return has not been filed earlier. And then? And tax is payable. Now then, what is this issue? Sir, but the point is, what I interpret, like, if the tax is payable, then it's okay. But I can still avail this opportunity to file updated return. You can. There's no denial to this, but there should be a tax payable. Sir, I will be liable to pay fees for the delay in filing of return, sir. Fees also be payable. He said all amount included, and whatever is left out net, then you pay 25% extra. Okay, that if it is balance is there, I will pay 25%. You can do what? हेलो नहीं सर, ये पूछ रहे हैं। नहीं, देखिए इतना इनकम टैक्स वालों को कमजोर मत समझो कि वो आपको कोई एमनेस्टी स्कीम दे रहे हैं कि आप 2 साल बाद अपनी टैक्स जमा करा बैठे हैं और मैं रिटर्न भर दूंगा। आपके जिसने रिटर्न नहीं भरी है उसके जितना टोटल टैक्स बना है वो सारा एडिशनल माना जाएगा और 25% देना पड़ेगा जमा कराना। ठीक है। नहीं, what you intend to say कि without giving credit to the TDS and advance? क्रेडिट मिल जाएगा, क्रेडिट एडवांस मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, क्रेडिट मिल जाएगा, इंटरेस्ट तो आएगा 234 या 20 ए नहीं घूमेगा क्या? ठीक है, एक आएगा सर, एक आएगा यार, एडिशनल फीस आएगी नहीं आएगी? आएगी सर, वो तो आएगी सर, 234 एफ आएगा ना? हाँ, फीस आएगी सर। ए का तो ऑलरेडी जो भी आ रहा है आईटी सरकार का उसका, हाँ उसका 25%। ठीक है। चित्रांशी जैन। Actually, hello. Yeah. Sir, this is Pramod Jain. Actually, my daughter's name was appearing here. ठीक है फिर। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था, जैन साहब, गुड आफ्टरनून फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ जी, तो ये जो हमने प्रॉपर्टी पे टीडीएस काटना है बेसिकली, तो अगर मैं इंस्टॉलमेंट्स में जहाँ पेमेंट करता हूँ, तो अगर मेरा असेसमेंट ईयर चेंज हो जाता है, कुछ पेमेंट्स मैंने एक असेसमेंट ईयर में की, कुछ पेमेंट्स दूसरे असेसमेंट में किए हैं, तो उस केस में जो मेरे को सर्कल रेट लेना है, बेसिकली मैंने फर्स्ट जब मैंने एग्रीमेंट टू सेल किया, उस टाइम पे मैंने जो पेमेंट्स की कुछ, तो उस टाइम पे मेरे को सर्कल रेट अगर मेरे को नहीं मिल पाता है, मेरे सर्कल रेट में उस डेट में और जो फाइनल पेमेंट होती है उसमें डिफरेंस हो जाता है, तो वो जो डिफरेंशियल टीडीएस लायबिलिटी होगी, क्या उसमें मेरे को इंटरेस्ट पे ऑफ करना पड़ेगा? नहीं, इंटरेस्ट नहीं पे ऑफ करना पड़ेगा। देखिए, आई गो टू योर पॉइंट, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। कि सपोज करो आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 5 करोड़ रुपए की, उसका सर्कल रेट 7 करोड़ रुपए का आ रहा जी सर, और आपने पहली 1 करोड़ की पेमेंट कर दी, 1 करोड़ की कर दी, तो आपके जो एग्रीमेंट पे आप करते हैं तो उस समय तो आप जितना पेमेंट कर रहे हैं, को पेमेंट और ट्रांसफर विचएवर इज अर्लियर वो है। यस, आपको अभी 1 करोड़ की पेमेंट आपको उसके हिसाब से करने पड़ेंगे। जब आप फाइनल पेमेंट रजिस्ट्री के टाइम की जो पेमेंट आएगी वो जाएगी, उस समय की जो बैलेंस उस डिफरेंस आएगा वहां पेमेंट कर देते हैं। यस सर, सर्कल रेट आपको उस डेट को डिटरमिन होगा जिस डेट को आप वो करा रहे हैं।
अनलेस कि आप वो बेनिफिट लेना चाह रहे पुराने एग्रीमेंट से। ओके ओके, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी में भी उसमें जो डिफरेंशियल रहेगा वो उस पर पे करनी पड़ सकती है। हो सकता है। ओके, थैंक यू। अश्विनी रस्तोगी जी। हाँ, नमस्कार सर, जैन साहब क्या नमस्कार। भैया? सर एक क्वेरी थी, जैसे 148 का एक केस हम एओ के साथ प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो कहता है कि ये जो है ओथ स्टेटमेंट के बेसिस पे वहां पर ये पाया गया, किसी के यहाँ सर्च हुई और उसके अकाउंटेंट ने बोला ये कैश जो है आपका है, इस वजह से रीजन टू बिलीव एओ ने केस रीओपन कर दिया 148 में। अब वो कह रहा है या तो उसका ओथ स्टेटमेंट पे डिनायल करा दो कि भाई ये कैश आपका नहीं था, नहीं तो हम तो एडिशन करेंगे, क्योंकि वो जो 10 रुपये अगर किसी के यहाँ पाया गया उसमें 3 रुपए इनके हैं, 3 रुपए किसी और के हैं, क्योंकि हम दूसरे में एडिशन कर रहे हैं 3 रुपए पे, तो हम आपके में भी एडिशन करेंगे। भाई देखो, बात तो ठीक कह रहा है वो। अब आप दो में से एक तो सच्चा होगा ही होगा। सर क्या उसको मतलब कौन से ऐसे केस लॉ दें जो कि ओथ के केस लॉ की जरूरत का है, ये केस का है तो फैक्ट्स बेस है। फैक्ट बेस है, असेसी डिनाई कर रहा है कि मैंने तो भाई कोई कैश आप पढ़े रहो, अब वो झूठ बोल रहा है, काम खत्म। तो आप क्रॉस ऑब्जेक्शन मांगो ना उससे। सर क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मांगा उससे, वो कह रहा है कि जो पर्सन है वो आना ही नहीं चाहता। तो नहीं आना चाहता आपको, ठीक है, फिर तो बढ़िया होगा, बढ़िया हो गया आपके लिए। आप क्रॉस एग्जामिनेशन मांगो, वो दे नहीं पाएगा, आप लड़ते रहना, वो भी बच गया, आप भी बच गए। उसके एडिशन करेगा नहीं, आप करेगा, आप कहेगा ये मेरा तो बनता नहीं, झूठ बोल रहा है। मैं तो बुलाया यहाँ तो सेंटर सर्किल में तो एडिशन कर देंगे सर। तो कोई बात नहीं यार, ये तो देखो एओ का धर्म है, एडिशन तो उसने करनी है। सर थर्ड पार्टी का जो स्टेटमेंट है वो उसको मान लेगा, उसके अकाउंटेंट ने कुछ भी बोला। रस्तोगी जी सुनो, लड़का लड़की, रस्तोगी जी सुनो, लड़का लड़की देखने से शादी नहीं होती, फेरे फेरे तक लेके जाना पड़ता है, ट्रिब्यूनल हाईकोर्ट तक जाना पड़ेगा, जाने के लिए तैयारी रहो। और आपका स्टैंड बढ़िया है, क्रॉस ऑब्जेक्शन अपना क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए मांगते रहो, और आपका स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और आगे बढ़ते रहो, जिंदगी आप जी लोगे। विनय जी एक दो क्वेश्चन और ले ले, फिर मुझे एक दूसरा प्रोग्राम का भी प्रेशर, आप फोन आ गए तो आई थिंक इन केस देयर आर नॉट एनी अदर क्वेरी। एक मिनट फ्रेंड, कुछ और क्वेरी है तो बताओ, नहीं तो फिर आज का सेशन तो बढ़िया हुआ और लंबा भी बहुत हो गया। I think it was a good session. I think we tried our best. Yeah, definitely. So, shall we conclude, sir? Shall we conclude? I think we should conclude now. I think in case we put thanks to all. लेकिन इससे पहले थोड़ी सी अनाउंसमेंट कर दें कि फ्रेंड, वी आर होल्डिंग दिस प्रोग्राम ऑन एवरी फर्स्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ एट 3 PM. And this is a G19 income tax bar of chartered accountant which we meet. We used to meet physically there every month, but because of the corona for the last 2 years we are not meeting. Hopefully, I think by next 1 or 2 months, if the corona crisis blows over, so we will try to physically meet. But during this period, there have been lessons to learn that we have been able to reach out to across India. And today I can see large number of our professional colleagues joining from different places, as good as far as Varanasi and Calcutta, Guwahati. I can see because I knew many faces. I could see from the face on that part of the issue. It is very clear. This meeting is different than all other meeting in the sense that we have a very casual, informal meeting without any CP hour, etc. Informal discussion, and you are free to discuss anything. Today I had to be a little bit reserved because this, looking to the large participation, this was live on YouTube. So I didn't want to say it, but otherwise a very informal meeting without recording. So please do, in case you are interested, you please do join this type of program, etc. Where we can have a long feedback from you, what is happening, how it is happening. We can discuss about profession, we can discuss about family, income tax, GST, or any other issue. That's the idea basically. And Vinay ji has been taking care of hosting this program without providing tea, coffee to us. But when we meet physically with an assurance that all our aggregated 24 months cup and tea and coffee, etc., he will provide, and all our hosts, and for the benefit of others, and to put all other on caution. We have a long-standing convention. Whosoever puts larger number of questions, he is considered to be the host for the next week. So while raising questions, one need to be very conscious about this. That he will be a host in case. But that does not discourage. But sir, I have raised the question, so
I may be permitted as a host for the next meeting. Definitely. सर अभी तो गुप्ता जी अभी तो आप होस्ट इसलिए नहीं सकते, अभी तो फिजिकल का चांस कम लग रहा है, अभी तो 24 होस्ट वेटिंग में है. But that does not discourage the individual to ask more questions. Yes, please. Very good. So friends, with the good news which I'm sharing with you, that this time our regional council, that is Northern Indian Regional Council, is receiving the award of the best award of the regional council after 11 years. So good work been done by the regional council. Congratulations to them equally. चेयरमैन साहब हैं क्या? चेयरमैन साहब तो सर वो मीटिंग में है ना सर, वहाँ पे वो फंक्शन चल रहा है, अवार्ड लेने गए होंगे. अवार्ड लेने गए हैं सर वो तो. So friends, before Village, let me recognize some presence here. Mahinder, please sir, please. I can see senior member Kapoor Saab joining. I think Kapoor Saab Jammu से join कर रहे हैं. I can see Jammu, Brajesh Agarwal ji. I can see Vijay Somani ji. I can see KG Agarwal ji. I can see for that purpose. Khunana ji is there. Pralaji is there. Ashok Bhatia ji, as usual, is there. Sir. I can find it out. Sanjay Singla ji, Ashutosh Dogar ji, this is very senior member, is there. Sanjay Sharma ji from the Sale Tax Bar, I can see is there. Lalit Jain ji from our Green Park Gurgaon there. Sunil Khanna ji, Manoj Garg ji, Vijay Somani ji, of course. I can see large number present there. So we had a very good presence today. I think more than 200 people were there in the meeting, and so, plus there was also in the YouTube. So thanks to all. It has been a pleasure. Be in touch. Thanks a lot. Thank you, friends. Thanks to speakers. C. Vejayan ji, Satish Agarwal ji, Ashok Batra ji, Dr. C. Satish ji has left. Satish ji left, I presume. He left. Thank you. He's not here. I couldn't see him. Thank you. And thank you, all. Thank you, sir. See you next on 4th Friday again. Same, like, because it's a 28th day month. So 4th March at 3 p.m. 4th March, same day. Thank you. Thank you, friends. Thanks a lot. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you.